अच्छा, अब हमको बताइए चेयरपर्सन बैठेगा कोई? गुड मॉर्निंग। हेलो ओटी। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ हाँ बॉस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 समित। देख लिए केस? दे माइक्रोस्कोपी तो नहीं किए। जरा माइक्रोस्कोप इधर आएगा। सर को एक बार दिखा फाइंडिंग। आवाज़ ठीक है समित? हाँ आवाज क्लियर है बॉस, मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। आगे करो माइक्रोस्कोप, और आगे करो। कवर हटाओ, कवर कवर। नाजिर। ठीक है। नीचे कुछ लगा हुआ है। बॉस उसका वो है ना, फोकस करने के लिए वो जो आगे में है उसको करिए रोटेट। हाँ नीचे 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 उसका लेंस, हाँ हाँ, उससे फोकस हो जाएगा। पहले तो हम कहीं बाहर कर लें। अरुण, 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 फोकस करो। बस उसका लेंस वो घुमाने से ना, वो हम्म। आपको ऊपर नीचे करने का जरूरत नहीं, माइक्रो उसी से हो जाता है। ठीक है। नो। हाँ ठीक है, अब दे दो, राकेश बॉस को कर लेंगे वो। हम्म। दूर ही रखना होता है क्या? थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, 250 पे करो ना इसको। डिस्टेंस ज़्यादा है तो। बॉस आप उसको नीचे कर लीजिए ना, उसके बाद फिर फोकस कर लीजिए। वो ऑटो लेंस उसका ऑटो वाला है। हम्म। आप जितना नीचे करके फिर वो लेंस घुमाइएगा तो एडजस्ट कर लेगा वो। ठीक। इतना डिस्टेंस सफिशिएंट है। अच्छा, आ जाएगा। वन पे चाहिए हमको। हम्म। हमको इसी इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो इतना ही डिस्टेंस पे करो तो। आपको सब हिस्ट्री याद है? आप बता, जब मंगवाए समझ से समझ में क्या? ठीक है, चल चल चल। आपको क्या कुछ? ठीक है, देखते हैं। अरे, अच्छा इसको दूर ही रखना पड़ता है आँख। हाँ, हम लोग तो सटा के करते हैं। जी आ रहा है। इस
इसमें दूर रखना होता है। देखिए कौन सा? इससे? हाँ नहीं, हम तो 1 पे ही करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस होता है ना, उसके बाद ही शुरू होता है। हेलो कौन ड्रेस पहनना है? अच्छा बताओ। हाँ ठीक है पहन लेते हैं, रुको। थोड़ा वैक्स है तो नीचे विजिबल नहीं है। अरुण सक्शन दो सर को। चलो कोई बात नहीं, इंड्यूस करने के बाद देखते हैं। ऐसे एटिक डिजीज है, ठीक है, कोलेस्टेटोमा है। कोलेस्टेटोमा तो दिख रहा है बॉस। ठीक है ना। और उसको लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्चार्ज का हिस्ट्री है फ्रॉम चाइल्डहुड। हाँ और हमको लगता है मॉडरेट सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। कॉर्डा भी दिख रहा है उसके नीचे। हाँ ठीक है, चल ठीक है। इंड्यूस तो हो गया है। नहीं तो अच्छा हो चुका है। हाँ और हम वेट कर रहे हैं। किधर है? वाह वाह। Good morning, everyone. Good morning from आवाज Ranchi करने to के all बाद the का- ENT surgeons of Patna and Bihar and all over the world where we are watching this. So today we have a big list of cases, mostly endoscopic cases pertaining to different problems in the field of ENT. We are going to start with our first case. Now I welcome Dr. Rakesh Nayan. He's come all the way from Patna. He's going to do the right ear MRM. He's one of the leading otolaryngorhinologists of Patna, an expert and pioneer in सिस्टर कोई और नजर Yeah. सिस्टर। one of the pioneers in scarless endometrial surgery, and you can know how good he is that all the politicians and the celebrities of Patna keep rushing to him for all their ENT साबुन, problems. ये क्या है? So a big round of applause for Dr. Rakesh Nayan. We are going to start with our first case. चल गान दे दो सिस्टर, गान। साढ़े सात। सॉरी। हाँ हेलो। सिस्टर ये निकाल लेना तो। हेलो बंद कर दो। हेलो हेलो। इट्स नॉट। हाँ बॉस गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग समित, आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। चलो ओके। सेकेंड रोटी में कैमरा करिए। हाँ बॉस। हाँ ठीक है। नहीं ये पेशेंट का हमारा केस कहाँ है? ये है बोथ ईयर टिम्पैनोप्लास्टी है, ड्राई ईयर है। ये डॉक्टर पंकज है बॉस। दिस इज आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस लेफ्ट ईयर। ओके, तो लेफ्ट ईयर के लिए मैडम जरा हम तैयारी करते हैं। गिव मी हेडलाइट। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। गिव मी हेडलाइट। आइदर ये लाइट ऑन कर दीजिए, ठीक है। और एक जो है ड्रेसिंग के लिए, नहीं ड्रेसिंग के लिए हमको एक अच्छा वो आएगा तो इसको हटा दीजिए, रख दीजिए कॉर्नर में कहीं। ठीक एंड सम कॉटन दीजिए।
सम कॉटन दीजिए। उसका भी है तो वो दे दीजिएगा ना, तो हमको हमारे लिए आसान होगा ना। ठीक है, आप जी करेंगे? चलो करिए सिस्टर। जी, करिए। बॉस देख लिए पेशेंट संजीव बॉस? हाँ देख रहे हैं। ओटोस्कोप दो ना सर को। ला रहा ऑटोस्कोप ला रहा। डजंट मेक एनी डिफरेंस कैसा है नहीं है। और पेशेंट का कान बहुत स्ट्रेट है। इट विल बी वेरी हैप्पी गुड केस फॉर एंडोस्कोपिक। हाँ, हैप्पी सिचुएशन फॉर एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी एंड द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, एंड जरा इसको डला। चलो हो गया परफेक्ट सिस्टर। है, लार्ज सीपी है, टॉवेल क्लिप दे एवरीथिंग देना। इज ऑल राइट। एंड इधर दे दो बाबू, ये भी सेम है। ठीक है, चलिए ठीक। तो अभी ये जीए देंगे, उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये प्रिपरेशन इसलिए जरूरी है कि बहुत लोग प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर जीए। ओके ओके बॉस, ओके। ओके ओके, थैंक यू। हाँ हेलो टॉवेल क्लिप दे देना सिस्टर। या हाँ, आवाज आ रही है? Arey boss. This is our second Vedana. case. Good morning, Dr. Sanjeev. Dr. Shweta here. Now, Good Dr. morning, Sanjeev madam. is a good morning, sir. He's a consultant and director of Janki ENT Hospital and Maternity Center at Kankerbagh, Patna. He has performed over 900 endoscopic ear surgeries, a pioneer work in EES and double door technique or endoscopic tympanoplasty. He's a strong proponent of endoscopic ear surgery in central part of India. He has successfully hosted Global Endoscopic Ear Surgery Summit in February 2019 in Ashoka Samrat International Convention Center in Bihar. And there has been a participation of over 10 countries as faculties and delegates for the same. He is the honorary secretary of AOI Bihar and Jharkhand State Branch and founder member of ENT Academy and Research Foundation. Section. Sanjeev boss, most welcome No, to no, Ranchi. Ranchi is nice and bright today for you. It has been raining for the last 1 week. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, boss. सेक्शन जोड़ दी सिस्टर। नहीं आ रहा। क्या लिए हैं आप? ठीक है, नहीं अब हमको ये सेक्शन की जरूरत नहीं है। देखें स्कोप छोटा सेक्शन, मैथ में सेक्शन भी नहीं। ठीक है, क्या? हाँ ले लीजिए ना। this surgery is not required for me. We will require only three to four instruments only, and endoscope and endoscopic camera. जरा सा एक मिनट सिस्टर, एक पैड नहीं है। जरा सा। I will ask for penalty when I think 2-3 instruments we need. The forceps, the seizure, wire knife, needle. That's okay. Rakesh boss, anything you have to speak? You have to give some message. पहले केस तो देखने दो। Visibility is good. अभी ठीक है, थोड़ा इससे छोटा दे दो। 2-4 मिनट लगता है ना एडजस्ट होने में नया माइक्रोस्कोप में। आकाश थोड़ा सा वाइट बैलेंस करो सिस्टर। हाँ वाइट बैलेंस करो आकाश। हाँ पिंटू, नहीं सुनो ना, गॉड तुम्हारा काम मंगल से होगा। हम रांची आ गए हैं, कल बोर्ड गिर जाएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ
आगे करो आगे, हाँ। हेलो सर, क्या बोल रहे थे सर? इसको साफ कर लो। हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग राकेश जी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। नयन जी, गुड मॉर्निंग राकेश, नयन। सर, So what's your plan in this case? I think first I will elevate the flap, then What your plan? Actually, plan means actually inside I have out, been given outside this in, case for MRM. modified radical mastectomy, Yes. intact canal wall tympanoplasty. What's your plan? But I think patient has limited disease. How have you determined that the patient has got limited disease? I Any CT think finding? seeing this case, I don't think there will be extensive cholesterol. First, I will infiltrate. Is there any sign of limited disease? Any diagnostic investigation like CT scan or anything? No, I have not seen anything other than audiogram. Other than audiogram, okay. So, what do you think? Is there any role of CT scan in the in cases of ear surgery, ear patients or not, Yes, especially in infective? Definitely, there is role of CT scan, but in I'm just wanting to keep our you practice, involved with us. That's all. There is no other motto. Just I want to keep involved. Okay. But in our practice, we rarely. Are you going end oral or post oral? What's your plan, or just per meter? Actually, the plan was before this, seeing this case, plan was post oral. So there is no CT scan. CT scan हुआ क्या? Okay. No, actually no CT scan has been done for this patient. No. Audiometry, sir. Audiological finding. What is your audiological finding? How is the AB gap? कितना है ऑडियोग्राम देखिए तो लॉस कितना है? I think moderate conductive hearing loss is there, about 50 decibel conductive loss. 50 decibel loss is maximum conductive loss. We supposed to be maximum conductive loss. Total loss is moderate. No, conductive loss may be up to 60 decibel. If there is ossicular chain disruption, certainly the audiogram finding will give more than 55 decibel. Are you suspecting of ossicular disruption in this case or not? If the audiological finding is moderate, then I don't think there will be ossicular chain disruption. Any opinion, Dr. Samit? Sir, 50 decibel loss, I think there will be some ossicular disruption. And as we can see, there is a attic disease. So we don't know whether it is extensive. Once you will elevate the flap, then we will get some idea because the CT scan has not been done. Yes, but I'm sure that's why I told you we will find after elevating the flap, I'll plan
But I think there should not be, I don't think there should be incus present in this case, or incus must be eroded. What do you say, sir? Needle दो तो sister. The TM is sclerosed. That's why I'm removing all the sclerosed part. Hello. Yes. Do you remove all the tympanosclerotic patch in all your cases, or are you selective somewhere? No. I always remove sclerotic patches. Even it will be a tiny one. Okay. What is the rationale behind that? What's your rationale? What is your thought process behind that? Actually, if you leave the sclerotic patch, then sister जरा cotton ball देना तो छोटा सा. Then it may progress. ब्लड का कलर कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है. बस यहाँ पे color is little more bright here. In microscope also, the color In is very bright. Color is very bright in microscope. Then decrease. Don't decrease the light. कम करो तो थोड़ा भाई. मैडम जरा हमको दीजिए थोड़ा सा बॉल. Give me forceps, release forceps. There is too much bleeding. कार बहुत अच्छा है. यहाँ रख दीजिए. हाँ नहीं तो बोल रहे ऐसे 1 पे करते हैं 1.6 पे हो सकता है. लाइट में एलईडी दिया है. एलईडी का लाइट बचाते हो. हाँ नहीं धीरे धीरे आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है. Hello. This is microscope has got LED light. Do you feel any problem with this LED light or xenon or your microscope? What you are using? I am already using LED light for about more than 10 years. Okay. So, do you feel any problem with LED light? No, I don't have any problem with LED light. Okay. Actually, in LED light, color perception changes entirely. If we compare to xenon, but cost of xenon is very high. To maintain the cost of xenon bulb is very high. Maintenance is. I am used to this LED light. Yes, generally people get used to this light, but once people who are using both the lights, they are not comfortable with LED light once they work. Suppose one has got 2 microscope or 3 microscope like Samit Lal, then he must be having problem with this LED light. Okay. Okay. Needle. Samit. Needle जो peak था अभी. Hello. Boss, good morning. Good morning. Sunny boss. Yes, sir. जैसे हम prepare कर रहे हैं, I'm just preparing for endoscopic ear surgery. And the point is that we know the canal is divided into 2 parts. External part and internal part, medial part. So medial part को हम pack कर दिए हैं पहले. I have already given cotton, a small cotton ball in the external canal bony part. Okay. And because we know that there is a hair in the external canal lateral part. Your voice is not clear, dear Sanjeev. Okay. Your voice is not very clear. Hello. We are. Yes. Now getting my voice. Yeah. Yes. So we have to prepare the canal, and for preparation, I always apply beet. Beet is a hair remover cream, and that beet application is
over the external auditory canal lateral part, that is hair bearing area. Okay, so I am just applying here, and we have already packed एक्सटर्नल कैमरा को बस फोकस कराइए वहां पे, focus कराइए जरा please. कान में फोकस करो एक्सटर्नल कैमरा से. So this beat application will be for minutes, like 3 minutes to 5 minutes, okay? Okay. And that beat will give almost very clean canal. There will be no hair during endoscopic ear surgery. We'll find, and there will be a very clear vision. So we have already applied the beat in the lateral part, and medial part we have already packed with a small cotton ball, because we have to avoid the injury of the bony portion of the skin of the bony portion of the canal. So because you know, battlefield is must be ready or must be not pre-injured. Okay, aim is that only. So the preparation is very important in endoscopic surgery. We start in minor OT and OPD. You do the cleaning, you do the regional anesthesia, application of regional anesthesia in OPD or minor OT, and give at least 20 minutes. This application, this Adeline ball should act. And then we took up the case in OT, and then it will take 15 to 20 minutes to prepare all the preparation. So this is what I do preparation for endoscopic ear surgery always. This is my routine protocol. Okay. हेलो, हाँ संजीव. हाँ, तो इसके बाद अब प्रिपरेशन के बाद फिर हम ये देंगे रीजनल एनेस्थीसिया. What is your contraindication for contraindication of endoscopic tympanoplasty? Yes, there is an absolute contraindication. I never see anything. That could be relative contraindication, and relative contraindication would be if canal is almost narrowed and we can't negotiate any lesser caliber endoscope. That could be one. Next, when I suspect something that we with the endoscope we can't, जैसे colostoma में colostoma is a frank colostoma is a relative contraindication on ear surgery, but we can apply endoscope for preservation of healthy tissue. So as per you are asking contraindication, there is a relative contraindication. Absolute contraindication, I don't see anything. Are you getting my point, boss? Hello? 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 You are getting my point? Yes. So this tool is excellent, and you have to apply judicially. इसको घुमा के उधर का करवा देते हैं सेविंग होगी. इसको निकाल देते हैं, पैकिंग जब कर देंगे ना तब. प्लीज गॉज दीजिए तो. सिस्टर जरा गॉज लाइए प्लीज. गॉज का यहाँ पर. गिव मी गॉज. सीजर एक तो लाइए, ऐसे सीजर दीजिए, इसको काटना पड़ेगा. सीजर तो सीजर सिस्टर चलेगा. हेलो. हेलो. राकेश सर का कैमरा ऑन करो. फर्स्ट ओटी में लीजिए कैमरा को. Give me that tool. एंडोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दीजिए स्क्रीन पे. क्या मिला सर? राकेश बॉस. I think there is limited disease here. Ossicular chain was intact. I have dislocated this IS joint, and before this, the malleus hair was very friable. That's why half of the malleus came out. Now I am
dislocated. I am dislocating this IS joint, and I am removing this incus. Now my plan will be just to see the editors. The ossicle is very friable. But I don't think there is extensive disease there. नहीं, एक एम्पूल, पूरा एक एम्पूल। यहाँ पे आप एगो एड्रेनालिन फेल हो गया। हाँ, इसमें एगो मिलवाओगे। हाँ, मैं भी ठीक है। और दीजिए थोड़ा इसको। हाँ, प्योर एड्रेनालिन, ओके। एड्रेनालिन एक और ले आइए। और 26 गेज का नीडल लेते हैं, इससे पूरा उठेगा। 26 गेज का नीडल लीजिए और 3 ml सिरिंज। परफेक्ट। नाउ एड्रेनालिन और दीजिए। गिव मी दैट मिक्स, इसमें मिला दिए। अब मिला रहे हैं। हेलो। आवाज। हाँ। Is it visible? Yes. I don't think there is any disease behind this. Is that the attic? Yes. Is there some attic erosion there? Yes, there is erosion, but disease is not there. I think you must explore the attic. Yes. You must do some aticotomy before. In my practice, I never do. Beyond attic. Yes. If the disease is not there, I don't think there will be any problem in this case. Scissor दो sister. क्या है? 26 गेज है। नहीं, पहले इसे दीजिए। पहले नॉर्मल इसका नीडल क्या है? इसका नॉर्मल नीडल कहाँ गया? ठीक है, पहले नॉर्मल दीजिए। नाउ आई एम गिविंग। नहीं, जरूरत नहीं है। एनेस्थीसिया। एक्चुअली हमको थोड़ा माइक्रोस्कोप में दिक्कत हो रहा है। ये चले जाएगा ऊपर, ठीक है। एंड एक बार इसको ऐसे कर लिए और बाहर गिरते हुए आ गए। नाउ से ऐसे जाएंगे। Rakesh boss, have you elevated the flap, or you're just going endo? No, till now I have not elevated the flap. So दोनों मुंह वाला जो है ये होगा डबल एंडेड। हाँ, एक और होगा। ठीक। और एक 90 डिग्री होगा। संजीव, ग्राफ्ट बड़ा निकाल लेना, समझे ना, कि उधर भी डाल देंगे। हम दे रहे हैं। Now I am elevating the flap. First I will elevate anterior from medial to lateral. Why I am giving this? Because in GA, why I am giving this local anesthesia? क्यों दे रहा है? Shift the camera to the next OT, Dr. Sanjeev. Yes, I am preparing for case, and the vital question is that when the case is in GA, why I am giving regional anesthesia here? Okay? Yeah, why are you giving local? Local, yes. Because we need hemostasis primarily in endoscopic ear surgery, that's why. The only one reason here. And we inject always 1 in 30,000 solution. It means 30 ml of lignocaine mixed with 1 ml of pure adrenaline. 1 ml of pure adrenaline, which is available in market, is having 1 in 1,000 concentration. So here 30 ml into 1,000 means 30,000
And in market, if you see, already prepared while where 1 lakh, 1 in 1 lakh, 1 in 2 lakh, these kind of things. For me, in endoscopic ear surgery, it could be 1 in सेक्शन थोड़ा 30,000 कम कर लो. for external aortic canal infiltration. And what could be the infiltration method? I'm just doing. Give me a 26 gauge needle with 3 ml syringe. Can you ask the cameraman to focus on the ear because we are seeing directly on the ear. उसको कैमरा बोल के लेके बोली कान में दिखाएगा. 26 गेज का नीडल मंगाइए ना, 26 गेज का. नहीं इन्फिल्ट्रेशन. या तो आप एंडोस्कोप लगा करके इन्फिल्ट्रेट कीजिए. एंडोस्कोप लगा के इन्फिल्ट्रेट करें. 26 गेज का नीडल. Then we have to wait for 20 minutes. नहीं है. 26 गेज का नीडल है, लाइए ना. That's why I'm just giving infiltration just now, and then we will drap and we will paint the scrub, and then we'll take almost the same duration. If you want to give infiltration after draping or after the scrubbing, I can do that. Okay? Are you agree? Hello, Samir? Okay, ऐसा करते हैं. 26 गेज का छोटा वाला नीडल नहीं है. नहीं है संजीव, इसी से दो ना, इसी से दो. इसी से दो ना. दो, इसी से दो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से दो. तो नहीं है तो उसी से काम. 26 नंबर है यार, वो इंसुलिन ये टेस्ट करने के लिए नहीं देखते हो तुम लोग? प्रिक करते हो बार बार उसको शुगर देखने के लिए. 26 नंबर ही तो रहता है पतला वाला. मिला कि नहीं? मिल गया सर. तो काहे यार तुम लोग ऐसा करते हो? स्पेकुलम देंगे क्या? अब ठीक. बताना पड़ता है. हाँ, मैंने नहीं जाना. ना बॉस बताया कि लेकिन उसको उस भाषा में बताना कहाँ वो यूज करता है. ये हो गया. Can we see the second OT, Dr. Rakesh Nain's OT? Hello, Dr. Sanjeev. Yes, boss. Since your patient is under general anesthesia, so can we use adrenaline 30 ml, 1 ample adrenaline in 30 ml normal saline? Why not? What? Exactly, we can do that. No problem. And this is a very important to know why to give. Plain 2% dialogue. Why to give infiltration? वो आता 180, 1 lakh, 1 in 2 lakh वो अलग है. Plain dialogue. You are absolutely right. We can use. Why to give Xylocaine unnecessarily? Because we know that there could be reaction also. And in GA, very difficult to predict the reaction of Xylocaine. कितना डाइल्यूट किया? नेज़ल में आओ ऊपर. नहीं अभी केस दोनों स्टार्ट हो गया है. जरा हेडलाइट हमको दे दीजिएगा. Shift the camera to the second OT. The endoscopic picture. Sir, I think you have elevated the flap, Dr. Rakesh Nain. Hello, Rakesh boss. Hello. Rakesh boss.
कर दिए, नहीं हुआ है, अभी बहुत तेज है। Dr. Rakesh Nair, what have you found after elevating the flap? Nothing is there in the attic region. Okay. So now what is your plan? Only ossiculoplasty. इधर का हो गया ना? हाँ इधर का हो गया। थोड़ा सा I have elevated the flap all around. This is posterior flap. This is inferior. सिरिंज आप फेंक दिए? Inferior, I have elevated from medial to lateral. नहीं फेंके चेंज कहाँ है? तो अभी लोकल क्यों देंगे? अब खाली बाल्बा बनवा दीजिए। अच्छा बलवा बनवा के दे देते हैं तो तुमको टाइम थोड़े लगेगा। नहीं एक्सप्लेन करेंगे, टाइम लगेगा। This is the flap. I have elevated from medial to lateral. एक है ना, एक ही माइक्रोस्कोप है ना? This is from medial to lateral. है माइक्रोस्कोप? Is it visible? Yes. Color is not coming well. Yes, in microscope also the color is very bright. Okay, I have elevated all around. Sister ये क्यों लग जा रहा है बार बार? चलो। मिक्स विद ये नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं एडलिन के साथ। नहीं समझे? वेट करके करिए। वाले हमको लगता है कि नेक्स्ट आधा घंटा बाद दीजिए तो दैट कुड बी मेटाबोलाइज हो जाएगा या चला जाएगा। with LED light. का कैमरा ग्राफ्ट निकाल लो सिस्टर, चलो दे दो ब्लेड ब्लेड इंडोरल नहीं सिस्टर, यहाँ से एक इंसिजन वो ले लो, एलिवेटर ले लो। मेस्टॉइड रिट्रैक्टर लो। चलिए ठीक है। 3 इंच वाला है। लाओ रे बढ़िया साथ देते हैं। गॉज पीस छोटा दे दो, माइक्रोफोन बस ठीक। इसको पकड़ो ना, एक और कर देता है। इसको पकड़ो, उसका बेटर रहेगा। आप लोग उससे करिए, बाल पे अच्छा है। इसको ऐसे कीजिए। नहीं मनोवरी को दोनों में चलो हो जाएगा। उधर पलट दो। आइए इधर इसे ले लीजिए इसे। रिट्रैक्टर लगा लो, बस परफेक्टली ऑल राइट। इसको लगा लो सिस्टर। इसको न्यूट्रल पोजीशन में कर दीजिए। इसको ईयर ये हेड को न्यूट्रल पोजीशन में करिए। हाँ ठीक है। हेडिंग भी चाहिए? नहीं, हेडिंग डाला हुआ है। ठीक ना। अब मैडम सिस्टर जरा इसको आप ये करिए, पेंट करिए, स्क्रब करिए एंड उसको वाश कर लो। हाँ वाश कर लीजिए। हाँ नीचे से बस ऐसे रुकिए। वाश किधर करना है सिस्टर? ऊपर ले जाओ सिस्टर इसको थोड़ा सा। हाँ खींचो। नहीं होगा नहीं होगा। तो सीधा है। नीचे बाल में नहीं होता। नीचे सिस्टर हमको ये हाँ ले आओ नीचे, बस थोड़ा सा दिखने रहा हमको इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक। न्यूरोटोलॉजिकल ट्रैप है क्या?
रिंग ऐसे कॉकलियर इम्प्लांट के लिए यूज करते हैं। ठीक है ओके ठीक है फाइन ओके फाइन। दूसरा प्लेन दो सिस्टर। Hello. Hello, Sanjeev. यस बॉस। Do you prefer नीचे deep, नीचे नीचे deep temporal fascia or superficial temporal fascia? उठा लो थोड़ा सा। I think you are taking deeper part. Deeper part, and it should be very thin. Because we know that this is Actually, true temporal fascia is really very thin. yeah. Once it is thick, it means you have once taken the superficial part along with the deeper part. Okay. Any size? Does size matter for you? Yeah, no. Graft of the I size? always used to take larger graft. 7.5. And this is bilateral, so I will harvest even more larger. You are doing bilateral. No, this year is I am not doing bilateral. Second year will be going to done by the Dr. Sanjay Sai. Okay. Okay. That will be open. So same side I will harvest the graft from left side, Dr. right side. Dr. Sai is also going to do endoscopic tympanoplast. No, he will do No. microscopic. Okay. नहीं कम उम्मीद लग रहा है। Sorry, sir. 7. Where are you, Rakesh? Dr. Rakesh Nan? Yes, sir. Where are you? I have taken the graft, elevated the flap. Now I think I will use PORP here. PORP मंगा लो सिस्टर तो एक नहीं होना चाहिए। ला सिलाई कर। कुटी का साइज इसका आधा तो जरूर है। पूरे हॉल का नहीं पूरे हॉल ग्राफ्ट रख दी। ठीक थोड़ा सुखाना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं करना है, थोड़ा ड्राई करवाना पड़ेगा सिस्टर। नहीं कुछ नहीं I will do. मैं रोटी बनाएंगे तुम दिमाग में डाले हुए। हाँ 30 फीट से कम कोई लंबा नहीं रहेगा। Rakesh boss, what is your plan for osteoplasty? What will you be doing? I will use PORP in this case. में कम नहीं किया। PORP. Yes. मलाई पकड़ी चौराहा पे अपना। अरे क्या बात कर यही कि बुनियादी मत करिए। इसलिए कहते हैं खाएंगे नून रोटी खाएंगे सलाम। I have taken salt and pepper. कट है क्या है ये? कट नहीं है। ओके जैसे आप करती है वैसे करिए आप। मैं वहाँ पे तो सब लोग बोल रहा है। You know आप तो करते हैं ना माइक्रोस्कोप सबके लिए कैसे करते करिए वैसे। चल पकड़ो इसको पकड़ो सिस्टर। चलो छोड़। नहीं इंडोस्कोप से होगा। This one will be going to। हाँ सोचने में आप। इसे कोई स्प्रीड से नहीं साफ कर दिए। बोल रहे हैं। उसके बाद फिर स्प्रीड से कर देंगे तो उसका चिकनाई खत्म हो जाएगा। हाँ थोड़ा पकड़ लो। हो जाएगा। सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है चलो काटो सिस्टर। टॉवेल क्लिप है ना? ताकि पता नहीं आएगा तो आगे। देखें आप वो आइडिया लगा हुआ है। फर्स्ट लेफ्ट राइट साइड। शुरू में आइडिया परफेक्ट। मनोज कितना बच्चा वाला एकदम मनोज बचते हैं। बहुत कुछ चेंज कर गया ये चौथा लेयर होगा और मेरे लिए एक न्यूरो सर्जिकल रैप काफी है। तक करवा दिया होगा जरूरत PORP ले लो सिस्टर। ले ली
कौन सा नहीं, टेफलॉन? एक ऐसा ड्रैप होता है ठीक। जो हाँ प्लास्टिक लगा रहता है, बस सब पूरे को कवर कर लेता है। शंकर तो इसमें 4 चीज को स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है। इतना क्यों स्टरलाइज, इतना क्यों ही मैन पावर इस्तेमाल करें? हो गया ना? एक और लगाओगे? यहाँ पर लगा दो। थोड़ा सा सिस्टर स्टेलाइज कॉटन मांग लीजिए। कॉटन वो है से अपने पेशेंट है, नहीं इस्तेमाल किया था आता होगा तो यहाँ से साला भागेगा, सेक्शन ले लीजिए, दिल्ली भागेगा, कलकत्ता भागेगा। स्क्रब करने के लिए बड़ा ना, बड़ा इससे हो जाएगा। इससे हम फोर्सेप ले लो सिस्टर, वो वाला थोड़ा कार्टिलेज निकालेंगे। स्प्रिट मांगे ना, स्प्रिट स्प्रिट। What cartilage are you taking, boss? What cartilage are you harvesting? ट्रैगल। Tragal cartilage. यार हमको ये देखने में क्यों दिक्कत हो रहा है, क्या हो गया? अच्छा नजदीक चलेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उसी फोर्सेप से पकड़ लेना। बैठने वाला इधर कर दीजिए। कुछ नहीं, छोटा सा पकड़ लो सिस्टर, इसको ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे। खराब हो जाता है। और जरा हेडलाइट दे दीजिए इधर, मेरे को दे दीजिए इधर से। हेडलाइट लगा दो। सक्शन ऑन करिए प्लीज। नहीं मिलता है और सक्शन ऑन करिए। उसका नहीं अपने बर्थ पे ना टॉप लाइट बंद कर। नहीं टॉप लाइट रहने Sir, what are the precautions you take when taking the tragal cartilage? Rakesh. ब्लेड दीजिए। 11 नंबर, यस। थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन ले लीजिए सिस्टर। हेलो, थोड़ा ही सा लेना है सिस्टर। हेलो सर, प्लीज। हेलो Hello. हाँ हाँ समीर। स्किन हो। Huh, boss. What are the precautions or to take when taking a tragal cartilage? Satendra was has some comment for you, Rakesh. Yes. Going to take any precaution here during taking cartilage? और स्किन हुक दीजिए। ये टूथ वाला दीजिए मैडम। एंड गिव मी स्किन हुक। स्किन उसमें एक तो है आपके पास। एक ही काफी, एक ही काफी। छोड़िए। हाँ आइए, ऊपर उठाइए, बस ऊपर उठाइए। ऐसे नहीं। I will leave some cartilage here. Yes. So that the tragus will not look ugly. Yes. It's okay, fine. ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। I have to just put a piece of cartilage over That pulp you will be pulp. keeping. ये हो गया। और सॉरी, बहुत है, छोड़ दो सिस्टर उसको। नहीं सुचर देने का जरूरत नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। So you don't take suture after taking tragal cartilage? No. फिर सक्शन बढ़ा हुआ है काफी। यहाँ कॉटन बॉल भी डाले थे क्या सिस्टर? हाँ नहीं डाले थे ना।
बाइपोलर नहीं है सिस्टर, बाइपोलर। ठीक है, हो गया, इतना क्लॉट हो गया, हो गया, हो गया। गिव मी फ्रेयर एलिवेटर, फ्रेयर एलिवेटर, एलिवेटर एलिवेटर, फ्रेयर एलिवेटर नहीं है? लंबा वाला। हाँ, ये दिस वन तुम्हारे लोकल इससे और शार्प होता है। वेलकम सर। सिस्टर, ग्राफ को सुखाने का कुछ व्यवस्था है? हाँ, नीचे ये यस, दिस वन इज फाइन। ये दिस इज टॉल, या माचिस है सर? डिटेक्टर लगे, फूको। नहीं 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 नहीं। नहीं सिस्टर, हाँ दो वाला डिटेक्टर दीजिए। हाँ हाँ, किसी चीज से Can you see the superstructure, Rakesh Bhai? यस, इज इट विजिबल? Yes, a little red. I don't know. They have not been able to. दिस Yeah, we can see the superstructure. ये काम नहीं कर रहा हो है। जाएगा, हो जाएगा ना। Yes, yes, yes. थोड़ा पतला दे दो सिस्टर। इसको खाली दाब देना है। चलो हो गया। हाँ, उठाइए इसको, उठाइए। थोड़ा सा कभी कभी स्प्रिंगवा जो है ना, ठीक है, स्कैन हो गया। और ये वाला डिटेक्टर, दिस इज राउंड विंडो, प्रोमोन्ट्री, ये एलिवेटर स्टेपिस। कर दीजिए सिस्टर। डिले कर रहा है ना, हाई डेट ज्यादा कर रहा है। सिस्टर सुखा लिए डायलोकेन लीजिए या नॉर्मल सलाइन लीजिए सिरिंज में। हैं? बाला निकालना। हाँ, बड़ा निकाल देते हैं। You've removed malleus also, boss. Yes, malleus was friable. गिव मी ब्लेड, दिस वन, ये ब्लेड थोड़ा सा आप इसको दो ना यार, ग्राफ थोड़ा सा सुखा के। हेड को की भी बिल। हाँ, यहाँ से ऐसे लेंगे। हेलो हेलो, थोड़ा नॉर्मल लाइन से वॉश करो ना, पिक्चर थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है। थोड़ा ब्राइट है ही सर, पता नहीं क्यों। नॉर्मल लाइन डाल के डालो उसको सिस्टर। सक्शन कर लो, डालो। थोड़ा बेटर हो जाएगा। नहीं, ये ब्राइटनेस भी थोड़ा ज्यादा है, पता नहीं कैसे। और ऊपर ऊपर उठाइए, ब्लड का कलर भी कुछ अलग है। ऐसे करिए, डालो 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 सिस्टर, डालो। LED लाइट में थोड़ा अलग, बंद। उसको ज्यादा ब्राइट कर दिया है। कट गया। वेसस कट जाना चाह रहे थे लेकिन कट गया नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात, हो जाएगा ऐसे। छोड़ दो, इसको ऐसे करिए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वैसे हाँ से ठीक है, हम घुमा रहे हैं, चलो ना। छोड़ दो, छोड़ दो। थोड़ा ब्राइट है ही सर, इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से कहीं से थोड़ा उजिंग है एक जगह पे, इधर आइए। कोई बात नहीं। एक कॉटन बॉल छोटा सा दे दो सिस्टर। फुर्सत से पकड़ लो इधर वाला एंड वा संजीव। इस उजिंग को बंद कर लेते हैं। चलो चलो डाल दो। कैमरा लगाया है इसका फोकस। थोड़ा सा लगा हुआ, इधर लगा हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए। नहीं, हम दूसरा वाला माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, उसमें बेटर होगा तो। अभी हम जाते हैं। छोटा सा और दे दो कॉटन बॉल। ऐसे ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा मत सुखाना सिस्टर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा पकड़े हुए है। एक देख लो। हाँ, दिख रहा है। हो गया होगा, हाँ हाँ, बहुत हो गया तो, कड़ा हो गया बहुत। अब गिव मी, नो नो उसमें दीजिएगा। इसको बंद करना है। समित को भी एक हम छोटा भी हो सकता है, थोड़ा लगता है। रेक्टेंगुलर पेपर वेट है, ड्रिल का जरूरत ही नहीं है। उसी पर करो। नहीं, तुम लाओ ना रेक्टेंगुलर पेपर वेट, तुम्हारे हॉस्पिटल में भी कुछ दे के जाएंगे ना।
वो ट्राई गॉज सिस्टर दीजिए, उस पर सटाएगा तो सूख जाएगा तुरंत। देखो पर 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 थ्रेड दीजिए ना उस पर, हम तब तक इसको सूचर कर देते हैं। सूचर करवाइए। थ्रेड दीजिए। हाँ मर्सिल। हेलो, ब्लेड ब्लेड ब्लेड। हम लोग एथिलॉन भी यूज करते हैं। इथोलॉन, ये बिक्रील कुछ भी। How do you, sir, decide on the size of the pore or the length? इसको हम इस पर्पस। How do you decide how? ठीक है, यूज कर सकते हैं। पलटो। Just on इसको अब गर्म पानी the basis of experience. Okay. जाएगा पूरा ग्लास। And this is you're making a groove for the stipage tendon. Yes. मर्सिल 30। हाँ। अभी नहीं, अब छोड़िए, अब रहने दीजिए, अभी तो ही। नहीं अभी रखो, सेकंड के थर्ड केस होगा ना। ग्राफ्ट उसी में, इस तरह से काम उसी में करेंगे, और हर एक ओटी अथी में इंस्ट्रूमेंट सेट में वो एक रखो, ऐसा 4 रखो, समझे? तो इससे क्या होगा? आइए दिखाइए सिस्टर, इसको रखो, कहाँ रखोगे? गिरे नहीं। हाँ, कटोरी का सहारा। अब हमको जरा निकालने दो, फोर्स पे दे दो ना। कोई किसी और तरह से कोई भी क्रोकोडाइल या कोई ये लगने का डर है, कॉटन ये सब फंसने का डर है, वो सब सही रहता है। स्टरलाइज भी हो जाएगा, ऑटोक्लेव भी हो जाएगा, समझ गए? हम ये थ्योरी दिए बॉस को, बॉस मांगे कि ग्राफ प्रेस खरीदना है। हमके ग्राफ प्रेस क्यों खरीदना है भैया, बताइए? ग्राफ प्रेस क्यों खरीदना है? पकड़ नहीं रहा है। हाँ पता है हमको, उसको बाद में निकालेंगे, पहले इसको डाल के देख लेते हैं। माइक्रो नहीं है, इससे छोटा टूथ नहीं है। ठीक है, फाइन। ओह सॉरी, ये राउंड बॉडी नीडल है ना? हाँ अथी है, नहीं हीटर नहीं है। आप इसको रखिए, इसके लिए हेयर ड्रायर रखिए। ओटी में हेयर ड्रायर रहना चाहिए। यस, आइडियल सिचुएशन हेयर ड्रायर है। हेयर ड्रायर मंगवाइए। और भाजी दोनों एक पड़ माइक नहीं मिलने से अदर इन लोग को इंडाइजेशन। ठीक है, जाना तो कोई बात नहीं। और कुछ एनीथिंग इसको फ्रेश वांट टू नो? कब दो सिस्टर, और पतला कर सकते हैं इसको। कब कोई दे दो ना, कोई फरसक दे दो इसको हम पकड़ सके। कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। राउंड बॉडी है। संजीव को बोलो कि स्टेप से शुरू करना। इतना टाइम लगता है, इसका मतलब है कि हाय, गुड मॉर्निंग डॉक्टर राकेश, डॉक्टर संजीव। गुड मॉर्निंग मुनका बॉस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम टू रांची। आप लेट आए हैं। हाँ, या दैट्स व्हाई आई मिस्ड योर लोकल इन्फिल्ट्रेशन एंड आई वाज टोल्ड दैट इट हैज बीन ऑलरेडी सोन। यस राकेश, कैन यू हियर मी? यस सर। अभी क्या कर रहे हो? ये सर थोड़ा सा ये जो टॉर्प यूज कर रहे हैं, इसी को गुड से डिवाइड कर देंगे, तो वो लेफ्ट ईयर के लिए हो जाएगा, ये इधर के लिए हो जाएगा। थोड़ा सक्शन करके सुपर स्ट्रक्चर जरा एक बार दिखा दोगे फिर से, बिफोर यू पुट द फाइन। एनीथिंग? नो। हाँ, क्या है? ग्रुप बनाए थे। ये रेजिडेंट क्या कर रहे हो अभी? रेजिडेंट हैं, कहाँ से पीजी किए? ठीक है, तो वहाँ मेरा एक वर्कशॉप देखे हो कहीं? कब देखे? राकेश, बिफोर यू पुट इट जरा सक्शन करके सुपर स्ट्रक्चर दिखाइए। कर दे रहे हैं सर, कर दे रहे हैं। आपका इच्छा पूरा जरूर करेंगे। हाँ, सीधा था ना। it was a matter of great surprise कि Dr. Munka said that I missed infiltration. Dr. Munka is in habit of infiltrating anywhere. How can he miss? It was really a surprise for me. No, you are right, basically, anything which you do live, people should get interested in that
and it should be relevant things, not the irrelevant. Now I will take Munka sir. Yeah. Now Yes, Sanjeev. Tara Bichi suture. Okay. We will going to take a Tara Bichi suture. अगर Yeah. आप यहाँ ला देंगे तो it could be very good for all of the viewers and. Can you wait for a while before you put the Tara Bichi suture? Yeah, I can wait. I can wait. Yeah, that's better. BMK सर को प्रणाम. अफजल दर ले लो सिस्टर. BMK सर को प्रणाम. चाय पी रहे हैं सर आप तो. हाँ भैया प्रणाम प्रणाम. कैसा है सर, सब तैयारी हो गया पूरा? या इतना कैसे हो गया पूरा, ऐसे कैसे हो गया? वो अंदर चला जाएगा, इसको काटिए. एक सेकंड. उसकी अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ बॉस? नहीं जानते हो, थ्रेड भी गड़बड़ है, ये भी नहीं पकड़ रहा है. नहीं अभी हो जाएगा. हाँ अभी हो जाएगा. ले लो सिस्टर. थ्रेड भी दो ड्राई सिस्टर. अगला बार में लेंगे उसको. एगो फाइन टूथ फोर्सेट नहीं है, इससे छोटा जो आता है. हो गया, बैठ गया. चलिए लाइए, अब कैमरा इधर करिएगा उठा के. कुछ लगा हुआ सिस्टर उस पे. लाइए वो सूचर दीजिए तो. ग्रीन नीडल होल्डर सूचर के साथ दीजिए. नहीं यहाँ पे लाना होगा बॉस, यहाँ पे लाना होगा. यस. ये क्या राउंड बॉडी है? इसीलिए नहीं इतना दिक्कत हुआ है. संजीव का क्या नहीं होगा, वही वाला बड़ा वाला दीजिए. डालो सिस्टर. बड़ा वाला दीजिए. हाँ ठीक. हाँ संजीव, ये कैप अभी फैशन में है क्या? क्या? This cap is in fashion? No boss, no. First thing Ahila started. Yeah. Then I saw Satish Jain using it. Janki is also using it. So I think why Sanjeev should be lagging behind. No. Just. Okay boss. जरा ये देखिए. Hello. हाँ या. Larger needle for we cannot see that picture. Can you focus? Yeah. I am just going. I need larger needle for the Tara Bichi suture. This needle is a smaller one. Yeah. No. Dhaga is 30. Dhaga should be 30, but the needle should be specified. Larger needle बड़ा वाला जरा है कुछ? गायनी में जो यूज होता है. नालो सिस्टर. अभी तक क्या किए हैं बॉस? हाँ. मुनका सर. Yeah, please. Yes, what we have done now till now, we have harvested the temporalis fascia from अब मुनका सर को दिखा दो. Same side. कैमरा शिफ्ट करके. Supra hairline. This is the hairline. Yeah. Okay. Okay, that's pretty routine. Yeah. Yeah, routine. And this is bilateral, so I given this larger शिफ्ट करके दिखा दो. incision to harvest a bigger size of graft. Okay. Right. I start using only temporalis fascia in tympanoplasty. After many trials, I used perichondrium, I used cartilage. कर देगा तो इधर उतना. I use cartilage, everything. But for me, why temporalis fascia is most important and why I use almost in every case temporalis fascia. Yeah. So this is one question I will answer later when I start. नहीं. Now I am going to take. डालते हैं नहीं डालते बेटा. ये निकल जाएगा बाहर. Yeah. No, yes. ऐसे ऊपर. ग्राफ. हाँ ऊपर इधर से घूम के आओ. कोई बात नहीं है, ज़्यादा सूखने से दिक्कत नहीं है. ठीक है. Are you able to say? Yeah. So when I pull this pinna behind, it will create a straight canal. Okay. And usually you are habituated. You all people are habituated to see the canal with this maneuver. Okay. So with this maneuver you can't keep doing this throughout surgery. So we have to give a stay suture. Okay. And a stay suture for a straightening of canal. This is only the Tara Bichi suture what mean to.
Yeah. So if I have to take incision, that is incision, I have to pierce prick the canal from medial side. Yeah. Okay, in posterior wall. And Yes. I will come out with this way, okay? Post-oral region, and Post-oral then region. you, yeah. And now I will put another tie with the this surrounding drape. With the drape, yeah. Okay. Yes. And this will stay like this. This will hold and it will act like a retractor. Act like a retractor. Yeah. This is the standard Tarabichi suture. This is the standard Tarabichi suture. Yes. Just cut it. Any modification from you? Modification anyone? I tried, but I think This is the best. It was not much. Or you can ask your assistant to pull the pinna up backward and upward. But how long? Throughout Oh. surgery, half an hour, 45 hours. I don't think it could be feasible. No, it is. I do it. Tarabichi in suture is best. Best. One There is thing no is need of very any important, modification. boss, Swani boss. Yes. When any surgeon telling my modification, little modification, मतलब ये हुआ कि वो सर्जन में गट्स है अपने स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर से थोड़ा सा अलग हट के रिजल्ट देने का. So little modification is a big word for any surgeon. This is true for everyone. No, any modification you do in the existing technique, if you are facing some problem with the existing practice. Exactly. So little modification is a very good thing for the individual surgeon, whosoever, who is trying to do something better, and according to their techniques and everything, they can modify a little bit. That you call, Sanjeev, that you call as a personal preference, then rather than a modification of the existing procedure. But you have to put your name in the history, na? Oh, for that you have to, there are many things to do, still many things are unexplored. Yeah. So now Coming back to temporalis fossa and cartilage, Geos, he had published few reports rather, where he find the audiometry finding post-op is almost same as with the cartilage, and even he has stopped doing it a sliced cartilage. He takes the full thickness cartilage. So what is your view on that? 2018 publications are there. Actually, by Dr. Geos from Brazil. And it's a big series, not a small one. Yeah. We can have many papers, cartilage versus temporalis fascia, cartilage versus perichondrium. Right. Make it more higher. We have many papers. But why the one surgeon is preparing temporalis fascia and why the other surgeon is preparing cartilage? This could be the question. And that question, the answer is that the little preparation is only because I know that whatever things you are going to apply, it is a cadaveric thing. Okay, temporal fossa, we have lifted 10 minutes back, 15 minutes back. Even when I harvested the graft, it became cadaveric. So cadaveric things have to vascularize inside the canal. When you put, are you able to see? Now it's okay. Go there. दिखाना है तो दिखा दीजिए, नहीं तो हम क्लोज कर देंगे. दिखा दो तुम, बिना दिखाए मत मानो, दिखा ही दो. सर. राकेश वाला दिखाओ भाई. Final. We are not with him now. We are with him. Yeah, now we are with him. Yes, sir. This is PORP. Light दीजिए please. I am putting this PORP over superstructure. Munka sir? Yes, I can see it. Go ahead. Superstructure is visible. Yeah, it is quite clear. This is superstructure. This is tendon. Oh, I am still not able to see the. I am trying to. right angle circular knife है ना इसमें, ये right angle नहीं है, ये ऐसे rotate this right angle नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इधर है ना. Actually, regarding cartilage, just like to add something. Na? Everyone has
everyone is seeing lot of cases of tympanous sclerosis. Yeah, simple laryngeal sclerosis, huge laryngeal sclerosis. Yes. And tympanous sclerosis all around, but we are not finding any audiological problem. Hearing is absolutely normal. Although we have complete tympanous sclerosis of the tympanic membrane. Yeah. So nothing is harder than your bone, that is calcification. That's why there should not be any difference between cartilage thickness. It will not bring any change. It should be regardless of the cartilage thickness, the results is not going to change. It's very simple. Simply, No, then again, my simple observation. Ashwini, when there are so many techniques, one should do with what he is comfortable with his results. Don't just be ruled by what paper says. So I'm telling you the fact, okay, if the tympanus, if you are seeing a presence of tympanus, it's completely normal. It is undisputed, temporalis fossa is more closer to your normal tympanic membrane, as far as the function is concerned, as far as the structure is concerned. So there is no dispute about that. There should not be. Yeah, only thing is in harvesting that you have to put another incision, which in cartilage you don't have to. But then if you are comfortable with whatever procedure, that's the best way to do it. Yes, I agree, boss. I agree. Yeah. Temporal fossa is for me is best because I feel comfortable with the principles. And that is more physiological. That is more physiological. Yeah. More physiological is better. It will vascularize early, and the manipulation inside the canal according to the size of perforation, according to your placement of graft, it will go nicely. That is why. And obviously you said that the compatibility of single personal surgeon is very important. When you are comfortable with the cartilage, you can use cartilage. But this is the temporalis fossa for me is the best. It is always said that you watch everybody, you learn everything, but do with what you are more comfortable, and you are getting good results. Exactly. देखो तुम्हारा बहुत green जो है ना, हाँ सर. So can I have the endoscopic view of my canal, which I am going to operate? Rakesh, Rakesh, view is there. Rakesh, are you testing the mobility? Mobility. It is okay. It is hypermobile, sir. There is no need to test the mobility. Okay. Good. I am just putting this cartilage and larger one because aortic. And before that, we will use needle. What do you mean by hypermobile? What do you want to? No, sir. Just joking. It is mobile. Normal or abnormal? This hypermobility is normal or abnormal? Normal mobility is there. You say normal mobility. Hyper is something else. Yes. It cannot be hypermobile. Ashwini. This is PORP. This is cartilage, and cartilage is larger one. हम तो सतेंद्र उसके पास साथे करेंगे तो गड़बड़ आएगा. For osteoplasty, I left using this prosthesis. Oh, अच्छा. Can I go ahead, boss? Nice meeting. Boss. Yeah, please. Can I go ahead? Rakesh boss, आपका हो गया? Yes. Yes. Rakesh is almost done. Now he is putting back the flap and going to pack up. We can shift to Sanjeev. Yeah. Thank you. Is okay. Visibility is okay there? Yeah. Are you comfortable with the vision? Hello, Munka boss. Yeah, please. Yes. This is fine. Right. Any modification you need? No, it's good enough. Good enough. Now, very nice. Excellent. Give me the. This is the Edlin soft cotton ball. We have already given during preparation of my canal. Okay. Yes. So I am going to remove it, and we will have a very decongestant, very good decongestion. We can have. Double-ended. And this is a very large perforation. Oh my God. ये नहीं दूसरा वाला. Nothing left for the hearing. Yeah, hardly any rim.
He will shift to No, microscope. the stapes is not here. Okay. No, he will not shift to microscope. You can see that. Why should he shift to microscope? What is the need of shifting? And this is the epithelium going inside. Yes. This is nice case for demonstration. The beauty of endoscopic ear surgery is it is best to demonstrate. ये नहीं straight वाला चाहिए It is दूसरा not वाला tympanoplasty चाहिए now. This is not tympanoplasty simple type 1. Yes. ये भी वही We है will have और नहीं है इसमें flag होगा हाँ boomerang type 3. flag है ना हाँ So I am just pressing the margin here. You can see. And this is also important. You have to clean the raw epithelium which have already चला gone गया ना सब inside जगह and during healing. यहाँ देखो थोड़ा सा लग रहा है So, Sunny boss is now happy. This is good case of demonstration. Yes. Okay, fine. Give me forceps, please. This could turn out to be the best case for today's workshop. Yeah. Ashwini, sorry, Ashwini, no. Sanjeev, tell something about the pre-medication. Any Ashwini का नाम ले सकते हैं. मेरा नाम भी ले सकते हैं. ये सॉरी आप जल्दी तो भिंगा के सिस्टर. Yes, Sanjeev, what was the pre-medication for this patient? This is xylocaine infiltration because this is in GA. So Satyendra boss have already given the idea. We can't put infiltrate xylocaine in GA. You can use normal saline instead because we need only Adrenaline to give decongestion. So if I have to give regional anesthesia, I always give 2%, 1 in 30,000 solution. 30,000 means, give me Caesar. 30,000 means 1 ml of Adrenaline is 1 in 1,000. Okay. And 30 ml of lignocaine, xylocaine, whatever you can say, and mix it, so it becomes 1 in 30,000 solution Adrenaline versus xylocaine. Okay. Okay. So this Mostly commercial available are 60,000, not less than that. 60,000. Commercially available xylocaine adrenaline, it comes with a 60,000 adrenaline dilution. And he is using 30,000. Yeah, give me Caesar now, please. No, 1 in 60,000 is also available. Dental people are using it. But I am using 1 in 30,000 for 3 years. I have not seen more than less than 60,000. Caesar, please give me Caesar, macro Caesar. Okay. So this is almost fresh. We have freshened the margin. Now I will take the double door technique in this case also. This is my routine procedure. And double door means I have. Will you like to visualize the additus area? Will you like to explore a little bit of the additus? We will do, definitely. So this is annulus, and this could be, if I go laterally, this could be the right place to take incision. Okay, so I am taking, this is 12 o'clock, this is 6 o'clock. आप दिखा दो तो एक बार उधर. So from 12 संजीव. Yeah. जरा कैमरा 1 मिनट के लिए शिफ्ट करके फाइनल दिखा दे रहे हैं. फाइनल दिखा दीजिए. देख लो संजीव तुम भी. हाँ देख लेते हैं. बॉस हैं तुम्हारे. बॉस को देखना ही पड़ेगा ना. Yes. Fine, boss. Great. Sanjeev, before putting the incision, will you like to see the middle ear aeration? Or after taking the flap? And after taking the flap, that would be best. Okay. Hello. You get space, yeah. Hello. Yes, sir. Yes, Rakesh. Is it visible, sir? Fine. Yes, yes. Yes. Now you can see all around the graft is over the bone. Anteriorly, anterosuperiorly, posterosuperiorly, posteriorly, everywhere. And this cartilage, big cartilage I have given over PORP and to cover the destroyed attic region. Great. To avoid any retraction. This is your routine. This is your routine. You are using prop, Teflon prop. No, usually I use the bone left behind to augment the incus. Step piece. Okay. But in many cases, incus and malleus both are destroyed.
So in my case, we can have also no malleus, no incus. Malleus is slightly smaller and no incus and no stapes. Okay, sir. Fine, fine. So now shift to Canada this OD, please. Excellent, Rakesh. Let's hear some jokes from Dr. Rakesh Nain. It's time for joke. Now Rakesh? give me a view. Joke, sir. Shift the camera to OT2, please. पानी वाला नहीं. नहीं, sir. बताते हैं. Yes. So this is what we have taken in season here from 12 o'clock to 6 o'clock. And then I will elevate the flap to make anterior door, bigger anterior door. हो गया, अब हमारा थोड़ा कुछ इसमें काम है. And this is because we are getting a very good view, very good hemostasis because of the already prepare the. Now give me Adeline ball, please. Actually, there are 3 techniques worldwide. If you see in relation to your technique, that is what you call 2-door technique. Another one is popularized that interlay technique that works on the same principle. Another is why Professor Vincent, when he takes out all of the external canal and then drills it completely so to visualize all the quadrants of the tympanic membrane, including annulus. So Vincent has claimed that there is no flap necrosis in this case. What is your take about your flap necrosis? Because I have come across a lot of flap necrosis. I never face flap necrosis in this technique. You have never faced flap necrosis? No, never. So then what is the cause of failure? Because no techniques has got 100% result. I already given lesser size of नहीं है तो ऐसे ही डाल देंगे, कोई बात नहीं. thicker one. This is thicker one. We need न्यूज़पेपर दे दो तो थोड़ा सा. thinner one. Okay. नहीं है, कोई और मलहम? I am just telling. नहीं है तो दो, सीधे दो, कोई बात The नहीं. reason of failure. We categorize the failure in three ways. In your series, don't be. I'm not talking about Dr. Satish Jain or Vincent. In your technique, what is the failure of your case? What is the reason behind your failures? Because everyone is suffering from failures. If anyone complains, say that I have not failed, then he is simply telling a lie. Let me complete the things. Let me answer your question. Failure for me in my series in thousands of cases. Earlier it was higher because my surgical skill was not up to the mark. देखो सिस्टर, ये चीज़ So, Dr. Sanjeev. Yeah. Dr. Sanjeev. Yeah. Are you using this endoscope and camera after autoclave or just wiping with the spirit? Actually, I have given in this OT. I don't know which installation method I use. ठीक है. It has to answer. I have कुछ भी नहीं करना है. मतलब इसको अभी ना बोल रहे हैं आज के बाद इसको ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है. Unless you are using autoclavable अभी तो हाँ endoscope and camera, chances of infection will be there. Satyendra boss, putting your instrument into side X for 6 hours minimum, that achieves the purpose. So there are now, during the COVID period, there was a lot of discussion about endoscopy, sterilization procedures. And side X takes around 6 hours. There was one more solution. I don't remember the name. That takes around 2 hours. No, I'm talking about the camera as well, sir. Because a lot of camera, we are having HD camera. That is autoclavable. You can yeah, they are. But if you get a seat for your all the tubings, that is good enough. Because that sheet you are using, as we used to do in the micro drill and the microscope, that is good enough. इसमें ब्लीडिंग होना नहीं है को बताते हैं. जो उतना डालती हो ना कुछ जरूरत नहीं है. Yes, Sanjeev. एक दो डाल दो. This level of पैड डाल दो बहुत. If I give surrounding this, it will full cup. इतना जरूरत ही नहीं. Then I will avoid full cup. So I am बताते हैं ये सब करने का जरूरत ही नहीं है. दो क्या डालती हो? Actually, it is almost full graft. It is same. It is no difference at all. It is not full graft. And difference is that you can reposit your flap. What about raising annulus? चलो डाल दो, जो डालती हो कर दो. Annulus will be reflected all around. नहीं होगा, इसका ड्रेसिंग करने का जरूरत नहीं. Cannot say that it is not full cup. It is also a full cup, but two attachments. One of the mic, Rakesh का mic को थोड़ा कम कीजिए, because it is disturbing. We can shift to you. Yeah.
full cup. Because the sound is... Full cup means when you are taking out the whole skin outside the canal. That you can say that just like extracorporeal septoplasty like thing. So extracorporeal, when you are taking Sanjeev, out this is Dr. Suri's technique. Dr. Suri's technique, he does it as Aswini was asking about technique. Dr. Suri's modification, which is now well accepted, he takes out the annulus all around. So just see that there is some chorda tympani, variation of chorda tympani here. Right. Here So, give me section, please. and basically 90% results are always there. Right, Whatever method you do, the fight is between 90 and 99%. 90% any technique will give you a result. Fight is for 90 to 99. Claiming that we are giving good result is not, until unless you publish your paper. Right. It could be not acceptable and your voice could not be heard. No, it has been published. That paper has been published by Pavan Singhal International Journal and International Forum also. Before Pavan Aswini, that was basically Suri's technique, they call it. Yes. Dr. Pavan never claimed that is my technique. Yeah. He put his name in that publication, but every publication is not true. Yes. And you see, you need a long-term follow-up, which we do in our practice. Apart from the papers. आवर भारतीय के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर कुछ प्रमाण नहीं है. बस, that's true. Because patient आपके पास पहुंच जाएगा, हमारे सब patient local रहते हैं. उन लोगों के पास जो patient जाते हैं, they will not go there. Complications they will be tackled by you, me, everybody in the periphery. Sickle knife. Erlin ball. मेरा phone था ना कहीं पे. Any surgery. Yes. Simply tells one thing. That is nothing, no technique is perfect. Yeah. That has led to the evolution of so many techniques. As I said, 90%. It means we are still don't know what is the real name. What is the, that is 9%. We don't know what is the basics of healing. That's why we are failing. बॉस हमको आप बोलने नहीं दिए कि मेरे हाथ में फेल्योर क्यों हो रहा है. हाँ, yes, please continue. Let us hear Sanjeev's reason. His analysis of cases. It was surgical technique failure, and now intrinsic factor is very important, and ventilation obstruction. What was surgical technique failure, Sanjeev? Can you elaborate? I was not aware of the all the principles like we have to clear the ventilation. That is head of my list. Understand? Give me please. So it was surgical. Initially, anybody can have a defective surgery, and they can learn, but they can not apply 100% in first initial cases. That is what we call as a learning curve. You know, that's the learning curve. You learn by your own mistakes. Yeah. And that is the best way to do. Yeah. So that was initially, and now intrinsic factor is most important. Intrinsic factor means we have to face the different kind of the taking of graft problem. Somebody is having a very early taking of graft, somebody is a late, and somebody never take graft. So this is the intrinsic, and this is not in your hand. You never know the same technique in first time you will face failure, and same technique in second time in same case, revision case. This is cholestoma. This is the chorda you are going to preserve. No, this is cholestoma, I think. We can have cholestoma vision. No. At say around is it cholestoma? 8 o'clock? Cholestoma? Yeah. Is it cholestoma or something else? Cholestoma, boss. Okay. And this is good case. Endoscopic. Give me a sickle knife, please. What is the recent advances for the audience? How to differentiate cholestoma from granulation tissue? Anybody? Cholestoma from granulation? Yeah. Both are entirely different. So now I can't preserve. Something we use in laryngology. Can't preserve this chorda, so I am going to remove the chorda. Yes, that is what I was saying. That is the chorda. Yeah. Will you like to preserve chorda in this case, or simply cut it out? No, I will cut it. Because I want to go very safely with chorda when I'm going to manipulate and going to. This is we need scissors. Cutting or pulling?
No, cutting, boss. Always sharp cutting. We are leg pulling you. अरे no, boss. ये सीजर भी तो leg pull कर रहा है हमको. देखो नहीं कट रहा है. सतेंद्र बॉस बोले थोड़ा सा खींचो इसलिए कर रहे हैं. खींचिए ना, कोई दिक्कत नहीं है. वो पूरा नाश्ता उस्ता करके आया है खिंचाने के लिए. नहीं, सीजर दीजिए ना. माइक्रो सीजर दीजिए, ये कट नहीं रहा. जब तक सतेंद्र उसको सवेरे मिलता नहीं, he is not in a mood to do it. Fine. बोले समित को बोले यार मंगवा दो. Now this is what we have done. Yeah. And this is elevation of 360. You can see. Either. Yes. Either हो गया. Now we can see. We can go simply with 30 degree and can have 30 degree endoscope, 45, 30 degree, and 70. What do you have? Will you like to do some echotomy? Yeah, definitely. Yes. Without doing echotomy, how can we confirm that cholesteatoma is going where and how much we have to do bone work for removal of cholesteatoma? You can see it with 45 degree telescope. Yeah, I'm just going to see. I'm just asking. गाड़ी में रखते हैं, अपना गाड़ी से नहीं आया है. 45 लाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. उसको सिकल से संजीवित. No. I will not disturb this. Basically, you have to follow the cholesteatoma, and for that, I think you need to curate the wall as well, little bit. No, I will use osteotome for removal and creating a window. Just see. Okay. कोई बात नहीं. 45 नहीं, 70 नहीं है. 70 भी नहीं है. 70 लाइए ना. स्ट्राइकर का इंडोस्कोप. एक महीने बाद फिर खोलेंगे समित बॉस. एक जो कैमरा यूज करते हैं लेनिकोलॉजी में, what is that? Yes. Can you see there? Yes. Advancing. Yes. This is good. I'm just going to focus. Okay. So I think this is not cholesteatoma going inside. I believe there is some. Give me curve suction, please. Curve suction. Slightly more curve. We need. Yeah, this one. Your picture is out of frame. Yeah, I'm just giving you the view because I need suction, boss. I need to go inside and suck it and just see. No, you will remove the cholesteatoma first, or you will look for the ventilation before doing that. At what stage you should check the ventilation? I am going inside to see whether cholesteatoma and how much cholesteatoma inside. Okay. एक minute, just give me suction, hard suction, please. I think if you can curate the overhang, you will see, visualize better. Okay. This is not going inside the. Yeah, that's why, Sanjeev, if you curate the overhang, you can see it better. Okay, I will remove. Give me osteotome, please. Yeah. Osteotome. छेनी हथौड़ी नहीं है. नहीं. कि हाँ ना इसी से करेंगे. वो नहीं था वो जो तुमसे मांगे हैं सर्कुलर. काम तो चीजल ने हमर दीजिए प्लीज. इससे करो तो थोड़ा सा इससे करो ना. सब नहीं यहाँ पे बनी यहाँ नहीं. हाँ ठीक है, देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग का फ्लाईओवर ही नहीं बन सकते. मेट्रो तो बात कर. I'm just curating. Yes. I don't have osteotome. Yeah, that is what I am saying. Probably curating is the better method. That is control. You can say better. Yes. Always. You don't take out a chunk of bone. No, actually, in this case, we don't have any risk to remove by chisel and hammer because we don't have any oscills to dislocate here. And already border has gone.
And already Koda has I had given the Koda has already cut and sacrificed. So we are just seeing the cholesteatoma epithelium is going. One new question just has arisen with me. Should we test the test of test, that is gustatory test, before cutting? Should we test before surgery condition of chorda tympani? Is it working or not? Yes, we can how to test? Yeah, we are not habituated to test it. Is it working or not? Because people has claimed that it is almost always disease and it is functionless. How we have to test? But there are few people who complains very severely and very badly. Yeah. One case of my stepis complained very badly, sir. I have lost my test. नहीं give me छेनिया तो आ गया नहीं ये तो बहुत बड़ा है बस बहुत छोटा चाहिए हमको give me curate curate भी बहुत शार्प नहीं है दोनों तरफ से करो उधर से ठीक है What is your take on piezo drill? Have you used any experience of piezo? No boss. Sanjeev? Never. People I have seen, but I in one trial I did in academic in Dehradun, but that is one chance I have tried, but never repeated. Give me drill versus your curate. Sanjeev, what is your take? In endoscopic ear surgery, yes. I avoid power instrument. Okay. Right. This is too big to just. What I was talking about the future in the endoscopic ear surgery is also going to be Rubina camera, which gives a different color to cholesteatoma. This is in just few publications, not much. And probably in future, we are going to get a navigation system as we do in rhinology. Actually, Rubina is just a marketing grip, nothing more than that. Maybe, I cannot comment on that. Nothing is better than if you have got 3-chip camera, 3-chip simple, 3-chip HD camera, that is enough. That is enough and enough for any surgery. Ashwini, वो भूल रहा हूँ जो लेक्टोलॉजी वाले जो यूज करते हैं कलर कोड के लिए between malignancy and all that. हाँ, remove the PIP हटा दो यार. NBI is not for narrowband imaging has not applied in ear. What they think, probably we have to evaluate if that is going to make any difference or not. Actually, narrowband imaging has got multiple names. It comes in different names by different companies. Like a Stryker has got different name. Yes. No, Stryker has not introduced, sorry. No. Pentax has got same name, different name. Storz has introduced. But the technology is the narrowband imaging. Narrowband imaging has two different types of thing. One is direct light management. So Sanjeev, right now what you are doing? The Storz and Pentax works on management, electronic management, digital management. Of this epithelium that is called fundus. If any sac, so I want to reach the fundus. Okay. Good. And once I reach the fundus, means I am very sure that this epithelial sac is just not going beyond that. So after giving a very window, I'm making the window, still that this epithelium is going inside, okay? So we need to expose more. Give me curate. So Pentax come with IS scan, okay? And Storz come with, what do you call, this S system, a SPICE. And they have got, these two have got digital management of that. But that is Olympus. Olympus got the true, this is true NBI. The true NBI means they change the color of light. Here they, in IS scan, in what do you call, a system of Storz, they manage electronically.
They don't filter the light. Basically, they change the light. Actually, eye scan and NBI, these have got the same thing, but management is entirely different. Yes. So, if you see the fundus, you can be sure that you have taken out the cholesteatoma. Is that correct? And what are the techniques to remove the cholesteatoma in endoscopic ear surgery? Kaise? Apart from follow it and any role of irrigation? Yes, boss, irrigation is okay, but you can't remove all the cholesteatoma epithelium with irrigation only. Irrigation does help. Removing bone by this technique, using goose and hammer, like osteotome and hammer, it will give a larger tongue one time and slightly. Yes, we can. Transmission, देखो ये जो. Yes. Give me Adeline ball, please. Once I give, yes. This is, I think this is a right area where fundus is, and can you see there? There is granulation, there's thickened mucosa there, I think. But it sometimes becomes very difficult to differentiate between thickened mucosa and cholestoma with endoscope, especially with endoscope system, with especially camera system. So when you land in, when you are unable to differentiate between cholestoma and granulation, best is to just remove the camera, see directly with the endoscope, then you will be in a better situation to differentiate between granulation and cholestoma. We can see here. This is, I cannot see this is cholestoma granulation, just lying inferior to that. Hello. Munka sir. Yes, sir. If you are putting methylene blue dye and wash it with the normal saline. No, not methylene blue. Only simple normal saline if you wash, it helps in separation, but that is not all. No methylene blue. I'm telling you different things. Yes. Cholesteatoma. Is there cholesteatoma or not? That will, yes. But methylene blue, whether it is ototoxic or not, there are, I don't know. Okay. Okay, fine. You just wait for the staining and wash it out with a normal saline. Then you can have the idea whether you are leaving the cholesteatoma or you have removed in toto. That is one technique. And granulations are usually, they bleed. If it is not bleeding, that means in most of the cases it is not granuloma. Am I right? Both are different tissues because granulation tissue and this cholesteatoma can be very well differentiated. Yes, it can be differentiated. As Ashwani said, your eyes are the best to differentiate in our practice. And of course, there are newer development are going on. Let us expect in next 10 years we will get something. Something that will robotic ear surgery. You have to sit and robotic. Yeah. The future, if you see, future is going to be just like navigation in the nasal skull base. We may get a navigation system. In the coming days, robots will be able to identify cholestoma and granulations. And we will add our just robotic Dr. Munka. It is, it is just like ECG, which you get a report comes, but that is always to be certified by a cardiologist. Artificial intelligence, they are doing basically data studies, So they are doing huge job. Yes. Big job. Endoscopic cholesteatoma surgery This is the future of. Good morning, everyone. Can you hear me? अरे चाय कॉफी दारू सब मिलेगा. Hello. हाँ प्रवीर बोलो. Yeah, Praveen. I'm all set. Going into the OT now. Okay, all set for going to the OT. Yeah. Okay. So we should see right from your changing of the dress. No, as I said, I'm all set. You missed that part.
Sanjeev, what is that? Is it granulation tissue? None of us. It is. No, Praveer, I think you should. You don't start right now, na? Yeah. Once Sanjeev clears the problem, na, he completes the surgery, then you start. Praveen, before you start. Otherwise, we will be switching between two, and Doctor, nothing gets completed. Praveen, So before you start, let us have the description of the patient before you start. Right. Just to brief about the. Yeah, just wait for some time. Let Sanjeev do it. Or can I be going to PIP mode? Irrigation. No PIP mode. Okay, fine. Irrigation, curve irrigation, please. Mode is just to like. Curve irrigation. भाई जो पहले लगा हुआ था पहले लगा हुआ था, हाँ. Now just नहीं fill वो it, तो fill it PIP up to बोलिए 10 ना. ml. पिक्चर तो बाबूजी का ओटी में यही आसानी है. Now just I'm just. अपना अश्विनी बॉस. Yeah. हेलो. Irrigate. Yeah, Sanjeev. Yes. Yeah, Samit. बॉस इसको बोलिए ना, ये कैमरा माइक्रोस्कोप का 1 मिनट लगाएगा, हम एडजस्ट कर रहे हैं. पिक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं हमको बताइए. बिना छेद वाला. Actually, picture here is getting pixelated. Okay. And color, we cannot comment right now about the colors until unless we see inside. एक स्पेकुलम दो ना. अब क्लियर हो गया. Samit, it is the second year of the. करो यार, 70 degree. No. Is the stapedectomy? 70 degree. It is the stapedectomy ना. Okay. सक्शन टिप जो था. एक बार और करो. ये स्क्रीन छोटा हो सकता है क्या? संजय. Can you minimize the? No. Yes, I am just taking 70 degree. No, can you get 2 screens at the same time? Can you compress the picture? हाँ, ये ठीक है. Yeah, now we can get the microscopic view as well. Come again, we are not able to hear you, Praveen. Is the color okay now? Acceptable, but needs little adjustment. What kind of? Tell me, I cannot see the view there. Is it too bright? Blurred. It's blurred. Yeah. Blurred. वहाँ पे मॉनिटर नहीं रखते हो क्या? फोकस करना. हाँ, दिख रहा है. मुड़ के भी White balance करो तो जरा. यहाँ तो ठीक दिख रहा है. White balance. Yeah, now it's better. Now it's कैमरा better. से वहाँ का स्क्रीन में दिखाया. वो तो दिख रहा है. नहीं, कई बार चेंज ये वहाँ का स्क्रीन है. ये तो अभी ठीक दिख रहा है ना सर? माइक्रोस्कोप वाला? Yes. Now we can see. कर सकन. सिकल नहीं प्लीज. बहुत क्लियर नहीं है. प्रवीण, can you focus a bit more? बॉल, कॉटन बॉल. उसको छूना है. अच्छा, is it Samit adjusting? No, it's me. Praveer boss is adjusting. Okay. एक स्पेकुलम दो हमको. लगता है कि. Yeah. छोड़ दो उसको. ला ले. नहीं और दीजिए ना, और बॉल. बड़ा दो तो. आउट हो गया. गलत तो अगर वो आ रहा तो ठीक है. नंबरिंग करेंगे. इतना बड़ा स्क्रीन है, स्क्रीन को छोटा कर सकते हो. Yes, now it is good. बड़ा पिक्सल ब्रेक कर रहा है उसके लिए. हाँ, आ गया अश्विनी, it is there. What you wanted? Yeah. थोड़ा सा लाइट कम कीजिए, बहुत ग्लेयर हो रहा है. बताना पड़ेगा ना. कर रहे. Yeah, much better.
So that was about focusing, that we can always Yes. do, you know. We will Yeah. have to keep changing focus. What we are more concerned about is the right color temperature. Right. Yeah. Much better. Praveen, tell us about the case. She's a 25-year-old lady, a 27-year-old lady, Give me, Sushila Orao. She has moderate severe conductive loss in the right ear. And the stapedial reflex is absent. So this is a case of otosclerosis. Yes. You are applying what is Teflon piston, different categories of pistons are there. Which type of piston you have selected, Praveen? Teflon, titanium, Indian titanium, ring titanium, that is clip piston. And what is your personal preference? I think the only kind of piston I have ever used is the Teflon. Is the Teflon piston. Yeah, that's fine. Okay. Yeah. That is all around the time tested and well proven. Yeah, I don't see the need to use anything else except because they're more expensive one. Yes. And the second thing is when I'm doing endoscopically, I cannot do a stapes because of this. Because the fluoroplastic pistons I find difficult to fix with one hand. Okay. Give me. So only stapes is a surgery where I'm using the microscope. Everything else in the ear I'm doing endoscopically. Okay. Yeah. So you have shifted from microscope to endoscope also. Yeah, almost completely. Okay. So what do you, what is your difference between microscopic perception and endoscopic perception? I guess one has to say that three-dimensional viewing is better in a microscope. But what the color perception? One thing is sure that with endoscopic. Depth, color. So it's more about depth. Endoscopically, you do not get the idea of depth so well. But endoscopically is easier in many ways in the sense that Yes, I agree. But then the only thing is you have to operate with one hand. Yes, yes. So, Okay. So with the stapes, that's a problem for me. I may need to change to Teflon piston or something that doesn't close by itself. If I'm trying to use one hand, that has to be the change in stapes. Sanjeev? Yeah. Why are you curating that anterior part, the protein panic area? What is the purpose of curating that area? I am just creating a socket, there is space for boomerang type 3. One will here, stay here, and other will come to the step is. Window. Okay. So, but you are curating in the middle layer. So, what is the need of curating in the middle layer if you want to create the space? No, I am just creating around the annular. That is L-shaped cartilage. Yeah, L-shaped cartilage. Will be the L-shaped cartilage. So, what will be the axis of that L-shape that we will be lying to put in the inferior canal or inferior area, just inferior or anterior-inferior? Some people put it on the annulus area directly like boomerang. Some are doing T-shaped, some are putting directly, that is triangular cartilage directly from the oval window. Dr. Suri is using and he is advocating. Do you believe in increasing the height of the mesotympanum in tympanoplasty? Not obviously. I think the biggest contribution from Suri is that in increasing the height of the mesotympanum, it acts wonderful. No.
Once if you think there is chance of adhesion between the graft and the major tympanum, increasing the height of the major tympanum is a wonderful concept, no doubt about it. I really appreciate that concept, and I am routinely using it whenever it is needed. Once you are just telling that removal of annulus. No, I am not with removal of annulus because my thought process simply is that tympanoplasty is totally a result of management of our external aortic canal skin and nothing adds. And rest of the things are just retribution to that. No. Like mastoid, that is so hyped things, the ventilation system is touching. These doesn't affect the result in short term, but it may affect the result in long term. That will be secondary infection, or you can say that ASM, repeated ASM, another retraction. But for primary result of the tympanoplasty is not dependent on anything other than the status of external aortic skin canal. External aortic canal. That canal skin. Yeah, skin must be good, and it should cover the whole the bony. How do you manage when you see a lot of granulation extending right from the annulus to the lateral canal wall up to a large extent? How do you manage that? Because this is a very routine finding. No, this in my case, I used to remove that part. Okay. Especially when there is a granulation and there is a mucosalization, you can Abhishek, do you want to add anything? No. We have to remove that part. Otherwise, we can't leave that to heal and just wait for healing, natural healing. Even tympanoplasty, we remove that part. So what is your idea of vascularity of external aortic canal skin? How do you define it? मना कर दिया हमको करने के लिए अभी External canal skin. Vascularity has to be preserved, na? Yeah, let's So, give me some. I think this blade is not working. This blade is not working. 11 number का next blade दीजिए please. कटिंग जिग है. 15 नंबर ब्लेड था ना सिस्टर. ठीक चलो. करो ना इसको वीडियो हो जाएगा. हाँ क्या क्वेश्चन क्या था? I just want to ask you, what is your idea of preservation of vascularity of external aortic skin? Actually, the blood supply is coming from lateral to medial, and from superior to inferior. There is one video of mine that is the circulation of the flow of blood inside the blood vessels, and that indicates that video indicates that the superior to inferior blood supply is going from superior to inferior. Okay, in mesotympanum as well as in external aortic canal skin. So if you are having a for me if you are जैसे सॉरी बॉस बोले कि रॉबर्ट तो पूरा काफी फुल उठा लेता है उसका नेक्रोसिस नहीं है but for me if having a one tag superior and one tag inferior, it will also give a stability as well as vascularity should be intact for larger extent. Actually, what theory says is the vascularity of the skin depends upon the perfusion from the periosteum of the bony canal wall. So, even if you preserve the superior or inferior pedicle on raising double door technique, doesn't actually preserve the vascularity of the skin there. It's the periosteum which is again getting adhered to the bone and providing the nutrition to the skin. This is the point number one. So, there is no compromise on putting the graft 360 degree on the bony canal wall. So, primary aim should be like that. And second is planning the incision on the tympanomeatal flap should be such that the exposure should not be compromised. More circumferential you are on the tympanomeatal skin, the more is the chance of giving a stenosis and granulation on the external aortic canal. That has to be dealt. Actually, the patient is not on the regular follow-up. Then you should apply beep and antibiotic steroid ointment just post-operatively so that the chances of stenosis and the granulation formation should be minimized. Yeah, right. I am
am harvesting a tragal cartilage here just to reconstruct the defect, as well as I will apply boomerang type 3. Do you see the round window reflex in these type of situations? Obviously, obviously. Mm. In a very good situation. Without seeing round window reflex, how can we see that? Boss, have you seen the anterior epitympanum area? Yeah. I'm Dr. Rakesh. Rakesh. Have you seen the anterior epitympanum area, boss? Yeah. I can see. Is it clear? I will give you another view when I will harvest the cartilage. Okay. You will see again the all corners. Okay, we'll wait for that. इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं हम फॉर हार्वेस्टिंग कार्टिलेज. ओके, कैन यू गिव मी माइक्रोस्कोप? So we will leave tragus here. थोड़ा सा पहुँच दीजिएगा हैंडल पहुँच दीजिएगा. उसका जो अपने है ना, ये में स्प्रिट लेके स्प्रिट से. ठीक. ये ऑप्टोफाइन है. ये ग्लव्स डाल दो ना. साफ कर दिए थे. हाँ, पकड़ वाला हैंड स्लाइस वाला डाल दो. स्पिरिट वगैरह से क्लीन कर दिए थे. ये लो इधर लो. स्पिरिट से पोछ दिया ना. लो, इट विल वर्क ऑलमोस्ट. हटा दो इसको. On YouTube there are 26 participants right now. सिस्टर थोड़ा सा स्प्रिट हाथ पर ले लीजिए. फुल स्क्रीन में फिर ये इंफॉर्मेशन चला जाएगा. There are a lot of workshops going over all over India. Yes. There are a lot of workshops, so we will not get a lot of views. ग्लव्स पहन लेंगे दूसरा. इतना लैग. कॉटन बॉल दीजिए तो. कॉटन नहीं, दिस ड्राई कॉटन. कॉटन नहीं, गॉज नहीं, कॉटन. ओके. 7.5. .6 है ना. ये नॉट फॉक्सिन. ये ड्राई था. ड्राई चाहिए था. सब नीचे 1.6 कर दें. ये भी लाइट. Sanjeev, what you are doing? Scope, can you? I am just harvesting tragal cartilage, and that cartilage would be yes, the cartilage would be one side best pericardium. Both side of pericardium, I will leave one side of pericardium in the canal, the original, and I will harvest pericardium with. दो हाथ आपके पास खुला हुआ है. Okay, just give me. हो गया. It's okay, fine. Just to. हो गया. जस्ट इसको स्किन हुक से उठाइए प्लीज. इंजेक्शन लिया हम लोग. एंड गिव मी दिस नाइफ. कितना है ये? हाँ? कितना है ये? वेयर इज फ्लैग नाइफ? 5 ml adrenaline. हाँ. ऐसे करें कि लॉक 2% विथ. नहीं, वो हमको नहीं चाहिए. तुम एक काम करो, हमको. ठीक है. चलो स्किन हुक लीजिए. एक 30 ml. गिव मी दिस नाइफ. का जो लॉक्स 2% वाला आता है प्लेन ना. इसको फेंक दो. Sanjeev, can we have the microscopic view? Yeah, please जरा इसको लगाइए. इस पर कैमरा को उधर. Dr. Praveen, you are yet to start. I am sort of settling down. I am cleaning the ear canal.
Okay. I'm going to inject now. So, yes, as Dr. Sanjeev closes, maybe we can start here. I think if you are in Zoom, he stops sharing and you can start sharing your screen also. Yeah, I don't know. I'm not a very tech savvy person, so. No, the person in theater, they can do it. Somebody else. Forces, microforce. आराम से दोनों हाथ से पकड़ नहीं रहा है जैसे तो ठीक है देख एक पॉज ले लो Yeah. So we are starting our third case in the first routine. Dr. Praveen Narayan Singh is starting the case. He's doing a right stapedectomy. Yeah, and Dr. Samit Lal has already given us a history of this patient. Dr. Praveen Narayan Singh is one of the renowned ENT surgeons of Ranchi. We all know him. He's working in Santa Vita Hospital. And I hand over the mic to the scientific body here to begin the session. Actually, I'd rather be on the other side of the mic. It was more fun in the auditorium because... Praveen, can we have the microscopic view, boss? I don't know. It's, yeah. Yeah, now it is there. Yeah. Yeah. So I'm... फाइबर ऑप्टिक तरीका से Hello. Yeah. The surgeon is Praveen Narayan Singh and the moderator is Dr. Prakash Munka from Bokaro. He is a well-renowned faculty of ENT, particularly in field of comparing and Hey, don't say that. No comparing. and whatnot in the field of ENT Bihar, Jharkhand, as well as entire India. Actually, thank you. Thank you, Dr. BMK boss. Basically, this lockdown, sometimes it came as an opportunity. We got to see so many webinars, so many newer techniques and many other things. And because the physical conference were not taking place, now we are having that. So, and probably we will be assembling at Ranchi in the month of January 6 to 9 for our in-person national AOI-Con. So please, all of you, participate, register yourself. And we are planning to have a grand programs. It will be academic as well as social. Sir, thank you, Dr. BMK Sinha, sir, for introducing Dr. Munka so well. I now request Dr. Munka to please introduce Dr. BMK Sinha, sir, as well. Dr. BMK Sinha Needs no introduction. He is well-known authority in Jharkhand and Bihar, as well as he was also known. He was chief of ENT at CCL Hospital. From there, he superannuated, and now he is very active academically. So we can find him almost at every places. नहीं बजा देते हैं ताली. Thank you, Munka. मेरा जो हाथ है ना कांप रहा है दारू इतना न पी लिया ना सूटी का क्या चल रहा है हो गया और पतला होगा हाँ नहीं उसमें प्लेन नहीं है ये प्लेन है हाँ तो इसमें एक एम्पूल एड्रेनालिन डाल दो उसी पर एक मिनट थोड़ा सा उसी पर इसमें डाल दो नहीं रुकिए ना हम अरे कितना नहीं क्या कर रही हो क्या बोल रहे हैं हम एक एम्पूल एड्रेनालिन लो ना और वो उसमें डालो मिक्स करो हाँ बोलिए दे लो हेलो कर दो अब हम तो नहीं करेंगे
वो उसमें मिक्स कर दो। ठीक अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन इसको रखिए वहाँ पे। नाउ दिस मच पूरा मिक्स कर दो, फिर तुम उससे 6 ml ले लो। नापेंगे हम। हटाइए इसको इसको अति करिए, एंडोस्कोप लेंगे ये, इसको ये करिए। क्या चीज? नहीं नहीं स्टिच कर लीजिए, बाद में हो जाएगा। लाइए एंडोस्कोप लाइए। ग्लव्स बदलने मिला दिया इससे। ग्लव्स नेक्स्ट माइक्रोस्कोप को हमने दूसरा काम माइक्रोस्कोप से होगा, उधर कर लो। 7.5 नहीं हम लाइन देखी रहे सब है ना, कैटलेज सब देखिए, जरूरत पड़े कॉल कर लीजिए। मुझे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। हो गया अब क्या? दारू कारण हाथ कांप रहा था। अब रह गया तो केसवे निकल। अब वो भी कान मत निकल। This is a test actually when you are planning to have लाइए इधर लाइए इंडोस्कोप को आप सामने लाइए, ट्रॉली को, और माइक्रोस्कोप हटा लीजिए प्लीज, पीछे कीजिए। नाउ वी हैव इंडोस्कोपिक व्यू। समीत अब अरे यार, ये तो जैसे होता नहीं है कि आप तैयारी कुछ और करो, हो जाए कुछ और। यहाँ टाइप 1 का था तैयारी यार, आप टाइप कितना बढ़िया केस किया आप। टाइप 3 भी हो रहा है और ऊपर से कोलेस्टोमा भी है। This is what an endoscopist ear surgeon does. Great. Come again, we missed your talk. Yeah, Sanjeev, you are going to show the ventilation pathway? Yes, fine. Yes, please explain. Just give me ball. Yeah. Ball pro, yeah. So if I start from anterior, okay? Yeah. Eustachian tube opening. So this. There's eustachian tube opening. Yes. Beautifully seen. Yes, we can have. Look at the beautiful eustachian tube. Only an endoscope can see this. Yes. This is not fight between endoscope and microscope. Just give me curve section, please. The thing is that how can we take advantage of tool is very important, because we are not a surgeon of endoscope and microscope. We have to use the section, please. Okay. So we can have, yes, go inside, yes, we can have it. So when you talk about ventilation, the ventilation start with this eustachian tube, that is protympanum, okay? And that protympanum, this air will start entering the attic area from taking a big circle here. Yeah. When this diaphragm, this is called the diaphragm, and you can say it we can call it one very important structure, I forget. Give me Caesar, please, because there is a tag here. Separating the EP tympanum, anterior EP tympanum from the mesotympanum. So what is the purpose of removing this healthy mucosa? No, that is not a healthy mucosa. That was a tag that here, and that was the diaphragm. The Palva has given this that 20% is is open and 75% is closed here. That is why this air took a very large circle here, very large circle to go in attic area and the mastoid, because if the malleus is here,
So it will have a anterior isthmus, posterior isthmus. So this last circle will... Sanjeev, keep the mic little closer. Your sound is coming from a distance. Yeah. Yeah. This is okay now? Yeah, much better. Much better. Much better. Okay. So this last circle will start ventilating attic area, and that will go the mastoid with the editus and mastoid. So this is a ventilation pathway. If there is one diaphragm, and this is called what kind of Palva has given, I forget. So this diaphragm is closed. That is why this last circle is taking place during ventilation. This is normal ventilation pathway. And in this case, this is almost healthy mucosa covering all where. So I am not going to disturb anyway. I have harvested the... In endoscopic ear surgery, how you make sure that editus is patent? Yeah. In this case, it's easy because incus is not there. Incus is not there. So it is easy to sew, but suppose in case of where incus is present, how you make sure that? We have to see with the 45 degree. Yes. Once you see the lateral canal, semicircular canal, right. Bony prominence, it means you have unhealthy mucosa. Just one thing is very clear. If anybody, if I ask one question, anybody has seen everything is healthy in middle ear, oscillus is intact, still there is a chance of the cholesteatoma and mastoid tip? Anybody can answer? In the mastoid tip and nothing in the middle ear. Yeah, everything is okay in middle ear. And you It's are highly unlikely. Highly unlikely. Because the pathology starts from the middle ear. Yes. So, and that is the very concept of endoscopic ear surgery, that pathology starts from the middle ear. Yes. So if you are able to see the lateral semicircular canal healthy up to lateral semicircular, how can we expect that there is a cholesteatoma in the mastoid? There is one principle, okay? Yeah. And with this principle, we can't go to see the mastoid tip with endoscope, and we can't see even. So only seeing the lateral semicircular canal, prominence of lateral semicircular canal is enough to prove that there is no cholesteatoma in the... Sanjeev, what is the condition when you combine the post-oral incision and do examination with a microscope along with the endoscopic ear surgery? Yes, boss. I am not getting your question, please. When you combine the post-oral incision and microscope along with the your endoscopic ear surgery. Combined approach. Yeah. Which are the cases where you need a combined approach? Even in this case, if I go following the cholesteatoma going beyond the lateral semicircular canal, and we can't handle with the endoscope, then only the need of microscope and combined approach starts. Exactly. Thank you. Very good. This message should go that one should not be dogmatic about anything, that if I am doing endoscopy, I will not do the microscopic. Many people earlier used to say, in my theater, there is no microscope. That means it is incomplete. Just see the... combined approach. Yes. This is see the boomerang, okay? Right. Are you fine with this boomerang, this beam? Put in PIP mode. It's okay? Put in PIP mode. We can see both the things simultaneously. Yeah, now we are with you. Hello, Sunny boss. Yes, dear. क्या है ये? ठीक है? Yes. Yes, दिख रहा. Now, one suggestion has come that should I put temporalis fascia over the stapes foot plate? A stapes foot plate? Yeah. There is no need in this case. Why? Why to put? Mucosa is intact. Yes. Why to put? Yes, ठीक है. Now we have to reconstruct this portion. Are you putting temporalis fascia regularly in oval window? No, not regularly. Not regularly, boss. Sometimes foot plate gets fractured during manipulation. Okay. How do you manage that? That fracture only is not a problem. When displace is problem, just I am using this opening as a measurement. Can you agree with me?
Measuring what? This defect. Okay. So this is wide open, and this is the measurement of one length, and this was the measurement of second length. So with this amount of cartilage slightly larger, I will go and reconstruct. Okay. Wait. Yeah. पकड़िए थे सब. दूसरा कैमरा दूसरा वाला सिस्टम ऑन कर. PIP, put in PIP mode, dear. Put it in PIP mode. Ah, yeah. Put it in PIP mode. Surgical videos only. There is no need of projecting us. Give me. यही वाला है. देखो सुनो बात बोलते हैं. तुम जितना ले सकते हो ले लो. तो सिस्टम रखिए, जरूरत पड़ेगा कहीं. Now I am going to reconstruct this way. Give me कितना इस पे किसी का बहस नहीं हो सकता है. एक्सटर्नल कैमरा का हम लोग को देखते स्पेशली अंदर वाला कैमरा का दोनों होता है, दोनों होते हैं. रखना चाहते हो क्या? नहीं. all of you are losing your पहले तुम्हारा प्रश्न यहाँ करा ले, यहाँ करा ले, यहाँ करा ले. ठीक है, कोई इशू नहीं. बट ब्रांचेस go to कलकत्ता और दिल्ली at any cost. न गिर जाएगा. रुको. Give me. तुम लोग यहाँ पे मीटिंग करते हो, काम करने वालों की संख्या सब जगह बहुत कम है. रियल काम. रवीर बॉस, कैनाल स्किन बहुत पतला है क्या? क्यों ऐसा कह रहे हो? नहीं मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा फ्लैप एलिवेट? नहीं, not really. Straight. Actually, there's a lot of wax. Okay. So when I remove the wax, some part of the epithelial comes off. So you need to be more careful. After all, raising the flap is... Are you working with a speculum? No, I've made the endoral incision. Endoral incision, okay. Yeah, that works best for me actually. For many years I agree with you. Many years I worked with speculum and the speculum holder. But I think for last 5 to 6 years, probably easiest for me to use so we have एक दो ठो किए फिर हम उसका अबैंडन करके. बहुत डेंजरस है. No, I think it's a matter of habit. Yeah, I totally agree with you on that. I do all my step is endoral. Yeah. No, actually this endoral incision thing, to give credit, was suggested by Samit to me. Oh, thank you, sir. Because my speculum holder, something went wrong with that, and I had a real problem. My assistant had to hold on. Endoral advantages. See, this is what we are doing. This is the endoral. Yeah, so endoral incision. It gives you a hand-free access to the bone here. Not overkill? No, not at all. Not at all. Exactly. नहीं आप speculum से simple speculum डाल के भी आप practice करते हैं तो आप दोनों हाथ use करते हैं.
You can use both your hands. But I find there is more peace of mind with the endoral. Endoral gives you a wider exposure. Yeah, and there is peace of Give mind me, also. And your hands are free. give me medicated gel. Yeah. No, if you are using a speculum, you have to have a speculum holder. Yes. Medicated So, gel Praveen, foam. can you tell us what is the advantage of endoral in this case vis-a-vis your permeatal? Give me. No, there's no advantage as such. As I said, I had a speculum holder, very nice speculum holder set for a very long time, for about 10 to 15 years. And then something went wrong with that, and I had a problem. I had to ask my assistant to hold the speculum for almost the whole of the surgery. Yeah. And then I met Samit, and he quoted someone as saying that there's no point, which stuck to me as being the right attitude, because, it's simple. Obviously, you make an extra incision and you need to close that maybe later. And I think you get your both hands free to work. That is the biggest advantage. Yeah, even with the speculum. Even with the speculum, but here you get a better area, isn't it? Or not so? Yeah, little better, yes. Yeah. Little better in the sense that this part of the bone. Yes. But here also you have to remove the overhang. Yeah, obviously you cannot. I mean, these are just approaches. Yeah. These are how you approach things. The Right. surgery more or less has to remain the same. Remain same, whatever way you go. Yeah. I mean, couple of months back, there was a webinar by Dr. Janki, post-oral, and he asked me to moderate. I said, don't you think it is an overkill? Post-oral approach, then you are coming to, only thing it reduces the dead space, your depth of the working, that's all. I think you have become the Harsha Bhogle. Everybody wants you to. So it's not about Dr. Janki or his approach. I think it's about you then. Very well said, boss. No. कट ले दीजिए एक मिनट पहले इसको देख लें everything is fine or not. But Harsha Bhogle never played cricket, you know that? He never played cricket. He never played cricket, Praveen. It is not so with me. I won't go into the details of that. There are already a lot of critics surrounding you there. There's no need to. No. Nobody is critic. I always appreciate because all are with a good intention, and we mutually respect each other. No, critics are friends. Yeah. As they say, Nindak niyare rakhiye. No, we are all good friends and we are always supplementing to each other. Real good friends, no doubt about it. No, we always supplement each other and that should be the thing we should do. Because otherwise our ENT speciality, yeah. Even this is enough. We can't put cartilage in it because it will give some. Actually, it is much more interesting in the audience for me because I never watch any webinars, never go to any conferences, and more or less I've become a carpenter. It is an honor for us to see you operate. Oh, wow. चलिए लाइक काट ले दीजिए सुनो ऐसा बस आप जो चीज दोस्त के साथ कर सकते हो किसी के साथ नहीं कर सकते I am talking of positive as well as negative, mostly positive. नहीं निकल गया
अगर आउट ऑफ फील्ड हो जाए तो बता देना, क्योंकि मेरा यहाँ जो है और वहाँ जो है दोनों में साथ रहेगा। ठीक है। हाँ? अरे इस ओटी में भी कुछ देखिएगा बॉस। आपका ही देख रहे हैं, आपका ही देख रहे हैं। कैसे देख लिया आप? आर्टिक आप रिकंस्ट्रक्ट कर दिए, हम लोग देखे, फ्लैप रिपोज कर दिए। आर्टिक हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड वेरी नाइसली, वी कैन सी दैट। So endoscopic approach is not less than and not more than microscopic. This is another world, I think. So you can apply your skill and use endoscope for Beautiful. the better. Wonderfully done, Sanjeev boss. Yeah. सब कुछ ठीक रहा? बहुत अच्छा. And wonderful Excellent, demonstration. Thank you very much, boss. Dr. Sanjeev, it is Dr. PK Singh from Chanakya Hotel. Thank you, I must sir. congratulate your all these steps which you have been demonstrating since morning. And on behalf of AOI Ranchi chapter, I congratulate you for this very nice, neat and clean and very beautiful operation which you have shown to us. Thank you once again. Thank you very much. Okay, thank you बस. चलिए आप उधर शिफ्ट कर लीजिए. चलो पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ी तुम्हारी सर्जरी देखने के लिए. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. वैसे आप बुलाओगे तो हमेशा आएंगे हम लोग. वो तो करेंगे. Next case will be done by Dr. Sanjay Shahi. Same patient, the other year, he'll be operating. And now Dr. Sanjay Shahi is a private practitioner at Boring Road, Patna, and also practicing at Kashi Bazaar, Chhapra for the last 8 to 10 years. Oh, sorry, 18 years. Sorry for the mistake. He has a special interest in middle ear surgery. We welcome you, sir, to Ranchi, and handing over the mic to you now. Arun. Welcome, Chandkan sir. यूनिवर्सिटी दीजिए, लाइए. अरुण. ड्राई अब चले, ड्राई. माइक वाला काम कर रहा है कि नहीं? इसमें लगा हुआ है. लगा हुआ है मेरे में. हाँ? तुमको जाना है तो जाओ. हाँ. अब काफी लोग. गाड़ी ड्राइवर है, भेज देना उसको. लगा हुआ है. और तुमने मछली नहीं खाई? बंटी. विटामिन है. बोलो ना देगा स्टार्ट. हाँ? हाँ, फिर आ जाना 1 बजे. वो लोग सब लोग आए. जरा स्टिच कर दीजिए ना, लाइए. वेलकम बॉस. थैंक यू. लाइए 30. ये तो है. छोटा सा नहीं था, क्या हुआ? छोटा सा है ना. लाइए. लाइए. वीर बॉस. Good evening, everybody. Yes, sir. Have you removed the overhang adequately? Yeah, I'm still at it. लाइट दीजिए ऊपर वाला. I'm still at it. It's a reasonable overhang. यहाँ प्लेट दो. यहाँ प्लेट दो. यहाँ दो. ले एक प्लेट ले. शाही सर. Yes, Samir. रेडी हैं? Good afternoon, everybody. थोड़ा माइक आपका आवाज कम आ रहा है. माइक क्लोज करिए आपके पास. माइक लेगा, मेरा वाला माइक लेंगे. हाँ. मेरा वाला लेंगे, जस्ट हम दे रहे हैं. वो पेशेंट का क्या है दूसरा कान में फाइंडिंग? वो तो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसका भी एक कोलेस्टोमा होगा कोई. शाही सर, आप व्हाट अप्रोच विल यू टेक फॉर दैट पेशेंट? I am going for post-oral route. Post-oral. Okay, great. Microscopy. Okay. Okay, sir. Post-oral microscope. And the graft has been already harvested. So Okay. I will not harvest the graft. Okay, sir. And
and we'll use the graft which has been harvested in left ear. Samit, Samit, this is called one stage sequential bilateral tympanoplasty. Yes. And this is a very good to say that only in Bihar, probably Bihar and Jharkhand, we are doing this approach since 15 to 20 years. Yes, a lot of people are doing both ear tympanoplasties, both ear mastoid. But oldest place for the bilateral is Bihar only. इन गाड़ी भेज देना बिटाडीन दो ना यार बिटाडीन इसमें इंजेक्ट करो थोड़ा सा सिरिंज ला हाँ थोड़ा सा दो और इसमें जब है ना इसमें नियोस्पोरिन का पैक देके टाइट कर बांध दीजिए अभी पट्टी कर दीजिए और तब फिर दोबारा करिए पट्टी 2 बार पट्टी करिए क्योंकि अभी पट्टी कर देने से क्या होगा कि आप कुछ भी मुड़ी उड़ी हिलाइएगा टेम्पररी कुछ भी कर सकते हैं हाँ हम हैं प्रवीण बस थोड़ा सा मिडिल सेंट्रलाइज कर दिए थोड़ा सा उसको I can say one thing very important that a microscope is for surgeon in respect to the visualization. Yes, and endoscope is for both. Surgeon and the audience. Both. It's a good teaching tool. No, we are getting good picture from microscope also now. Okay, this is good now. Oh, yes. इसको करके तब हम लोग पलटेंगे अरे मेरे तो दीवानगी न है इंडोस्कोप की तो हम तो फेवर करेंगे इंडोस्कोप A strong proponent of endoscope in central part of India. That's why we have to just popularize this endoscopic approach also. It's already popular, Sanjeev. Now it is also included in the curriculum of masters. Yeah. So it is already popularized and it's very easy to start with, That's why people are more and more going towards that. Find वाला microscope दे दो और कैमरा सेट कर देना उसी पे. उसको सीधा कीजिए ना सीधा कीजिए. I think basically why I shifted. And this eye is going on the second side. And Satyendra Samabab will do surgery after Parveen. सत्येंद्र उसको करने दो ना सत्येंद्र उसको करने दो अरे तुम तो हमसे ज्यादा जानते हो कौन ले लिया किस पे हाँ जायज वाला पे काम करो अब तो साहिब ही तो कर रहा ना हाँ ठीक साहिब कौन सी कहता है अच्छा बहुत के बाद जब लिमिटेड वाला आने शुरू हो गया है फिर हम लोग ले लेंगे हाँ जी प्रणाम सत्येंद्र उसका नहीं इनके बाद हम रांची में ये वर्कशॉप में नहीं लिमिटेड काम ही करना है लेकिन लिमिटेड में अनलिमिटेड आ जाता है sometimes you think that is a very small cholesterol it turned out to be right up to the tip of the हेलो माइक्रोपोर इस पर साट दीजिए देखो टिम्पैनोप्लास्टी में एक ही चीज जानो there is only one hospital that is important that is established rest has got almost imperceptible contribution keep it in mind then you can lead a good pathological life
जहाँ जब सब जगह सोचो कि साला इनका से बचा ले, मेले से बचा ले, ये भी कर ले। बस ऑपरेशन के बाद तुरंत बोल दो, कुछ सुनाई में देखो थोड़ा सा कमी रहेगा, इमीडिएटली टेल द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। हाँ यार खिलाओ ना, यही सब खा के तो जिंदा रहे। क्रिस्पी है। पनीर चिली है? नहीं पनीर चिली नहीं है, साला पनीर बहुत नकली मिलता है। नकली नकली है। इसको क्या पता है भाई? एड्रेनालिन जो मिला हुआ था उससे अच्छा साला मीट खाओ, मछली खाओ, पता तो है क्या। ना हम इससे ज्यादा नहीं खाते। कौवे के दूध से बना हुआ है। अश्विनी बॉस उसका तुम पहले वाला फोटो देखे थे ना? हाँ हेलो, हाँ प्रवीण। खाने की बात मत कीजिए, खाना खाना है तो खाइए, यहाँ टीम को भूख लग रही है। थोड़ी आवाज थोड़ी कम आ रही है यार तुम्हारी। प्रवीण थोड़ा क्लोज टू माइक बोलिए ना। माइक एडजस्ट द माइक प्लीज। कह रहे हैं कि खाना खाना है तो खाइए, खाने की बात मत कीजिए, टीम को भूख लग रही है यहाँ भी। प्रवीण थोड़ा सा माइक पास में करवाइए ना। हाँ किया तो हाँ, now it's clear. या नाउ इट बढ़िया है। ऑटोस्क्लेरोसिस जो दिख रहा है। पानी मेरा थोड़ा सा बस देख रहे हैं ना। थोड़ा सा कीजिए ना। What is the status of fixation, Praveen, in this case? I have not checked so far, although that should be the first thing. But can you hear me now? Yeah. Yeah. थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ यार यहाँ पे। हेलो, थोड़ा सा आवाज अंदर का बढ़ाओ सॉन्ग। थोड़ा सा कॉटन दीजिए। थोड़ा सा स्प्रिट दीजिए, स्प्रिट। रात में खबर भी नहीं है। 13 तारीख से बाहर है। इधर कैमरा है, इधर लगा है कैमरा। हेलो शुक्ल लाइफ या कर्व पिक दे दो। साला पनीर क्यों डाल? अभी हिटने को वाला घोटे। नहीं, बात ही नहीं सुनाई पड़ रही है लोगों को। कन्वीनियंस में बहुत प्रॉब्लम है। कन्वीनियंस लॉजिस्टिक बहुत। हाँ प्रवीर, any progress? Right, so we can see the. Just a moment. So we can see the structures here. Yes, we can see. I think the whole of the step is fixed. Yeah. So it's like a tympanosclerotic. It's not tympanosclerotic, Yes, maybe. appears like tympanic process. Yeah, but you can see white bone there as well. Yes. And so I think because there's no history of discharge, maybe I didn't take the history myself, but there's no history of discharge probably, and we would still go with the otosclerosis diagnosis, but it's Actually, quite it is widely complete fixation. If you see, there is a otosclerotic foci there. in between the both the arches. This is completely fixed, I think. Yeah. But you are always in a better condition to appreciate the things. Yeah, the color. So when you move it, Actually, this is the real case for endoscopic staphylectomy. yeah, as I said, the only problem. Master of endoscopic staphylectomy is there.
No, दूसरा स्टेप ही नहीं है. So you can see that the incus is moving. बटन इसमें रख डाल दीजिए. Yes. But the steps is not moving. Yes. Incus is moving. Yes. ये अपना एक्सटेरियर है सर. Right. The chorda is obstructing the view for the tendon. But it's always nice to keep the chorda intact. If you have to cut it sharp. That's what they say. Right. Measuring stick दो तो. Okay. So I'm putting my measuring stick in. हाँ प्रवीण. Yes. I put my measuring stick in. Yes. And this is like the middle one is. I'll have to see what the middle one means basically. Probably 4 mm height. Will you like to drill the steppage foot plate area first, then take the measurement in this case? No, what I do is I usually add 0.5 mm. So Because foot plate is totally obliterated in this case. Yeah. Yes. And you cannot judge what is the depth of the real foot plate last part. I'm hoping not to drill a hole this wide. You have to drill completely, I think. No, that's fine. Drill the foot plate away or a wide hole is what you mean? Are you just perforating with the drill or a skater or whatever it may be? You know? I'm using a skater. Just making a hole in the otosclerose area. Yeah. Like a well. Yeah. Betadine बाद में sprit. Only a small fenestra. Okay. Yeah. कहाँ गया वो? Jig, cutting jig. सॉल्यूशन नहीं चाहिए. ये कितना होता है? हमको नहीं पता. तो ये लोग कैसे बनाता इतना अच्छा बनता है? हम लोग बनाने से अच्छा नहीं करता. नहीं 3 है ना. नहीं यार. तीनों क्या है वो देखो. 3 है बॉस. एक कटिंग है. नहीं वो नहीं बोल रहे. हाँ. हम बोल रहे हैं कि स्कीटर में 3 अटैचमेंट है. वो हम जानते हैं. हाँ. हम ब्लू एंड व्हाइट यूज करने चक्कर में हैं. हाँ अपने व्हाइट और हाँ ब्लू. That is 0.6 mm. ठीक है. But usually I'll have a piston 0.4 mm diameter. So I put a 0.6 mm fenestra and a 0.4 mm piston. But यहाँ पे we have 0.5 mm diameter shaft. 0.5 है. So I don't know if we need to drill wider than that. So we'll just see. Okay, boss. So this is what is this? 4. So my measured length from the top of the foot plate to the incus, long process, was 4 mm. But उसको moderate severe conductive loss. So I'll probably cut a 4.5 mm. Tympanosclerosis ही लगा. हाय कैसे? थर्मी वगैरह हैंड कंट्रोल है. बहुत बढ़िया सर्जरी. थर्मी हैंड कंट्रोल है. हम देख नहीं पाए, पूरा इधर घुस गए, बट रिकंस्ट्रक्शन नहीं देख पाए. अब हमको जरूरत नहीं. हमको तुम शाही सर. यस समीर. आपका अब क्या कर रहे हैं अभी? ये तो क्रोरेक्टमी है. ये वाला यूज करेंगे. अच्छा अभी इंसिजन नहीं लिए. No, I am waiting for BP to come down. Okay. हमको दिक्कत होता है इसमें. हाँ वो. मैं आप hero of the day, the man of the day का फोटो ले रहे थे. हाँ ये तो हम तो बाहर. Man of the event. नहीं ठीक.
ठीक जगह पे। क्या बोले? आपको अपना लेडीज वाला केस क्या आप पिस्टन कहाँ है? नहीं होस्ट नहीं ले बताया क्या रहेगा टिकट वेस्ट का पुल को तुम्हारे पास ड्रिल है जो यहाँ पहुँचेगा? ड्रिल है जो यहाँ पहुँचेगा? क्योंकि ये स्कीटर हमको लग रहा है कि थोड़ा छोटा है साइज में, पिस्टन बड़ा है। नहीं बिहार वाले को मिलेगा जो कमी। अच्छा चलो पुलिस डायग्नोसिस का उसको लगी प्रेशर रिलीज कर देंगे बढ़ाते हैं। मिडलाइन लगा के वो लाइट बढ़ाना पड़ेगा। लाइट कहाँ से बढ़ेगा? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी छोड़ के किसको मिल सकता है? ऐसा नहीं है कि पटना से लोग आए करते बोल पूरा चांस नहीं है। पूरा चांस तभी बनेगा जब कोई बाइक को वापस शाम को खाना खा के। फोकस हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? You're doing stipidotomy first, and not removing superstructure. Yes, I'm going that way because there's a lot of space there. I am yet to सबसे पतला वाला सेक्शन यही है। नहीं हम ये भी वो कोई भी रहा नौकरी में तो हुआ नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट जो तुम अपना माइक पकड़ पिछला केसवा जी से निकल जाएगा तो फिर पिछला केसवा जी से निकल जाएगा। Are you using the skeeter to drill? I am using the skeeter to drill. Yes. एगो बैठने का दीजिए। हाँ देखो ना एगो बैठने का दीजिए तो। सेक्शन क्या कर रहा था? क्या अगले दिन डिस्चार्ज कर? ऊपर रखना, छूने मत देना है तो उसमें। असेंबली डिस्चार्ज, सुबह ऑपरेटर, रात को डिस्चार्ज। अच्छा इसका ये भी है, ट्रिफाइन है वाइट करने के लिए, बर जैसा चीज जो ऐसे ऐसे हाथ से करते। बॉल पॉइंट नहीं, स्टेपीज वाला सेट में होगा सुमन। स्ट्रेट ट्रिफाइन देखते हैं। What I'm worried about is that I might make a small hole because of the ये नहीं जाएगा। पैसा वसूल करना तो करोगे। गाड़ी खेलते बने तो चलेगा। चलाएंगे अच्छा देखते हैं। लगा देता गाड़ी से। बांधवगढ़ फॉरेस्ट गए थे सर, विशाल पटेल का वहाँ देखे गेस्ट हाउस, वही ठहरे थे क्या जंगल के बीच में जो गाँव। ठीक है चलो ना। विशाल पटेल पोलियो अरमानी है, जॉन्टियो नहीं है, पोलियो वाला है। चलो देख ऊपर वाला लाइट नहीं इस तरह 11 नंबर प्लेट ही चाहिए। Is it a thick foci otosclerotic? I think it's all over. Yes. अभी तक नहीं गया। आप प्रॉपर एचओडी नहीं हो सकते।
नहीं आप प्रोफेसर क्या दादा रियल दादा झारखंड has arrived. किसकी औकात कम करा देगा यार. हाँ प्रवीर. Yeah. Now you are perforating with 0.5 or 0.6? That's 0.6. 0.6. 0.5 is the shaft of the piston. I would have liked a thinner shaft, but we don't have that here. Usually what I would do is put a 0.6 hole and 0.4 piston. हमको हाथ में यहाँ करने दीजिए, हाथ की छोड़िए, गला छोड़िए. सबको परमिशन मिल गया. हजारीबाग को क्या रविंदर क्या नहीं मोटा काटेगा. ये तो पहले से थोड़ा सा और बढ़ गया. चल रहा है, सब चलता है उसे. नहीं हो सकता. बनेगा दम का हो सकता. करना तो पड़ेगा ना. तो तुम्हारे सामने ना तुमसे ज्यादा मोटा थे, तुमसे पतले. बोला है ना सब कहेंगे बकवास. नहीं वैसे भी जमीन उमीन में इतना रिलैक्स कर दिया किसका जवाब. नहीं अब तो इससे भी जमीन को रिलैक्सेशन कर दिया है. यूनिटरी प्लॉट के मतलब 2 प्लॉट में आप कर रहे हो. साहिब, डॉक्टर साहिब. Yes, sir. हाँ, where are you? I have given post-auricular incision to give me a totomy. Then I will loosen the margin, and thereafter I. VIP मोड में जरा पिक्चर डालो भाई, दूसरा ओटी से. हाँ एकदम वैसे ही लग रहा है. खोजने मत लगना. देखो यार मुद्दा ऐसा है कि इतनी बातें जो बोलता है वो भी जानता है, लेकिन पब्लिक में तो बोलना है. जैसे कोई भी हम 2003 से हम डील कर रहे हैं. उसको ले लो, साफ करो उसको. नया नहीं था पूरे. ये साइड बेटा ना खुल गया. ट्रीटमेंट तो गूगल से. लेकिन सर कभी बात तो चैट करते हैं. There was no foolproof treatment for that. So that's my fenestrum. Yes, that is very good. Very nice, nicely appearing hole. Maybe just a little bit of. कान को खींच के रखिए. आगे की तरफ. अभी आ ही रहे हो क्या करना? पिस्टन ले लो. पिस्टन ले लो सिस्टम. हाँ ठीक है, चलो. चश्मा मेरा भाई. माइक्रोफोर्सेप्स आ गया पिस्टन. माइक्रोफोर्सेप्स के सीजर्स. उसके सामने, बिजनेसमैन के सामने तुम्हारी फाइनेंशियल औकात क्या है जो बता दो. इतना मत चलो. और ये है ना दिख रहा है कुछ. हाँ 4.5 कहाँ तो सब मिट गया. इसमें देखना पड़ेगा.
think this probably 4.5 देखते हैं एक बार वो क्वेश्चन पढ़ तक वही वही यही पढ़ो इसमें भी नहीं नजर आ रहा नीचे रखो हाँ गेट इन नेक्स्ट सर्जन पियानो पियानो वहाँ करेंगे यहाँ पे सर नीट गया है इसमें this is 4 right so this is 4.25 हाँ मारियो सुना तो मारियो आई हैव कार्टिलेज बैंक विद विजेंद्र जतिन शाह नाम नहीं शाही सर यस सर आप माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं नहीं अभी हमने तो फोकस एडजस्ट करना होगा बस हम फोकस नहीं आ रहा है ठीक उसके बाद हम माइक्रोस्कोप अरुण अरुण सेल्फ रिटर्निंग मस्टार्ड डिटेक्टर दीजिए मैं तो वहाँ काम करता हूँ हाँ सर दुकान प्रधान बहुत सीरियस आपको जानते ही बहुत सीरियस सर्जन है बहुत सीरियस आदमी है कितना उम्र है उनकी का सर्जरी देखोगे ना टोटली mesmerized सर्जिकल का स्किल है ना और आप ये जान लीजिए जो नहीं हाँ 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 बताओ क्या So you made the fenestra, Pravir boss? Yes, I have. I've cut the piston at 4.5. Okay. And you've removed the superstructure also? No, no. Not yet. I'll put the piston in. You're not removing the superstructure? That fish, no, I'll remove it later. Okay. After putting the piston? After putting the piston, yes. Right. Because I think what they call probably the fish approach or something. Dr. Munka sir is asking, is it necessary to remove the superstructure or can we leave the superstructure inside? No, we cannot leave the superstructure inside. Yes, because you need an assembly. That and the fact that superstructure is very close to. What is the status of incus? Incus is moving. पीछे हटे नहीं होगा तो दूसरा ले कल का है हम ही को बोल रहे हैं चुतिया का हाल है जा रहे हैं ये हाँ फॉसेप्स का प्रॉब्ली चक्कर नहीं है वैसे you guys are being helpful हर बार Shahi sir? यस समीर डाल देते हैं अभी है ना Sir, can you focus, Shahi sir, can you focus a little better? And better. And can you orient us now?
कैमरा, हाँ, यस, अब ठीक है। Yeah, better, right. और सेंट्रलाइज कीजिए। यस। इसमें भी कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोसेस दे रहे थे तुम? स्टेट वाला क्या करने क्या जा रहे हैं इसके बारे में? देखिए सर क्या है, सिग्नल प्लास्टिक करने जा रहे हैं। मेन है कि उसके चलते संजय, उसके चलते दिक्कत हो रहा है। Shai sir, what is your finding microscopic? I am just setting my microscope. Self-retaining mustard detector is not present, so I have थ्रेड लगा हुआ है इसमें। used this gauge tube. अरे होगा एक्वायर्ड है, एक चीज में उसको संजीव के साथ है, संजीव के साथ तो वही था। हेलो AV people, can you show the other OT also endoscopic camera on PIP? दिक्कत करेगा संजय। So you're putting the piston, Praveer boss? Yes, I'm trying to, yes. इधर से लेकर संजय। पीछे होगा ना, अच्छा गुगली अब तो ठीक लग रहा है, पीछे हो सकता है, आगे तुमको हमको चंद्रानी को कोई नहीं पूछ रहा। मुनका आया सेफाली, पीके सिंह आया सेफाली, हम नहीं पूछे। नो नो नो, ये आपका पीके सिंह एक बार आई हैवंट क्या बात करते हो? क्या पूछे? Praveer boss, will you also be using some kind of vein graft? No, I'm not using. No. Actually, I used the vein graft for many years again, and then it was actually giving rise to more inflammatory reactions for me. पिछली बार सेंट्रल बॉडी खाली लेना चाहता है, खाली लेना। सर ये आइए अनुराग जी बैठिए। सर ये लग रहा है कोलेस्ट्रोमा है शाही सर वाला। हमको अनुराग कर दिए, चला गया अभी। नहीं वो छोटा डिल पे ना नहीं, कोडा से हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा। कोडा से प्रॉब्लम नहीं रहा। बात है ना कि इतना टाइट है, 0.5 का डाल रहे हैं, फिट हो जा रहा है, विच इज नॉट गुड। बाद में हियरिंग रिजल्ट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसा बोल दिया मैं। क्या दिए हो हमको? क्या दिने? हम क्रिम्प नहीं करेंगे अभी। फोकस ऑन माय तुम हमको सीजर्स दो यार, एक मेरे को भी खर्चा पड़ा ये। यार ये सब में वो है कट हो गया। ये वाला शाही सर का है ना सर, नीचे जो है। हाँ हेलो या हर्ष अरे सर हाँ ये देखिए एक्चुअली ये रियल स्टडी होगा जी सर, क्योंकि एक कान में तो इंडोस्कोपिक हुआ है, दूसरे कान में माइक्रोस्कोपिक होगा। जी 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 सर। रिजल्ट कुड बी द सेम, मे बी सेम, बट द लेवल ऑफ कंफर्ट पोस्ट ऑपरेटिव, इस कान से पूरा भारी लग रहा है, पूरा चिरा लगा है, इस कान में कुछ नहीं हुआ, ऐसा लोग बोलेगा।
that could be the best way to compare. to Yes, say we that can have a comparative endoscopic is study, sir. most comfortable at the level of patient. Okay. Yes, sir. We can have a comparative study in this case. Same case, same patient. Shahi, sir, what are your intraoperative findings, sir? Right angle hook रहता है ना. Does it look like cholesteatoma also, sir? Just I will elevate the posterior. But since it is going to be a large perforation, so it might be there will be no skills. So can you comment about the status of our skills, boss? Just I have not seen any ossicle right now. Yeah. After elevating the posterior flap. You will. Shahi, sir, you're not audible, sir. Can you be a bit louder, please, sir? आवाज नहीं आ रही। Just साई boss connect हो रहा है। Shahi, sir, can you be a bit louder, please, sir? Yes, I have just freshened the anterior 1 o'clock to now I am going behind. Yes, sir. Now I have freshened the margin of perforation 360. तो पास क्रूरा कटर है। Yes, sir. ऐसा नहीं ऐसा scissors, क्रूरोटमी scissors इस तरह का। Sir, what about the ossicles? Shahi, sir? Ossicles are not visible till now. Okay, sir. स्कीटर दो। एक बार फ्लश कर। स्कीटर जो तुम लिए थे वही जो ब्लैक वाला है ना क्रूरोटमी सेक्शन नहीं चल रहा है और उसका सेक्शन ब्लॉक है क्या? दूसरा भी सिस्टर Sanjeev sir, what was the loss in both the ears, sir? Please have a audiogram patient का फाइल दीजिए please. सर लॉस के क्या था, दोनों का ईयर का लॉस क्या था सर? हाँ अभी देख रहे हैं, ऑडियोग्राम देख रहे हैं। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस है and mild to moderate in right ear and left ear was approx mild to moderately severe है. It was more than 60 and approx 60. So I just shown that incus was not there, stapes suprastructure was not there, so is supposed to be a good 60 decibel loss, and that was. Okay, sir. Okay, and this case is 40 decibel loss, so probably there will be some skills. Okay. Yes, sir. फ्लैग वर्ल्ड नाइट एंजॉय करो। कोई नहीं बोला अंदर में हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। तो एक ही बात है, समझ में दूसरा हो ही नहीं सकता। नहीं कोई नहीं, जो प्रोलास्टिन वाला Sir, so the ear that is being operated has moderate loss. Yeah. The ear which is being operated by microscope has moderate loss. अरे यार तो अगर तुमको कोई सहायक भी मिलेगा ना तो सहायक है ना जॉन पिक दो वैसे भी एक चीज आजकल इतना लगा लीजिए, लाउडस्पीकर पर लगा लीजिए। इसलिए रिलेटिवली कौन बड़ा नहीं देखिए आपको इसका हेलो am I audible? Sir, you are audible, sir. Okay. Now I am going and elevating the posterior flap. माइग्रेट करके ना वो कर जाता है, एकदम आपको कैसे बताया
इसमें बहुत इस तरह का ओपन केस हो ड्रेसिंग इतना ब्लैक फंगस राम जी ने जी किए सबका रिवीजन सर उसके जो पेजा सर पेन से दस्तखत करेंगे 1 लाख का पेन है भाई चेहरा पहचान तुम एमआर का व्हाट्सएप में दिया हुआ है कहीं खींचेंगे ए सर उनका अगर आपको फोटो खींचा है तो बोलिए डिलीट करेगा आपको बोला कि हमारे रिलेटिव ये एमआर लोग का फोटो नहीं ना भाई उसका व्हाट्सएप में है हेलो सिस्टर अब सिकल दीजिए सिस्टर सिकल हेलो यो में भी ना हम 1 लाख रुपए से 10 हेलो ऑडिटोरियम प्लीज मी विद ये साई बॉस जो है बोलिए बॉस क्या कर रहे हैं? Yes. Just I have reached the corda. Yes, sir. And I am now going to open the middle ear. Okay, sir. There is need to remove the overhang to see the entire skull. Just I am elevating the flap. And now I will check the ossicle. Okay. Flag, sister, flag. Shahi sir, was there retraction also, sir? Sir, did you see any retraction pocket also? No. Perforation was subtotal. Okay, sir. I cannot visualize the retraction. Okay, sir. अरे वो रिंगवा में जो लगा हुआ है यही नहीं है देखो पूरा पकड़ गया कलम का सर दवाई का वाला नहीं इनको डायमंड लगा के अलग से दिया था जब कुर्सी पर थे तब जब रिटायर हुए तो निकाल के अंगूठी में लगा माइक्रोफोन अभी तो सर अभी भी सबसे अच्छा पकड़ रहा हूँ Sir, can you orient us? Shahi sir, can you please orient us? तो उस पे क्या लेना देना पेंशन कितना Handle of malleus is now visible. Okay, sir. Flag, sir, flag और सिकल यहीं पर रख दीजिए। नहीं मिलेगा स्टेट को कौन कहता पीएसयू में जाने संजीव you went by twice So it seems a large perforation and there is no retraction, so it's going to be type 1 tympanoplasty. Yes, sir. After seeing the oscles again, corda is intact. Yes, sir. We can see that, sir. To tilt the microscope to see the oscles, but particularly incus and incaudosternal joint. Good afternoon, Pravi sir. This is Harsh. Yeah, hi. Sir, I think it's not visible. Something is occluding the view, sir. We can't see anything. It's all hazy, sir. Just one moment. हाँ सिकिल्स है उसका दिख रहा है हाँ दिख रहा है लाइए क्यूरेट लाइए नहीं कटेगा Pravi sir, kindly orient us, sir. Yeah, just a moment. Actually, I had to remove a large portion of the foot plate. Yes, sir. Because unlike an otoscopic, sir, सामने फर्स्ट फ्लोर now you can see the intactness of
ossicular chains. It was all fixed. Hello, Satinder Bose, Rakesh Nain and Ashwini Verma. Yes, sir, we are listening, sir. Sir. So. Yes, sir, he's here, sir. Yes, I am here. Ossicular chain is intact. Okay. What about the mobility? Mobility is very good, sir. You can see, I am just pushing incus and malleus is moving already. Okay. So now I am going to do this case type 1 T plasty. Okay. Very much mobile. Mobility is very nice. Yes, sir. अब राइट एंगल वाला दीजिए सिस्टर. अगर पिछला ऑपरेशन साही बॉस करते. Would you like to explore little bit of attic, Sahi? Yes, Praveen, you are done with. Almost. There is no need to more exposure, sir, because I have checked the mobility of ossicles and there is no disease. Okay? Okay. Plus कीजिए सिस्टर. He is in better situation to assess. आगे वाला ऐड कर देते हैं पहले. No CT has been done. Is there any CT scan of this patient, Sahi? वही वाला है. हाँ? No CT scan. No CT scan. At this stage, would you like to see endoscopic view? Like to see endoscopic? View round window reflex. Why not? Why not? Just wait. So you are there in the OT right now. You're in the OT. Yeah. I'm in OT. I will show you the round window reflex in this case. ईयर कैनाल अगर अच्छा है तो हो जाएगा अच्छा. क्या सर? But if narrow ear canal. So you are lifting the anterior skin. Yes, sir. With Yes, sir. annulus or without annulus? Just to put the graft on bone. I am elevating the flap. हाँ, एक मिनट हम खाली उठा देते हैं फ्लैप को. 1 मिनट लगेगा. थोड़ा सक्शन कम कीजिए. हाँ वो पूरा ही खुल गया ना. पूरा निकल गया. नहीं वो काम करता है वो आपको. अरे हमारे यहाँ जो है अगर नहीं काम करे वो काम करना है तो बनाइए. वो महीना रह जाएगा ना मेरे यहाँ. दिखा रहे थे तुमको साइज. Now I have elevated everywhere. And just I am going to put very good Sahi. ये साही सर का दूसरे ऑपरेशन है वर्कशॉप है. ओनली सेकंड है. अब क्या दिखाओगे बस संजीव? दिखाओ. फ्लैप उठाए. क्या ले लिया हम? एंडोस्कोप से दिखाओ. हम ग्राफ डाल देंगे. What is the endoscopic view, Sahi? Yes. नहीं ठीक है हो गया. Yes, good. Just Sanjeev is going to display in endoscope, and thereafter I will put the graft. We have been better with microscope. We are not getting good picture of the endoscope. But I am trying to just go through endoscope also. What is situation, Praveen? Actually, you are almost. Yeah, I'm almost done. The foot plate, a large hole was made.
Right? Can you see that? Maybe I can move around. Full light. Full light. एक लाख और पूरा 12.5 रुपया हमको है सर्दी खांसी बुखार निमोनिया 5 बीमारी कितना है शाही सर संजीव सर और मैं एकदम मूव कर रहा हूं ठीक है सर थोड़ा प्लस कीजिए सिस्टर Yes. Right? A large hole was made because Restoma नहीं लग रहा है. and the piston is now crimped. Piston is now Crimped. It's crimped now. piston is now bent little. Sorry? Did you say something? No. ठीक है संजीव ठीक है ना So everything is in place. Yes. Okay. सिस्टर ग्राफ दीजिए काट लें Maybe we can see the So round. now we are going to close. हमको खाली अंदर में डाई चाहिए जेल फोम ठीक Okay. Very good demonstration, Pravir. Very good. Very nice. And very elegantly this demonstrated. I was lost myself for a while though. If you can see the round window reflects. Right, so good. Suction. Now I am going to put the graft Yes, sir. चलिए Honored to be by the side of Sanjeev, sir, what were the finding endoscopic, sir? Hello. Mic sir. थोड़ा सा एक बार फ्लश कीजिए ना सिस्टर Privileged to welcome Professor Dr. Raghav Saran, and he don't need any introduction. Welcome, sir. Welcome, sir. For your blessings. Yeah. Visualization करिए. Corpic. हाँ. चलिए सिकल दीजिए सिस्टर क्रिकेट नहीं खेला है इसलिए बोल रहे हो Also it's correct. क्या इस OT को लीजिए विजन में प्लीज. OT2 को लीजिए. सर ये आप ग्राफ प्लेस कर रहे हैं ना शाही सर? यस यस There is some secretion coming from the attic. Attic हाँ लग रहा है सर कुछ. Is there any secretion coming from the attic, Sahi? No sir, I have just flushed the cavity before putting the graft to remove the artifacts. क्या समीर? इंडियन के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल चाहिए नहीं खाली बासी वगैरह तो इस सब में हाई होगा मैं सोच रहा था कि इसमें थोड़ा और ब्लड रहता तो अच्छा रहता. नीचे वाला में हिल रहा है कुछ नहीं ना ये तो ऊपर वाला. There is a window reflex. Okay, I'm still wondering. I'm asking the nurse, is there a movement?
I think your piston is a little bit short, dear. Okay. No, your piston is short there. Because your piston is moving a lot. Your piston is short, no doubt. रुक जाइए सिस्टर, इसको पहले ऊपर कर लें. You take I put second piston, new piston. It is certainly short. ड्राई दीजिए सिस्टर, ड्राई. Well, I don't know. Because it is going right up to the interior part of the oval window, still it is not getting fixed. No, that's because most of the footplate is gone. But it is certainly short here. You should, you check, you get the new measurement and replace the piston with the new one. Okay, we can do that. See the length of the piston now. Yes. Interiorly तो अपने आप हो I don't जाएगा, think देखो it's ना. short. It is also little bit bent. चिपका हुआ नहीं है सिस्टर, एकदम फूला हुआ है. चिपका हुआ दीजिए ना, जो कि जाकर गीला नहीं. एक new measurement might just a small advice. दबा हुआ वाला. Will you like to put some graft there in the wall window? Sister. Prabir? Graft, maybe some fat, I don't know. We can do that. Maybe some gel foam. Dr. Praveen, Yeah. can you hear me? Yes, I can. Do you use vein graft or anything? I used to do vein graft, but not anymore. Because it causes a lot of fibrosis or what? Yeah, because the more tissues you use. Right. So now you just put a small piece of gel foam. I can do, in this case, I'll do that because I've moved. It's not a small fenestra operation anymore. Okay. No, routinely you don't put even gel foam? No, I don't. Not in the middle. ग्राफ्ट उठ जाएगा. एक प्लेट में लेके आओ ना, प्लेट लेके आओ. I think it's all right. I think the length is all right. Okay. हाँ, वो हम लोग का वही देते हैं ना. Okay. वो जाकर के फूल जाता है. So, are you going to put some graft there? How are you going to close that बस इसको यहाँ पर डाल. wall window? Some graft means then. You can use the simple facial graft there. Yeah, I can use it. There is no need to go for vein graft actually. Vein graft now it will be too cumbersome anyway. नहीं. फेशियल लेना है तो यहीं से लेना होगा. एक ठो और दे दीजिए सिस्टर, बस लास्ट है. Like it. ना फूल जाएगा, देखो ना. अभी हो जाएगा, देखो ना. पीछे वाला थोड़ा सा एथी रहता है ना, पीछे में जो है ना थोड़ा सा डेड स्पेस टाइप का रहता है. नहीं संजीव, तुम ही से सीखे. नहीं, तुम झिझकवा तुम ही ना दूर किए. क्या जबरदस्त डेमो है बॉस, मजा आ गया. ब्लडलेस सर्जरी इसको बोलते हैं. सिस्टर, सिस्टर जरा हमको सर्कुलर एगो दीजिए तो छोटा वाला. Faucet the plane. संजीव, अब आगे may not be the etiology of that. There are different etiology for that. Simple manipulation. Simple manipulation.
हाँ हो सकता है If you are 100% sure that you have not injured the facial nerve, it is not pathogenic. संजीव, आगे से ग्राफ थोड़ा गिरा हुआ था। जी सर। हाँ साही, यस बताओ। बहुत अच्छा कर दिया। वेरी गुड साही। गर्दा उठा दिए साई बॉस। ठीक है। गर्दा कर दिए साई को नहीं। ठीक है। राकेश बॉस कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं साई बॉस के डेमोन्स्ट्रेशन पे। नहीं, he is doing very nicely. He has done very fine surgery. Yeah. राकेश बॉस। चलिए सिस्टर। राकेश एंड बॉस। जलफम दीजिए भिंगा के। अरे कहाँ है बॉस, सर्जरी देखिए ना साई बॉस का, सीखने लायक है। अरे बहुत सीखे संजीव। हाँ। साई बॉस। एक्सीलेंट संजय। यस थैंक यू डॉक्टर साही, एक्सीलेंट। थैंक यू मुनका सर। या ये सब ऐसा टैलेंट था जो कम दिखता है, आज पहली बार दिखा है। Your surgery, your meticulous work is very appreciated by all of us. Yes, no doubt. Congratulations for your neat and clean work, and hope that it will be continued for other places also. And you are registered now for all the functions and all the workshops. Thank you sir, thank you sir. And wish you a bright future. And Sai was dedicate all this appreciation to his guru, प्रोफेसर आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको आशीर्वाद दिलवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि सर आप तो मेरे गुरु जब हम डॉक्टर नहीं बने थे तब से हैं। अच्छा डॉक्टर पीके सिन्हा जो है, डॉक्टर पीके सिन्हा इज माय गुरु व्हेन आई वाज नॉट एंटर्ड इन एमबीबीएस। ये जो है ना, ये यहाँ जाएगा। हाँ, ओवल विंडो को कवर करेगा। हम तो कभी डालते नहीं है, अगर मैंने पहले डालते थे लगातार, अब नहीं डालते हैं। कोई भी चीज डालना उधर दिख रहा है उससे। वो ठीक कर रहा है ना। दीजिए सिस्टर। टेम्पल फांसा डाल रहा है। कोई भी चीज डालने से उसमें सर आपके चेहरा है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज्यादा होता है। डेडिकेट भी कर दिया आज तब जो लोग एनग्राफ्ट शुरू किया था वो लोग भी बंद कर दिया। तब एकदम साहिब जी अभी और करेंगे सर। अब देखिए ना एंडोस्कोपी वाला भी करेंगे अगला बार। लेकिन हाँ भर देते हैं। चलिए तो फिर दिखेगा नहीं ऐसे डाल। ना हम देंगे, हम बॉस को साथ देंगे। चलिए इसको निकाल देते हैं। चलिए हाँ इसको ऐसे निकालिए सिस्टर, ऐसे निकालिएगा ना। हाँ चलिए इसमें सुचर कोई दीजिए ना, किसी से कर देंगे। इसमें है नहीं, इसमें है वही दीजिए ना। अरे लाइए ना, हम उसी से कर देंगे, क्या करना है तब, काहे के लिए बर्बाद करेंगे। लाइए इसी से कर देंगे। लाइए समीत देखे ना, ऑपरेशन ठीक हुआ ना। वेन ग्राफ्ट इतना मोटा सा नहीं होता है ना। मार देते हैं सिस्टर। लो क्रिम्पर लो। दिखाइए दिखाइए सिस्टर।
2 मिनट लगेगा। बड़ा है तो और बढ़िया है। एक्चुअली मेरा क्रिम्पर अलग है। छोटा हो गया है, हमको अंदाज नहीं था कि मेरे पास जो क्रिम्पर है ना वो समीर तो तरह तरह का करता होगा ऑपरेशन, लेकिन आज आप लोग को भी तरह तरह का लोग का देखने को मिला है। हाँ, तो देखे ना, संजीव का भी एक्सीलेंट हुआ, ये ऑपरेशन भी ठीक हुआ। ना ना सब जाम हो गया, काटिए। इधर दिखाइए, यहाँ पर। हाँ, इसलिए हम फैट वैट कुछ के चक्कर में वही वाला मस्टर्ड वाला ही, दोनों तरफ हम आपको गाइड करेंगे, दोनों तरफ एक से बांध देंगे, ठीक। हम लोग बाइलेटरल करते हैं ना पटना में, समीर भी तो करता ही है बाइलेटरल, बट दोनों कान का एक साथ। Sir, what will be the next case, sir? Any idea, sir? Sir, next case क्या होगा, कोई idea? बोरिंग रोड में क्लिनिक है, ENT क्लिनिक, एडवांस ENT क्लिनिक नाम है। बोरिंग रोड, कृष्णा अपार्टमेंट, एन कॉलेज है ना, समीत का घर बोरिंग रोड में है। जी जी सर, अगला केस कौन सा है सर, नेक्स्ट केस? हर्ष जी, अगला केस है, दोनों ओटी में इंड्यूस हो रहा है, ये दोनों तो केस हो गया। हाँ हाँ। तो दोनों एक बोथ ईयर एक्सप्लोरेशन है और एक राइट ईयर एक्सप्लोरेशन है। ठीक है सर। कौन ऑपरेटिंग सर्जन सर? जो राइट ईयर एक्सप्लोरेशन है डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा सर कर रहे हैं। पेशेंट का नाम है सुशीला उरांव। सरिता देवी। सुशीला उरांव ये पेशेंट है। सरिता देवी सर, 32 ईयर ओल्ड फीमेल हजारीबाग। फेंकते नहीं है। नहीं, सरिता देवी 32 ईयर ओल्ड फीमेल, उसको कर देते हैं। अभी सरिता देवी का ना सर? अब जिसको टाका देने आएगा वो मोटा नीडल से करे, पतला नीडल से करे, कर तो देवे करेगा। सर हम लोग के पास जो डिटेल है, सरिता देवी 32 ईयर ओल्ड फीमेल फ्रॉम हजारीबाग, राइट ईयर टिम्पैनोप्लास्टी, पोस्ट ऑरल, डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा। यही केस ना सर? लेकिन ये डिस्चार्जिंग ईयर है तो हमको लगता है कुछ आर्टिक में होगा या ग्रैनुलेशन होगा, तो सर एक्सप्लोर करके देखेंगे वेदर ही रिक्वायर्स अ मास्टोइडेक्टमी और नॉट। कर दीजिए ना, तो उसका डिसीजन ऑन टेबल सर लेंगे। अब राउंड विंडो रिफ्लेक्स दिख रहा आ रहा है आवाज मेरा? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। ठीक है। डॉक्टर अश्विनी, मेरे पास फोन नहीं। ओके, ऑडियंस अश्विनी बस सर। ठीक है, नहीं ठीक है, आई एम क्लोजिंग नाउ। यस सर। So, as they said, we put a graft. Yes, right? sir. This graft, temporalis fascia graft, and then we crimp the incus, crimp the piston. Sir. Yes, sir. You can see in the round window there's a okay, sir. nice reflex in the round window. See this movement there? Movement of light. हो गया? Yes, sir. अब स्पेकुलम दीजिए, स्पेकुलम छोड़ दीजिए, बंद करें सर। अब जेल फोम डाल दीजिए। मजा नहीं आया। भींगा हुआ डालिए ना। तो अब तो खाली इसको भरना है। क्या देंगे हम लोग इसको बंद कर? डालिए, जेल फोम ही ना है, कॉटन ही ना है। हाँ वो करेंगे। अम्बिलिकल टेप है क्या? बस नहीं, लाओ जल्दी।
आप सिस्टर पैक बना Yes, sir. लीजिए। Graft is getting नहीं placed. यहाँ पर यूज आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, तो बीटाडीन मलहम का ही बनाइए ना पैक। ठीक है, हो गया। उतना बड़ा नहीं, छोटा गौज छोटा में, गौज में। हाँ 1.6 है ये। ना बीटाडीन दीजिए ना, बीटाडीन ज़्यादा बेटर है। मजा नहीं आया, पूरा स्टेप्स जो था ना बोन जैसा फिक्स था। अच्छा, बना दें, हो गया। सीजर दीजिए, चलिए पूरा थोड़ा सा और मिलाइए ना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और दो। हाँ नहीं, इसमें लगा दीजिए, जो एक्स्ट्रा है इसमें लगा दीजिए। चलिए, अरे नमस्ते। चलिए इसको सीधा कीजिए, ऐसे कीजिए ना, इसे। हाँ, एकदम नीट रहना चाहिए, ठीक। चलिए और दीजिए, एक और दीजिए। चलिए अब फोर्सेप दीजिए। जो है ना, इससे कैनाल जो है ना, जो काटे हैं पीछे से, वो अपने जगह पर चला जाता है ना। बस अब नहीं चाहिए, तो ये वाला दीजिए। मजा आया ना? अच्छा, इसको काटिए, इसको काटिए यहाँ से। हाँ स्विचर दो। पकड़ा तो भाई। ऐसा सब हम लोग हटाएं। और है क्या जी? चलिए ये सब खोलिए, आप खोलिए। ये सब हटा दीजिए, सब नोचिए। चलिए थोड़ा सा कॉटन दीजिए, कॉटन कॉटन। अब दीजिए, गौज पीस लीजिए। वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं। देखिए अब कुछ हम लोग जो करते हैं वो भी आप लोग सीख लीजिए। थोड़ा सा कान के नीचे भी रहना चाहिए, समझे ना। हाँ डायरेक्ट, एक मिनट भाई, देखिए अच्छा बात सीखने में कोई हानि नहीं है। इसे देखिए, इससे है कि प्रेशर जो बनाएगा ना वो पूरा पड़ेगा। चलिए हो गया। अब एक वो दीजिए, ऊपर रख दें। हाँ चलिए, एगो कॉटन सर यू क्लोजिंग नाउ दीजिए, इसी से हो जाएगा। इसको काटना पड़ेगा क्या? खोलिए। इसे दिखाइए, दीजिए ना, अब हो गया काम। लाइए हमको दीजिए, वो बैंडेज दीजिए। मैस्टर्ड बैंडेज लगाना ही बंद कर दिए, वो मैस्टर्ड बैंडेज नहीं लगा। बैंडेज दीजिए, डायनाप्लास्ट को काट के लगा दो। दोनों बांध देंगे हम, समझे ना। देखिए ना, गॉज उसमें उधर इंसिजन छोटा ना है, आप हमको खाली उधर दिखाइएगा, ठीक। इसको उठाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको खाली हटा दीजिए। हाँ इसको हटा दीजिए। जब करें तब से इसको हटा दीजिए, नोचिए। हाँ कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सिम्टोमा के बारे में बताइएगा। अब एगो गॉज यहाँ रखा हुआ है ऑलरेडी, एक दो गॉज और रख दीजिए सिस्टर, एक दो गॉज यहाँ पर और रख दीजिए, यहाँ पर नीचे में जो वुंड है वहाँ पर, ठीक। बड़ा भी काटोगे तो अंदर चला जाएगा, हम कर देंगे ना, आप देखिए ना। एक तो कान पर गॉज रखिए। चलिए सही है। दोनों हम लोग ऐसे क्रेप से बांधते हैं। देखिए ना, इतना बढ़िया से
इतना बढ़िया से बांध देंगे ना कि हिलेगा नहीं। देखिए सब हम कवर कर लेंगे, देखिए आप। हटाइए ना सर, हटाइए। ये आ जाएगा उसके अंदर। हाँ ना, हम जान के उसके ऊपर से ही किए हैं। होने वाला इसका सत्येंद्र शर्मा तक का हो गया ना बढ़िया, दोनों एक से कवर हो गया। जो प्रवी बस अपना कंप्लीट चलिए वही चल रहा है, वही चल रहा है। अब सब सेट कर दीजिए। आँख वाला भी थोड़ा सा एक तो यहाँ लगा दीजिएगा 3 इंच वाला। और है दूसरा तब सर अभी तो तो हम आपको करेंगे ठीक। हम तब तक एक सिगरेट पी लेते हैं खाली। हाँ हाँ हो गया, चलिए। हाँ खोल दीजिए ना, दूसरा बांध लेंगे। चलो हो गया, छोड़ दो उसको। थैंक यू। न चल रहा है। ये प्लास्टिक बेसिक ऑपरेशन है जो ENT वाला डॉक्टर ही नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा केस इसी का है। ठीक कर दिया। काटो, छोटा ही काटो। जेल फोम वही तुम वेट वाला दे रहे थे ना हमको। हाँ दे दो, दे दो। नहीं ठीक है, तुम बंद करो, कॉटन लगाओ, बंद करो। थोड़ा सा पानी चाय पी मिलेगा, चाय पानी थोड़ा पिलवाइए ना। ब्रेक इसको खोल देते। ब्रेक जब कर रहे थे ना, समिति इतना ही है फिक्स क्या? था वो। अच्छा, पूरा आधा नहीं, हम तो स्कीटर से बहुत आराम से कट करके, हम तो स्कीटर से उसको इसके बगल वो भी करते हैं, लेकिन वो हम तभी करते जब वो नहीं निकलता रहता। हाँ। ना रहने दीजिए। हाँ, क्रोटमी सीजर्स एक्चुअली यहाँ पे क्रोटमी वो भी है। आप समेत के हनुमान हैं। हाँ तो डाले थे ना, वही तो किए थे। तो ठीक। हाँ पहले होल किए, फिर पिस्टन डाले। हाँ हाँ सब हटाए, लेकिन वो टिम्पेनोस्क्लेरोसिस जो सब पूरा फिक्स वाइट बोन्स। हाँ एगो केस तो अच्छा बना लेफ्ट वाला जो संजीव किया ना, उसके बाद वो एटिक डिजीज जब उसको हटाने लगे ना, इतना सॉलिड फिक्सेशन था। हम भी यहाँ से ना इसको दोनों इसके बगल से काट देते हैं स्कीटर से। हाँ हाँ
Thank you, Praveen sir. Thank you. Nice demonstration, sir. I don't know. Thank you. ये मकान भी समित का ही है। अच्छा तो ये चाचा का है लगता है। हाँ मिलेगा तो जोड़ के बना दीजिएगा। लेते हैं सिगरेट। Thank you, sister. हाँ ना ठीक। बहुत ज़रूरी था ये चीज़ जो आज हो रहा है कि लोगों के मन से मैंने भय निकालना है कि अगर आप पहले जैसे होल बनाते हैं तो क्रोटोमी सीजर्स आ जाता है। ना ठीक किया ना यहाँ से तो कलकत्ता भी नज़दीक ना है कलकत्ता से भी मैंने मेरे पास वही है कलकत्ता में हाँ उसी से क्रोटोमी भी करते हैं। वही करेंगे हाँ वही हाँ लेकिन क्रोटोमी का एक अलग इसका जलने वाला सही बात नहीं ग्लोबल जो पटना में हम लोग करवाए थे उसमें कलकत्ता का ही मैंने सब ऑडियो विजुअल वाला आया था वो भी इसी तरह से हुआ था जैसे यहाँ से यहाँ मैंने ऑपरेशन हो रहा है और जो बना है नया गांधी मैदान के किनारे कौन कौन भवन सब है उसी में ऑडियंस बैठा हुआ था और नया उसका नाम हम नहीं बहुत बड़ा बना है और कहाँ समित का भी तो पटना में बोरिंग कैनाल रोड में मकान है शायद कि बेच दिया हाँ नाम सुना हुआ सत्येंद्र सर बोले हैं कि तुम साथे रहना है हम रहेंगे तो बहुत सारा काम उनका हो जाएगा हम लोग के गुरु वही ना है हम लोग सबको वही सिखाए हैं हमको राकेश मैन को संजीव को सबको ईयर सर्जरी वही सिखाए नहीं तो हाँ मैंने कम से कम 50 थोड़ा सा पानी खाली मंगवाइए हाँ उनको भेज दीजिए ओटी में ना आकाश को याद दिला देना वो पहला केस किए थे ना डॉक्टर उनका एक ये है लाइट को अपना लेके आया इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट जो है तो गाड़ी में रख देगा उसको उनका नाम चिपका के लिख देगा ड्राइवर को बोल देगा वहाँ जाके बंटी वहाँ लोग जाने के लिए बंटी दे देगा आज आने के पहले पेपर में पढ़ लिए
फिर झारखंड में मिले 17 केस। सुबह सुबह आज पढ़ के आ रहे हैं। जीरो रखा ना सर, 10-17 केस। एन कॉलेज है ना, उसी के सामने थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए, ठंडा है। पैंडेमिक वाला रूप ना पकड़े। कृष्णा अपार्टमेंट एक बिल्डिंग है, 10 मंजिला बिल्डिंग है। मैंने हाँ, अपार्टमेंट जब बन रहा था पटना में शुरू हुआ था, उसी समय का कृष्णा और यमुना है। तो कृष्णा में ही मेरा 300 स्क्वायर फीट का एक चैम्बर है। हाँ हाँ, कंठ साहब तो गुजर गए। हाँ हाँ, थोड़ा सा आगे एन कॉलेज के जस्ट सामने उनका था। उनमें डिस्चार्ज हो गया। और मेरा घर हुआ गोपाल, तो छपरा पावर बैंक है इतना साला इतना खरीदे हैं, साला सब ला जाता छपरा है, छपरा से 7 किलोमीटर मेरा गाँव है। तो हम लोग खेती बाड़ी, हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग का खेती बाड़ी है। मैंने फादर में किसान ही है, तो गांव से भी हम लोग जुड़े हुए हैं। हथुआ ब्लॉक है मेरा। इंड्यूस हो रहा है क्या? वो लोग आ गया है, अभिषेक बोलेंगे जॉन के लिए वेट पूरा हेलो। तो उधर से फिर सब लगा लो माइक वाइक। हाँ समित बॉस, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, पेशेंट टेबल पे है, अंडर होती है ना, तो फिर फाइंडिंग डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक देख लो। हाँ बस इनॉग्रेशन करा। ठीक है, आएगा गुजरात टाइप के कहीं का बेटा है ना, इनका बेटा है। जितने सीनियर लोग हैं ना सबको बुला सर के इधर पे बीएमके से ना उनको ही बुला। नहीं, उनको तो पहचान है इस तरफ। वेट करे तुम्हारे सर की वाइफ और आप भी फॉरवर्ड करेंगे ना। हाँ हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भेजवा दीजिएगा कॉपी। हाँ वही पूछना है कैसे करना होगा। पहले आपको लगता है सबको वेलकम कर देते हैं, उसके बाद सबको लैंप लाइटिंग के लिए बुला लेते हैं, फिर सबको बिठा देते हैं फ्रंट वाले में या उधर वाले में। उसके बाद आप जैसे कि सबसे पहले मलिक सर करना होगा, तो किसी सीनियर एंट भी एमके सर से दिलवा दीजिए, ठीक है। फिर राघव शरण सर को दिलवाइए, तो और किसी सीनियर से, वो जो सर आए बोकारो से, उनका सर। हेलो, हाँ भेज दें। हाँ भूखे रखिए, पानी पिला पिला के ना बाथरूम भेज जब जाने लगे तो हेलो
सब लोग का केस बंद कर दो। अभी ऑन कर राकेश कुछ बोलवे रही किया करार देंगे करने लग गया यहीं पर ना हम यहीं आ गए थे। मेन है कि बोल भी नहीं ना पाता है। माइक्रो पर दीजिए तो सिस्टर। हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है। पैर नीचे गिरा हुआ आप आराम से रहिए, आप आराम से रहिए। इनको तुम वही तो सीखे सुने डॉक्टर कर ले क्योंकि अभी सर्जरी रुका हुआ है तो इनॉग्रेट कर ले। लो स्टार्ट करें। लैंप लाइटिंग का सामान रेडी है ना? Ready? Good afternoon, everyone. I welcome you all now to the inauguration of this live endosurgical workshop. Association of Otolaryngologists of India, in association with Dr. Lal's Hospital, Ranchi, have organized this extensive coverage of otology, and we have renowned surgeons coming over from all of Bihar, Jharkhand here. So let's start. We have already started our OT. We would like to do the lamp lighting session. I request our Malik sir, RK Malik sir, ADG Jharkhand, to please be here on the dais for the lamp lighting. The icon of ENT in Jharkhand, Bihar, and even in India, Raghav Sharan sir, Dr. Professor Raghav Sharan sir, please welcoming you on stage for the lamp lighting. Requesting Dr. Chandrakant sir, Dr. BMK Sinha sir, Dr. PK Singh sir, Dr. Prakash Munka sir, and Dr. AN Kashyap sir to please be here on stage to grace this occasion for lamp lighting for the formal inauguration of this workshop. नहीं सही है आप बढ़िया दिखेगा आपको। ये एक्टिवली डिस्चार्जिंग ईयर है सर। लेकिन मेनिंजाइटिस है इसको पूरा अच्छा। ले लीजिए, मेरा इसका काम नहीं। हाँ स्टूल को इधर ले आना। हाँ
Big round of applause, please. We are still not very low on energy. The day is still young. Let the claps keep coming. स्टूल ले आओ ना. Thank you, sir. I request Dr. Sanjeev to please be here to welcome Malik sir on this occasion and present him with a bouquet. बाइपोलर यूनिपोलर दोनों लेंगे. इधर पोस्ट ऑरल फिस्टुला है इसको. Dr. Samit Lal sir to please welcome his teacher Dr. Raghav Sharan. इधर 10 cc syringe लाना ना. Dr. Rakesh Nayan sir to please be here to present bouquet to Chandrakant sir. टेंशन नहीं लो. जैलोकेन एड्रेनालिन. Dr. Ashwini sir, please present the bouquet to Dr. BMK Sinha sir. Dr. Zahid sir to please present the bouquet to Dr. PK Sinha sir and welcome him. PK Singh sir and welcome him. Dr. Harsh to please present the bouquet to Dr. Prakash Munka sir. And Dr. Rajesh Chaudhary sir to please welcome Dr. A.N. Kashyap sir. I welcome all delegates to this wonderful workshop. We have been having an extensive scientific session. And I am sure all of you are getting a lot of discussions and learning. I now request Malik sir to please grace this occasion with a few words. I am grateful to Dr. Shamit, who invited me to this very important occasion. All the doyens of the field are here, and it's quite a very prestigious event. When you invite somebody who is not a doctor to say a few words, you ensure one thing, that only few words will be said. I hope that doctors, many doctors have come from Bihar. So when they come to Ranchi, there are additional benefits, and the gracious host that Dr. Samit is, I believe all benefits have been taken care of. So you must be all in very high spirits and continue to be so. And I am very happy that Dr. Rohit is here, Shweta is here, and all. Dr. Raghav Sharan is like synonymous with the most unpronounceable field. I don't even, I mean, when I got the invitation, it was difficult to pronounce the actual something. But we know as ENT, and earlier it used to be part of I. So it was like see no evil, hear no evil, speak no evil. So now you are taking care of hear no evil and speak no evil. The see no evil is like, or rather the opposite, you know, of it. So I would say that, I mean, I would hope that this becomes a very a great success, and we have a very important, I think, event coming up in January, which will be one of its kind. And I wish all of you a great success. And we wish to see Dr. Raghav Sharan in the fighting form for ages to come. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your words. It's a great inspiration. We thank you for being here in spite of your busy schedule. You could just give a few minutes for us. No academic or session is complete without Dr. Raghav Sharan putting in a few words of inspiration, sir, please. मुझे क्या कहना, मुझे कुछ कहने आता ही नहीं. जो मुझे कहना है सब आप लोग
लाइव सर्जरी से देखे हैं, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ इन एनी स्पेशलिटी दैट पीपल आर बीइंग बेनिफिटेड डायरेक्टली। हम लोग जब लाइफ स्टार्ट किए थे तो ये सब कुछ नहीं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग कैसे ENT स्टार्ट किए, यू कैन नॉट इमेजिन। ये प्रोसेस कंटिन्यू करे, वी शुड ऑल हेल्प इन दिस एंड वी शुड ऑल टेक पार्ट इन दिस एंड यंग पीपल शुड टेक पार्ट मोर। अब तो उनका भी अपने को बहुत सीनियर मानने लगे। नहीं सर, हमेशा जूनियर ही रहे। नहीं, ठीक है, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी टू द कॉन्फ्रेंस। Thank you, sir. Thank you so much. Cheers to that thought. And handing over the mic to Dr. Samit Lal for the vote of thanks. I am really thankful to sir and Malik sir who have come, my guests of honor and chief guest, to inaugurate this ceremony. And as we all know, my whole team is now standing with me, and it gives me a lot of satisfaction because we'll be holding the national conference in January, and I'm so proud to see all my team ready and fighting fit to hold that mega event. And we need your blessings, and we need all of your support to make this national conference a big success. This workshop was planned as a prelude to show the people of India that yes, we can do live surgical conferences now. We are prepared, and I'm sure the quality of today's work has reached the corners of India and people are appreciating it. So let's carry it forward and make this national conference a huge success. And I thank you everybody for coming here. Thank you. Thank you. In simpler words, picture to abhi baki hai mere dost. So please let's continue. Requesting everybody to take their seats. OT, are we ready? चलो इसको शेव कर दो तो फटाक से। शेविंग करवा लो अच्छा से, है ना। दो उंगली रख करके ऊपर, है ना। जो बुके छुआ है सब लोग को बहुत जरूरी है भाई। Sure, sir. Not nose. Hello, OT. Satinder sir. हेलो। हाँ, सत्येंद्र सर का पिक्चर आ रहा है। राकेश। हाँ डॉक्टर समीर बॉस बोलिए। हाँ, two cases are ready, I think. This Dr. is your Satyendra, case you're showing on the screen? No, it's Dr. Satyendra sir's screen. Okay. सत्येंद्र सर क्या फाइंडिंग है सर? अरे सत्येंद्र को माइक लगाओ।
माइक दो सत्येंद्र सर को। माइक दे दो। शाहिद ओटी में असिस्ट कर रहे हैं। नहीं तो अभी इनके साथ आएंगे वो। हम तो आए भी हैं नेगलेट। ठीक करते हैं। थैंक यू बॉस। कितने ओटी हो रहे हैं सर आज? 8 है सब फ्री है। सब फ्री है। पूरा डिटेलिंग में बताइएगा जैसे कि आप न्यूज़ भी बना रहे हैं। पिछले बार हम आए थे तो उसमें याद है ना, एक बार हम आए थे इसके लिए कोबलेशन वाला टॉन्सिल वाला हिंदुस्तान से एक ही बार हम आए हैं बीच में। बैठ के हिसाब से लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। उधर ही बताइए। 3 ml में नहीं है। अच्छे से बीटाडीन से एकदम कर दो, ठीक है ना। हाँ हाँ एकदम डाल दो अंदर। प्रेस हेलो गाउन नहीं है ना, कोई ना पेंट करो ना, तुम हम मांग लेंगे गाउन। यहाँ गाउन लाओ तो गाउन लाना साथ में। अभी एक गाउन दो, बाद में देना। पोस्ट ऑरल एरिया। हेलो हेलो कैन यू हियर मी? हमको देना है कहाँ पे? हम देख के आ रहे हैं। ठीक 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 ओके। हेलो गुड आफ्टरनून सत्येंद्र बॉस। बॉस जी हेलो सत्येंद्र बॉस। बोला जाए। सत्येंद्र बॉस इज बिजी इन ओटी। आर यू विथ अस? श्योर। सत्येंद्र बॉस यस यस। your sound is voice is very low. Are you Dr. Satyendra, please keep your mic near your mouth. हेलो You are not audible. Keep You your are mic not close audible to at you. all. और पास में लाइए। हेलो नहीं तो हम ही लोग आपके पास आते हैं। हाँ ये ऑन है। Keep the microphone near to his mouth. अभी ऑन नहीं किया मैं इसको। ओके ओके। हेलो Hello, still you are not audible completely. Sound is very less. Voice is very not. हेलो ड्रिल विल जो रखोगी ना तो वो So what is the case, sir? Satyendra boss, what is the case? What is pre-operative? What is the audiological finding? Any CT report? First surgeon of this event who has got double microphone. बार चाहिए सब चाहिए। हाँ हाँ वो जो माइक्रो ड्रिल जो कान में यूज होता है वो वाला। Still you are not audible, boss. माइक्रो ड्रिल मेट्रॉनिक सिंपल माइक्रो ड्रिल नहीं है यार तुम। द माइक्रोफोन। हेलो हाँ भाई। Hello. हाँ बोलो ना। हेलो हाँ Satyendra, what is the pre-operative findings and what's your plan? This is a CSOM tubotympanic type, but discharging here, and the finding is central perforation along with the laryngitis, and the audiogram is around 38 decibel hearing loss, conductive hearing loss. Okay. So Any now- other relevant finding? No, as per history sheet is there, I can tell you. Right now, I don't have What the is your picture take of. on 4-quadrant injection, 4 injection. Yes, yes. This is anterior, superior, posterior, and inferior. Apart from post-oral blockage, greater auricular, lesser occipital, we have to What is the block site the of fifth injection? nerve. What are the 10th nerve. precautions one should take during injection? You have to Any special always. precautions? when you talk about the fourth quadrant, You have to always. the nerve, what are the nerves involved, and give All the nerves supplying the external. yeah external Yes. canal. So Exactly. this is entirely anterior half is auriculotemporal branch of fifth nerve. This Yeah. is vagus nerve, and the some part of this area comes from greater auricular nerve, C2, C3. So we have to block greater auricular along with the 9th and 10th cranial, 5th and 10th cranial nerve. Boss, zoom Then we out. You please zoom out. Your magnification is very high. एक मिनट just. Is it okay? ये वाला हैंड पीस शायद उधर का है ना? Lesser.
Is it minimal magnification? I think it is 1. This is No, it got more, one more. Lesser magnification. Yeah, this is, go one step. Yeah. Yes, now it's look like Satyendra Boss. Perfect. No, but this is not, I'm not comfortable with 0.4. But we are comfortable. Because You can go one more step. 0.6 is better. Yes. This is better. Yes. Okay? Okay. So since I am going post-oral, so I am not infiltrating the tragus for cartilage. Okay? Because Okay, I we'll will take harvest the cartilage cartilage from from the- this. I will harvest the cartilage from this location. So I am not giving the infiltration in this area. Because this is a discharging ear, so I may go for cortical mastoid. Still, you are not very much audible, sir. I think Audio there is visual, problem with please. the mic. माइक्रोस्कोप लगा थोड़ा माइक को इसको अरे माइक को कमेंट हो सो यार। हेलो अच्छा काम करवाएं ठीक। हेलो हाँ yes sir actually press conference is going on, that's why you have been muted, almost muted. Okay. So this is the post-oral area for graft harvesting. Every time you have to make sure that you are not infiltrating into the artery or vein. So you have to push the little amount of. It is in GA or local? GA. So do you all your surgery under GA or local, or any preference of local over GA or GA over local? Any criteria for that? Yes, this patient can be done under local anesthesia. But Dr. Samit has put all the cases under general anesthesia. So it's a time consuming, you can say. So since patient is having discharge. Boss, you take 5 minutes rest. In 5 minutes, I think press conference will finish, and then we can talk in a proper way, I think. And now, okay, that's already in. माइक्रोस्कोप का लगा। Now you go for hand wash. प्रैक्टिस से कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। सर हमें पहले से डार्क है तो और डार्क होने लगी आप अफ्रीका चलते हैं कहाँ पे है स्क्रब शाहरुख खान काला वाला घूमेगा आलिया खान डिटेन की क्वेश्चन ओवर मुंबई ड्रग क्रूज के लाइट बढ़ाना होगा लाइट बढ़ाते चल जाते एक करोगे सर जनता तो कहता हामिद अंसारी की भाई बहुत देर बाद बोले अभी तो दावेद Audio visual, please increase the voice, increase the sound of OT. Good market and marketing too. What is the second case, sir? And who is doing? Second case, hello. 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 Can you get my voice? Hello. Ashwini sir, can you get my voice? Hello, Abhishek boss. Yes. Dr. Harsh here. Can you get the picture of this case? Picture of sir what? No sir, we are not getting picture of your case. Yes. I think painting draping is going on, sir. No. This is no. I have already painted drape and infiltrated. We are not getting your picture, sir. मीटिंग के वजह से रखो इसको Audio visual. Just 1 second. The people are trying to change the. 3:30 बार शुरू करोगे Can you show the second OT, please? Images of second OT. Can you get it now? No. No, sir. We are not. Yeah. This is the picture we are getting. See the Yes. post-oral fistula. See the Yes. post-oral fistula. You can see some scar also here. Might have done some abscess drainage somewhere else. Okay. So this is a case of cholesteatoma. Bad cholesteatoma actually. Entirely Yes, sir. filling the mastoid cavity. Okay. Yes, sir.
and Lampert है क्या? Lampert देना. I'll just show you the external auditory canal findings. तुमको गंदा वाला केस दिए ना अभिषेक? नहीं बहुत मजेदार केस दिए बस. I love it. I love to do this cases. मजा तो हम लोग को आएगा यार. Speculum देना ना. Speculum या I'm just waiting for the micro ear sets to come so that I can start the OT. तुम बोल रहे हो कैसे क्लोज करेंगे? तो उनको सर्जन पूछ रहा है. मैंने आपसे पूछ रहे कि कैसे करते. So Dr. Harsh. हेलो. हाँ हेलो. हाँ अभिषेक. हाँ बस हम लोगों का प्लान जो है पोस्टोरली जाएंगे. ये फिस्टुलस ट्रैक के चारों तरफ का स्किन को हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे और एक मैस्टोडेक्टमी प्लान है. लेट अस सी अंदर क्या स्थिति है. उसके बाद ऑब्लिट्रेशन करना है कि वी विल डू अ वाइड कॉन्कोमियोटोप्लास्टी एंड कम आउट ऑफ इट. विल डिसाइड इंट्रा ऑपरेटिवली. ओके. मेरे पास सीटी नहीं है बट वी आर हैविंग अ एक्सरे मास्टॉइड. हेलो अभिषेक. हाँ बोलिए बस. हेलो. History of previous surgery or just history of ID or just natural opening? I am just seeing a small scar near the fistulous tract. Actually, somebody has done an IND, I think. IND of this periosteal abscess, I think. And nothing else was done. Audiometry में देखे हैं कि उसको एक mixed hearing loss है. Moderately severe mixed hearing loss है. और हम लोगों के पास एक एक्सरे मास्टॉइड है जिसमें काफी एब्डोमिनल सीट है. हाँ हेलो. कैविटी बड़ा सा दिख रहा है उसमें. Okay. So what's your plan, Abhishek? What is your plan in this case? I'm planning to go postorally excise the scarred skin along the fistulous tract. Okay. And do a MRM in this case and just see कोई ossicular chain है कि नहीं है. We'll do a type 3 tympanoplasty. Any CT finding? I'm just waiting for the micro ear set to come. Once it comes, I will show you the ear findings also. Is there a need of excision of a lot of skin and the postoral area? I don't think you need a lot of skin. Not lot of skin, but this scarred skin needs to go actually. Because, just a small elliptical incision. With the fistulous tract, this scarred area will go off. So that if we plan a obliteration from this musculoperiosteal flap, then this scarred skin should go for a better healing. Suction. Don't give a big gap in the, especially in the inferior peacock. It will be very difficult to close later on. No. Just give a small elliptical incision that will solve the purpose. I'm just waiting for the instruments to come. Actually, that has gone for sterilization. This will come and then we start. And I'm not worried about Sister, voice gauze दीजिएगा. Voice gauze. एक गॉज दे दीजिए मॉइस्ट करके. इसमें टाइम नहीं लगेगा इसमें. अच्छा ठीक हो जाएगा. Where are you, Satendra boss? Yes. Just right now I will give you the macroscopic picture. What is the finding? माहौल बनाना बहुत जरूरी है और तो साबोटाज करने का भी कोशिश करता है. कॉटन दीजिए ना, छोटा छोटा बॉल दे दीजिए. प्लेन फॉस्फेट दे दीजिए, हम क्लीन कर देते हैं. इंस्ट्रूमेंट लाओ ना. हो जाएगा कुछ नहीं यार. हम लोग कितना है, 2 सेट है इनके पास. अभिषेक सर. हाँ यस डॉक्टर हर्ष.
हाँ सर, can you repeat your plan please? What is your plan, sir? So I'm just repeating the finding of this case. She is a young female. I think she is a 20-year-old girl, and Okay, she sir. is having a chronic discharging ear for long time. Actually, this ear is discharging left. This is the left ear, and it has been discharging since childhood. She has developed a post-oral fistula also, and there is a history of some IND near the fistula. Okay. She is having a mixed, moderately severe conductive hearing loss in this case. This is all till now. What we have seen in the X-ray mastoid, there is a big cavity in the mastoid. Yes, and, sir. I'm just waiting for the instrument so that I can show you the findings in the middle ear also. No, oral speculum. बताना नहीं है टाइप 1 में सक्शन ऑन कर दो तो कोई हाँ sir, now we can. I think you can tell about the findings inside. Type release करो ना थोड़ा. Okay. Yes, I am doing the suction in the external auditory canal. आप नहीं दिख रहे sir. You are not seeing it? You are not getting the picture? अच्छा Okay, okay. थोड़ा सा सिस्टर इंजेक्शन दे दीजिएगा. Cholesteatoma flakes around the granulation polyp. Can you see in the PIP? Yes, sir. There is cholesteatoma flake also, and there is also a granulation polyp which is hanging from the attic. Yes, sir. So this is a pure case of atticoantral disease, which is actually extending badly into the mastoid cavity, and I am also apprehending a dehiscent sinus plate in this case. थोड़ा सा 1-2 ml. ठीक है sir. I think your plan of taking a big incision is all right now. So just you have to before remove the scar tissue also, sir. Okay, you can see this is the mastoid tip. Okay, this is the superior area. So yeah, we are going to plan a semilunar incision, and we will also enclose this fistulous tract in this incision. Okay. mastoid नहीं करना पड़ेगा. Diathermy is on. So I am just starting to give the incision now. Okay, sir. Hello. Yes, we are seeing sir incision. Okay. I am putting my finger on the mastoid tip. Okay, sir. Okay. And then. Yes. I am just joining this scar in this area. Okay. Hello, Dr. Aswini. Aswini. We are also enclosing this scar in this post-oral incision. Okay. हो गया सिस्टर बस. अंदर का finding बहुत finding अंदर से. हाँ सतेंद्र boss. This is the finding. Is it visible? Yes, visual. Little. This is a small central perforation, and with meningitis all around. So what this is a small perforation, why it is but not healing? No. Such a small perforation, why this perforation is not healing? Most of the time, you just see the surface of the outer surface of tympanic membrane. This is a granulation tissue. So I think it is self-inflicted injury. Patient used to clean the ear, so that's why it gives birth to the granulation tissue. And in this case, I think there is no need of cortical mastoidectomy, so I can go for only type 1. So you will do cortical mastoidectomy. Cortical mastoidectomy, just expression of. It's not required. Just see the middle ear, can see it is edematous, cecal nibuli, sister. Audio visual PIP in 2 half only. PIP 2 part में कर दो.
forceps. And remove this third one, that is corner window. Remove that corner window. There is no need to project the audience. नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, दो हाथ में रहेगा तो दिखाई पड़ेगा बेटा। हेलो फॉरसेप देना दो। थैंक यू। हेलो हाँ अभिषेक बॉस। हाँ हेलो बोलिए। ये पोस्टोरल इंसिजन हम दिए हैं, सीना को एंटीरियरली रिफ्लेक्ट किए हैं। जब अब ये फिस्टुलस ट्रैक को हम निकाल रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। सिस्टर कुछ पकड़ने वाला दीजिए। दूसरा ओटी भाई प्रोजेक्ट करो यार, एक ही आटी दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। तीसरा भी जो विंडो ना कॉर्नर विंडोज को हटा दो, ये वाला यहाँ को मत प्रोजेक्ट करो। पकड़ नहीं रहा ना। वही टीवी लाया और कलर आ जाए अरे यार वो कहाँ है? अरे यार बता नहीं सिस्टर पकड़ने वाला नहीं है। इसमें ले लेते हैं थोड़ा फॉर्सेप लाइन है सिस्टर। So Dr. Harsh, can you see this is the fistulous tract on the forceps? Remove that. Yeah, this is the fistulous tract actually. Yeah, I'm sending it for histopathology. Abhishek sir, your mic is very close to your mouth. We are not able to hear you. You remove the fistulous tract. Yeah, I have removed the fistulous tract. Okay. पैक दे दीजिए। थोड़ा सा पोछो तो इसको बहुत से पोछो। बड़ा था। जो टॉक्सिक बनाता है ना, बस उसी के साथ मस्त रहो। नहीं करेंगे। अभिषेक बॉस कैमरा सीधा कर लीजिए, ओरिएंटेशन डिसोरिएंट हो रहा है बॉस। अभी ठीक है? ठीक है सर। Okay, this is the inferior part, okay, and this is the superior part, okay. Okay sir. I'm just elevating the periosteum. Actually, it has adhered to the mastoid cortex very badly because of repeated inflammation. So I'm using the diathermy to elevate it from the mastoid cortex. एक नंबर। लगाइए ऊपर। Abhishek, hello. Power of your corte is little bit more on the upper side. Retractor line is self-retaining. The finding is not like that, I think. No, you want to diathermy to go down? Okay, but I'm comfortable with it actually. I'm not using it on the cartilage. I'm far away from the cartilage, so. Power of the corte is on the. Corte थोड़ा कम कर दो. Satendra sir. Yes. Yes. So what are you going to do? First, are you going to take the graft first, or you will take in the last? And how will you differentiate between false fascia and true fascia? Just for the audience and news for pages. What precaution one should take during taking of the proper graft? Because once you take the false fascia, and you try to put in the middle ear, it swells. It swells like anything, and it becomes very difficult to manipulate. अभिषेक बॉस थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा। ओके। क्लैरिटी खत्म होता है यार अभिषेक बॉस। हाँ। हेलो अभिषेक।
अभिषेक। हाँ यस सर बोलिए। अरे सिस्टर को बोलो फोकस करेगी, तुम्हारा ये नहीं आ रहा, बढ़िया से फोकस नहीं है। बढ़िया से फोकस नहीं है। सिस्टर रुक जाइए। कैमरा फोकस नहीं है, यहाँ तो माइक्रोस्कोप। हमारे पास मॉनिटर में अच्छा से दिख रहा है। नहीं तुम्हारा दिख रहा है लेकिन कैमरा फोकस नहीं है। नहीं कैमरा मॉनिटर में बढ़िया से दिख रहा है लेकिन वाइट बैलेंस करो तो, वाइट बैलेंस करो तो। हाँ सर बॉस, यहाँ स्क्रीन बहुत हेजी है आपका बॉस। पीछे बैठे तो दिखाई पड़ेगा। डॉक्टर अश्विनी। हाँ जी 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 सर। अभी बताइएगा, इज इट ओके? थोड़ा सा जूम आउट कीजिएगा बॉस, थोड़ा जूम आउट कीजिए ना। नहीं होगा। देखो भाई हम नींबू पानी पी रहे हैं। कितना साफ है ऐसा नाम ही है नींबू का, नशा नींबू। फ्रेश लाइम सोडा है। लाइट भी ज्यादा है, क्लियर कर रहा है। नहीं नहीं, ऊपर से जो कैमरा यूज हो रहा है सर, वाइड वाला कैमरा, वो कैमरा फोकस नहीं है। पिक्चर्स गॉन, ऑल पिक्चर्स। जैकेट हम लोग 3 दिन तक पहने थे भाई। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। वीडियो डिस्कनेक्टेड। आ गया आ गया। ड्राइवर ड्राइव ग्राफ है। हमसे चेंज किए नहीं बॉस, आपको मेरा वाला हम आपको दे दिए थे, आपका वाला हम ले लिए। ये अच्छा दिखा दो। अभिषेक बॉस। हाँ अरे दोनों अभी ठीक दिख रहा है। नहीं बॉस, क्लियरिटी नहीं आ रहा है बॉस, यहाँ पे फट रहा है मतलब। 22 में बनेगा, हम बोले तुम काम करो मैं काम। असल में पिक्चर छोटा करने के लिए बोली उन लोगों को, नहीं तो कट फटता है वहाँ पे। पिक्चर को 2 पार्ट में दिखाओ ना, यहाँ पे 2 पार्ट में हाफ हाफ करके दिखाओ ना। क्या बोले बताइए। हाँ हम लोग का हटा दीजिए, हम लोग का हटा दीजिए, हम लोग का हटा दीजिए। हम लोग को हटा दो यार, बहुत देर से बोल रहे हैं हटा दो, सर को तो हटाने की तैयार नहीं है। तो सर नींबू पानी पी रहे हैं। आपको हटा के कैसे काम होगा सर, ऐसे आप बोल रहे हैं ना। आप लोग हटा देंगे तो कैसे काम चलेगा बस। हाँ, अब थोड़ा क्लैरिटी आया बस। ज्यादा अच्छा अभी आ रहा है, क्लैरिटी हुआ है कुछ? थोड़ा बड़ा है बस, अच्छा हुआ, बेटर हुआ है बस। तो काम करते करते आ जाएगा, बेटर हो जाएगा। ब्लेड देना तो जरा। अब जितना आगे बढ़ते जाए उतना साफ होते जाएगा बस। हाँ देखिए ये जो है ना, ये डेसेंट कॉर्टेक्स है, यहाँ से कोलेस्टेटोमा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल भी इसका डेसेंट है एक्चुअली, है ना। हाँ पिछले बार लगता है कोई मैस्टॉइड एब्सेस को ऐसे ही या पोस्टरल एब्सेस को काट के छोड़ा हुआ है बॉस ये। हाँ हाँ बाइपोलर भी दे दीजिएगा। हाँ अब क्लैरिटी बढ़ गया बॉस। अरे दोनों केस दिखाइए ना साथ में, इधर से नंबर दिखाइए मेरा वाला। दोनों केस दिखाओ, दोनों के साइमल्टेनियसली दिखाओ ना। दोनों ओटी से केस दिखाइए, हम लोग का चेहरा जरूरी नहीं है। यस दिस पिक्चर इज नाउ व्हाट इज बेटर देन एनएस ले लो, एनएस दे दो यार, ब्लेड देना तो। हेलो ओटी। हाँ हेलो। सत्येंद्र शर्मा सर का केस नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब दोनों एक शर्मा का केस आ रहा था नहीं। हाँ अब एक हाँ ठीक है, इस दोनों पिक्चर को हाफ हाफ कर दो, यही दोनों पिक्चर को हाफ हाफ करो, दोनों को छोटा कर दीजिए। इस दोनों पिक्चर को हाफ हाफ करो। बाइपोलर का प्रोब लगा हुआ है क्या? दोनों को एक ही साइज का कर दीजिए, छोटा छोटा। नहीं लगा हुआ है, ले लो तो ये अच्छा रहेगा। सिस्टर इसमें कैट्स पर लगाइए। एक बाइपोलर लेंगे थोड़ा यहाँ पे। क्या हो गया? कहाँ है फुट प्लेट? क्या करोगे? यहाँ पे बाइपोलर एक लेंगे सिस्टर। है ब्लू कौन है? ये है। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करना। So what I'm doing is now I'm exposing the mastoid cortex. No. Okay.
Dr. Harsh, are you there? No, no. Yes, sir, we are here. So what step are you doing right now? I'm just elevating the periosteum of the mastoid cortex as much as possible to Okay, have sir. a wide exposure of this area. Okay. This is the root of the zygoma. I've gone up to the root of the zygoma here. अब थोड़ा हटा लेते हैं पहले. So this is the rudimentary spine of Hanley. This is the sac actually. You can see here. इसको हटाएंगे तब पिक्चर आएगा. वो हाई एंड मॉडल में ऐसे से करते जाइए, वो बिल्कुल एकदम वो होता जाएगा. चलो पानी ले लियो, ड्रिल ला तो ड्रिल लगाओ. So just to revise the anatomy in this case, this is the mastoid cortex. This is the dehiscent part of the mastoid cortex. You can see the cortex is little ballooned out. This is the root of the zygoma. This is the superior part. This is the inferior part. This is the tympanic bone actually. This one. Okay. This is the mastoid tip. I have separated the. Yes, now both can be seen. Okay. पानी ले लो बढ़िया से. पानी ले लो. यहीं से आ रहा है. नहीं, हम लोग के साइज का जो विंडो दिखा रहा था, हम लोग अच्छा तो करते तो ज्यादा क्लियर दिखेगा. इसको छोटा कर सकते हैं और विंडो को और छोटा कर सकते हैं क्या? दोनों विंडो को छोटा कर दीजिए. Okay, I'm just starting to drill now. For the sake of PGs, if they are there, this is the temporal line. First cut should be along the temporal line. Okay. ये temporal line है ना boss? Yes, this one is the temporal line. Yes. Yes. Which one are you using? What are your preference for different types of burr during drilling? This is conical. You can see this is the conical oblong burr. When I start drilling the cortex, actually I use this larger burr. This larger burr gives me faster cutting, and I can do this external bone work fastly. अरे मैं हम आके तुम्हारे यहाँ काम करेंगे. अरे हम लोग आपके बाल बच्चे टाइप. अरे नहीं भाई, तुम लोग बुला लो हमको. अरे हम लोग पीछे से उतना इंजेक्शन देने का हम लोग धन्यवाद. तो अभी हमको भी मन कर रहा है. हमारी इच्छा एज ए डॉक्टर ऑर्डिनरी नाइफ हमेशा पूरी होती रहेगी, क्योंकि कभी सीखना खत्म होगा नहीं. हर बार कुछ नया मिल जाता है. रिट्रैक्टर ब्लॉक हो गया सेक्शन. ब्लॉक है, ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक. ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा. सेक्शन ब्लॉक है. वही तो ना जो है वो हो जाएगा. ना सेक्शन बढ़ाओ. सेक्शन क्या कम करो? सेक्शन को एकदम नहीं कम करना. Just drilling on the temporal line up to the root of the zygoma. Yes, sir. The idea is to delineate the temporal dura first. When I will have the glimpse of the temporal dura, I will just stay down. से टेप को पकड़ नहीं रहा. ये अभिषेक बॉस का. उनका जूम आउट कर सतेंद्र. हाँ, सेक्शन का इशू देखो यार, बार बार ब्लॉक हो जा रहा है. सतेंद्र सर थोड़ा सा फोकस कीजिए सर, वो आउट ऑफ फोकस है सर. है ना? Is it visible? Very sir, very hazy. You can focus. करते हैं. सर्कुलर नहीं. अभी नहीं, अभी कर लेंगे. इतना कर लेंगे. वेट ईयर में जो है ना, ब्लीडिंग थोड़ा होता है.
बोन से आ रहा है। हाँ मेरे तरफ से इसको करिए सिस्टर, ऐसे मेरे तरफ से। हाँ नहीं ओके ओके। So Dr. Harsh, are you there? Yes, yes, we are here. We are watching you. I'm just drilling the mastoid tip. Just trying to go to the lower part of the cholesteatoma sac. This is the tip area. Abhishek, what is the advantage of this bar? Bipolar, monopolar. Yes, you are which bar you are using? I'm using the conical bar, boss. I'm comfortable doing this. Conical bar. Any additional advantage? Advantage is you can do a larger cutting faster, because in this type of cases you need time to reconstruct actually. So if you are using smaller bar and going on drilling and drilling, you are actually wasting lot of time in drilling actually. So this bar actually gives you time to do reconstruction work later on. बोलते जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? हाँ you can ask. कि वो जो बर का शाफ्ट भी है वो भी छोटा है तो इस control, yes, actually the short bar gives you a better control on the drill actually. Yeah, exactly. The preference is you should use a drill in which the shaft is small. Hello. Yes. Satendra boss. Yes. Yeah, you are lifting the tympanomeatal flap. What are the precautions for the juniors? How to avoid the trauma of tympanomeatal flap? It all depends on the configuration of the skin. Now, right now you can see here the chorda tympani. Okay. We can see well. We can see. This everywhere it is bleeding. Okay. It's not. We are not appreciating the blood in your field. Your field is clear. Yes. No. Here you can see the. I think the suction should be at which mode? Lower mode, higher mode for the during the elevation of flap. What do you suggest about the pressure of suction? Pressure is good. It is not too high, but we are struggling with the blood. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Everywhere after myotomy, we are experiencing blood and blood only. So you are going to plan cortical mastectomy in this case? No. Simple type 1. Yes. Now you can have a look in the middle here. It is all good. Circular. As I used to irrigate the isthmus area from anterior isthmus, we can put a cannula, curved cannula, and irrigate forcefully so that if there is any soft obstruction, it come out. You like to do that, boss? I am not getting your point. Because it's a discharging, maybe some mucus plug there. Yes. Mucus area. Mucus was there, that was sucked out, and this is not a dry case. But in this case also, it will pass. No problem. Just see, wherever I am using sickle knife, circular knife, flag knife, it is all bleeding. How you prevent the bone bleeding in this case? Bleeding, I am using this adrenaline ball along with the bipolar, monopolar, as and when required. So now, Subtle elevator type का कुछ चाहिए, यही तो ना. Because this is a weight case, that's why it is bleeding. So, would you like to give temporalis fascia or some cartilage in this case? Cartilage I will put, definitely. Just you see the annulus, it is bleeding. तुम लोग को नहीं दिख रहा क्या? इतना ज़्यादा कर रहा है. नहीं ठीक है, ठीक है कुछ नहीं है.
क्लीन केस है ना, परफोरेशन उतना ही है, फैटिग का ऐसा कोई बात नहीं। Because it's bleeding, so I am using almost 360-degree flap. Okay. देखो आगे भी ब्लीड कर रहा है, जहाँ भी जा रहा है। हाँ। अरे प्रिपरेशन इतना अच्छा करो, अभी हम सर्कुलर लाइए। डबल डोर टेक्निक इसमें पूछे थे कि आप कैसे करेंगे। हाँ जैसे हम सुने हो जाएगा इसमें। इसको अपलोड किया डबल डोर टेक्निक साइज परफोरेशन। हाँ ठीक है। डायरेक्ट करना वो तो अनरेटेड वीडियो ना। नहीं अभी रुक गया। ब्लीडिंग जहाँ जहाँ से होगा ना उसके उसमें रुकना होगा। बॉडी को हार्ड कर रखते हो। फ्लैट। और क्या होता है एक बार आप डिसीजन तो ले लियो उससे। हेलो बॉस। हाँ। Can you use the cottonade green sock ball for right now, I will first lift the flap, then I will use either cautery or cottonade. Okay. हैंड पीस और है क्या तुम लोगों के पास? हैंड पीस लो ना। Everywhere it is bleeding. काम नहीं कर रहा अच्छा। दूसरा हैंड पीस लो ना। Abhishek boss, what is the update? So I've just removed the outer cortex. Can you see? This is the sinus plate. This is the sinus plate. Sigmoid sinus is lying underneath it. This is the sinodural angle. This is the tegmen plate. I'm just waiting for the handpiece to change because the handpiece is not working properly. Huh? Okay, boss. नहीं है। ये हट जाएगा ना, तो हम लोग डायथर्मी भी यूज कर सकते हैं। हाँ। बच्चे काम कर रहे थे 6 साल के। हैंड पीस तो रहना चाहिए ना इसका। हाँ। वैसे ही छोटा 6 बरस का लेकिन चल लाइए तो। सक्शन। हेलो समित बॉस। सक्शन हेलो डायथर्मी। समित बॉस हेलो। अरे सक्शन सक्शन पे ना। नहीं गया किसी तरह गया। हेलो, ये बोन पे कॉटरी चला रहा है बॉस। यूजिंग कॉटरी ओवर द बोन and if it happen in endoscopic ear surgery, I used to curate that places, 1 or 2 places, just rough curate to prevent the bleeding from bone. सतेंद्र बॉस। हाँ। गुड आफ्टरनून। बॉस थोड़ा मूड में आ गया अश्वनी बॉस, इसलिए गुड आफ्टरनून दोबारा बोल रहे हैं। अभी गुड आफ्टरनून नहीं किए थे, अभी गुड मॉर्निंग था। नहीं अभी हो गया, मेरा काम तो कुछ कुछ अच्छा हो गया है, बट आई वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम बिगिनिंग। Have you given circumferential incision almost? I think. No, 3 o'clock to 12 o'clock. This is 3. But it is not required because the anterior half of the tympanic membrane is there. So I will put graft. The use of keeping that area, is there any additional benefit? This one. This one, that 3 to 11, you have not lifted, you have not given the incision. What is the benefit of that? So I have given. Just see. 3 to 11 o'clock. I am talking about 3. Almost 3 to 11 नहीं कर सकते हैं. Actually, it is 11 to 1 o'clock. 11 to 1. Abhishek boss. Yes. Hello. Boss. So you can see I'm just lifting the cholesteatoma sac. Yes, sac. It's a huge sac. This is the attic area. And I'm just close to the anterior epitympanum.
I'm just trying to elevate the cholesteatoma sac of the Very attic. good dissection, Abhishek. Very good. This is You the are sac. elevating the cholestoma sac with. Remove that one chunk. Na. There is no need to take out complete sac. No, no, I will just one remove out, boss. Just let me try to have it in intact, actually. If it is hindering your process, better to use I excise. will do, boss. I will do it. Knife. ये ले लेते हैं ना क्या हुआ 2 मिनट Dr. Aswini. Yes, sir. Ji. Just see, I am harvesting the cartilage from here. Yes, boss. So, what's your plan? Are you going to take the This is the granulation polyp. Boss, can you see? cartilage from the? This is the granulation polyp. Yes, yes, you can see that, boss. Yeah. This is the Pulling the granulation polyp. polyp. Yes, you can see that the polyp. Yeah, so adrenaline cotton, yes. Mm-hmm. You can see there is a fistula here in the anterior part of the semicircular canal. You can see there. See this. Anterior semicircular canal fistula is there. Can you see? Yes, sir, we can see the fistula. Yeah. And this is the facial nerve. You see? This is the horizontal part of the facial nerve. Okay. This is dehiscent. Yes. This is dehiscent. The sac is actually adhered to the facial nerve. Distance of the nerve. See the facial nerve. Yes, 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 yes. See the facial nerve. Okay. Yes. So I'm just trying to elevate the sac of the facial nerve. Why don't you remove that small big part the side? It will be very easy to manipulate the thing. I am just preserving because of this polyp. If I cut this polyp, it will start bleeding actually, and this will. No, it will not bleed, dear. You cut it, it will be easier to do it. We are already gone. Now it will be very easy to manipulate the things. Okay, तो scissor लाओ तो. पूरा polyp बचा हुआ अंदर सर. ये तो पूरा polyp है. Scissor लाओ. I will go by Dr. Ashwini sir's advice and I will cut the polyp. It will make your life easy. This is also having the chorda intact. Here I am just cutting the chorda. I usually cut it and get rid of that. I am going superficial. Can you see the bleeding started? That is why I was trying to preserve the. Just put a small piece of gel foam or soaked in. Adrenaline cotton. Give me adrenaline cotton. So, are you Satyendra boss? Yes. Are you taking cartilage? Yes, I have taken cartilage. This one. From where? I will. This is conchal cartilage. Conchal cartilage, which concha? This is cavum concha, or that is another one called Simba concha. Simba concha. Simba concha. This side you can see here. This is the cartilage. Concha cavum. Because he has approached from the posterior. Yes. So I'm now just see. Ball point to single layer it will be closed. No nerve. Cartilage will be exposed. So chances of perichondritis will be almost nil. Now, cartilage tympanoplasty he will put in the anterior, one in the inferior and one in the posterior. Three cartilage technique developed by Dr. Satyendra Sharma sir. Is it okay, sir? No, this is not palisade. Probably some invention like Ahilya Swami. Unless what you is will do it, who will remember you? Technique which you are popularizing. What is the science behind that? Now, in this case, I will put only 2 pieces. Okay. Let me have 3 pieces. The bleeding is reduced, Abhishek boss. I'll just wait for some time actually. This will take some time. Just take 2 minutes. Take 2 minutes, Abhishek. Yeah, I'm waiting, sir. No worries. The biggest problem for the surgeon is to wait. 2 minutes will be appearing like 2 hours. Yes, 3 cartilage. 3 cartilage. SP Sharma technique. SP वर्मा नहीं हो सकता है. नहीं वर्मा तो भी बाहर है सर. एक बार
एक पेशेंट आया ओपीडी में खोजते हुए, बोले कि अंग्रेजी में बोलिए ना सर, थोड़ा हम लोग का इंग्लिश इंप्रूव करेगा। अरे वो अंग्रेजी में बोलने लायक नहीं है। पेशेंट बोला क्या कि हमको डॉक्टर मनोज शर्मा से मिलना है। तो हम बोले ना कि सत्येंद्र, या तो तुम दो बात कर लो, सत्येंद्र शर्मा बोलो नहीं तो मनोज वर्मा बोलो। तो दोनों को नाम को मिला दिया था। उसी तरह से तुम्हारा टेक्निक जो है सो हम लोग वैसे ही मिला देंगे। सर्जरी नहीं करवाना है क्या हमसे? नहीं, अब नहीं लेंगे। अरे तुम कोल्ड ड्रिंक अभी तक नहीं लाया? अरे यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाओगे जी? इतना नाजायज करोगे वेजिटेरियन के साथ? नन अल्कोहलिक दारू नहीं पीते लोग, गड़बड़ आदमी है क्या? कोक ले, कोक ले। आपने ज्यादा हो जाएगा यार, पहले का तो 60 में था। फ्लैग नहीं देने को हमारा ब्लीडिंग क्या कहता है? सिगरेट हम छोड़ने में, सिगरेट हम पीते थे जैसे लोग, जैसे लोग फ्रेंड्स के साथ होते हैं, अकेले सिगरेट नहीं पीते, अकेले सिगरेट नहीं पीते। 4-5 महीना हो गया। इसको सिस्टर मांगेंगे तो दीजिए। ग्राफ सूख गया है, हटा लीजिए। हमको अब सिकल खाली चाहिए और हटा लीजिए। एड्रेनालिन कॉटन देना तो उसको हटाइए, हटा लीजिए, तो हाथ में सड़ जाएगा। Abhishek? Yes. Abhishek, what's your plan for this big cavity? Will you like to obliterate? Yes, I'm planning to obliterate it. But first I will target to remove all bit of disease from the middle ear. Okay, get rid of all the disease. I'll just get rid of the disease, and I'll just after that I will plan for obliteration of this cavity. सुखा के ग्राफ दे दीजिए। 4 बज गया। इसके बाद I will be myself the surgeon and audience both. हाँ आ गया अंदर, ये फैक्चर नर्व के ऊपर से ना, देख यहाँ पे आया हुआ। सक्शन थोड़ा सा कम करा दीजिए। वाइडन करना होगा थोड़ा सा, वो टाइम ग्राफ देना। नहीं हो काटोगे तो चलेगा, वो नहीं कट नहीं बनाओगे तो चलेगा। सक्शन थोड़ा और कम चाहिए। यहाँ दिख नहीं रहा। यहाँ है। अभी डाले नहीं, अब डालें। ठीक है, इतने चाहिए। अब हमको सबसे एक तो जेल फॉर्म दे दीजिए। एक दो पीस जेल फॉर्म ले, नहीं है कटर।
दोनों को करो ना, दोनों को छोटा छोटा करके कोने में डाल दो। दोनों को छोटा करो, छोटा करोगे ना, छोटा में तो पिक्चर बहुत शार्प हो जाएगा और उसका सब सही होगा। कॉर्डन है, कॉर्डन यहाँ पर है, ये स्टेपीज का ये है पोस्टीरियर पार्ट है। 2-3 पीस चाहिए। हाँ ना, ये फेशियल नर्व पूरा डेहिशन, ये फेशियल में ये स्टेपीज है, स्टेपीज है, ये फेशियल नर्व है। दिक्कत नहीं हो रहा हमको। कर्व नीडल रखी है क्या, छोटा कर्व नीडल? इसको हटा दो, सेक्शन बदल दो, पतला सेक्शन दो, पतला सेक्शन दो। हाँ कोई नहीं जाने दो, कॉटन दो हमको, डायमंड ड्रिल लगाना होगा इसमें। हाँ हेलो, 3 cartilage. Yes. 3 cartilage going. That is called 3-piece surgery. Just like 3-piece suit. It is going. A smart people always appear in 3-piece in every occasion. Just like it is. Abhishek boss, I think you removed the whole that polyp has been removed fully. Yes, I have removed the polyp. Just for revision, I will just show you. See the round window here, okay? I'll just drill out some more and show you the round window more nicely. This is the remnant of the stapes. This is the fistula on the upper part of the. In fact, this is the lateral semicircular canal which is going down. Okay. This is the facial nerve horizontal part. 3 piece. This is the anterior crus of the facial nerve, superior semicircular canal. Okay. This is the tubal opening. Okay. The mucosa near the tubal opening is healthy. The posterior part was having the polyp oil changes, so I have excised the polyp from the promontory. This is the remnant part of the stapes. लगा करके बोला जो ऐसे अभी दे रही थी ना वैसे। Just elevating the flap anteriorly so as to make round ear one circular knife. नहीं यहाँ पे है आगे, अगर आप प्राइवेट पुश किए ना कर दिया। Abhishek boss. Yes, yes. Abhishek boss, kindly reorient everybody here. Okay. एक बार. Let me zoom out. Let me zoom out. Rakesh Nayan boss has some questions, so kindly reorient him. Okay. Just for the sake of people who want a reorientation, we have drilled out the outer mastoid cortex. What is that depression just near to your circular knife? Just superior. Yes. This is the fistula in the anterior, in the superior semicircular canal. This one. Okay. This is the facial nerve. This is the horizontal part of the facial nerve which is dehiscent. This one. Posterior canal or lateral semicircular canal. Okay. This one is the lateral semicircular canal. This one is the lateral semicircular canal. Okay, I think orientation is not good. I think picture is not. Higher magnification. You want a higher magnification? Of the picture is not. नहीं सर, और वो हो गया और Which is superior? Just और नीचे चले जाइए show me superior, inferior, all the walls. This is the superior part. This is the superior part. This is the tegmen plate. Okay. Okay. This is the sinus plate. Okay, sinus plate. Agree. Okay. This is the mastoid tip. Okay. This is the external auditory canal. This is the lower part of the external auditory canal. This is the attic area. This is the protympanum. Actually, tubotympanic opening. Okay. This is the posterior mesotympanum. Okay. Okay.
This is the facial nerve. Dehiscent facial nerve. This is the stapes foot plate, which are with a part of posterior crura. Okay. And the polypoidal mass was arising from the promontory, which I have excised from this side. Okay. And I have elevated the flap from the anterior part also. Okay. Can you get it? Okay, yes, sir, I agree. So now we will be going for a reconstruction and obliteration of this cavity. Okay. This is the remnant chorda. It is giving me an idea of where the facial nerve is lying. Okay. और कुछ एलर्सेटिस टाइप का चीज होगा और पेन किलर पे डाल बाद में इसको ग्लेबम पे डाल ठीक है डेफ्लाजा को है तो दे दो तो 10 दिन 6 मिलीग्राम वंस डेली हैं वही दे दो क्योंकि वेट ईयर है और हमने एंड्रम खोला भी नहीं है ब्लीड तो बहुत कर रहा था शुरू में बाद में ठीक हो गया Abhishek boss, हाँ what was the audiogram reading? What was the loss in the ear? It was a mixed hearing loss, which was moderately severe, going up to 90 decibel actually. Moderately severe mixed hearing loss. Mixed hearing loss, yes. 70 कितना? 90. 90. 90 डेसिबल का लॉस था, 90 का मिक्स हियरिंग लॉस था, 90 का मिक्स 90 मिक्स का रिजल्ट हम दिखा चुके हैं 90 मिक्स हियरिंग लॉस होगा तो वो से कंडक्टिव पार्ट तो वापस आ जाएगा लेकिन ऐसा अगर पिछला होगा वो पिछला पानी देना ना थोड़ा पिछला ब्लैक यार इज इट यस सर बड़ा सा कोलेस्ट्रोमा भी है बस हेलो अभिषेक हाँ यस अभिषेक डॉक्टर राकेश नैन हैज given some input. Please listen. Dr. Abhishek. Yes. You are saying there is fistula over a semicircular canal. You can see it. I am not saying it. You can see it. See? Can you see it? I am just raising the magnification. See it? This is the facial nerve. And this fistula is going deep to the facial nerve. And endothelium is intact or... yes, endothelium is no. It was totally dehiscent like this. Sac was going inside this fistula. I am having doubt about the pure tone audiometry finding. It should be a dead ear in fact. Yes. That was my question. Yeah. It should be a dead ear, and because of the fistula, I was very carefully elevating it, and I saw the sac going inside this fistula. Yes. If fistula is this big, there will never be any hearing. Yeah. I totally agree with you. That was the question of Rakesh boss. And yes, I totally agree with you. You clear your doubt. It should be a dead ear. You clear our doubts. Thank you very much. तो पहले 50 डिस्काउंट हो रहा है सर ठीक से कर रहे हैं ना? Zahid sir is here. Yeah. Sir, I'm going nicely though. Or you want any suggestions? No, you are doing perfectly fine. The section is very fast and very clear. बात करना भी चाहिए
ये तो राउंड विंडो इसको पूरा और अच्छा से एक्सपोज करते हैं। वो बच्चा आ जाए नया सब चलता रहेगा सर, सब पियानो So, Dr. Harsh, are you there? Yes, sir. Hello. Can you hear us, sir? Hello, check boss. Hello. Abhishek boss. Yeah, Munka sir is speak to Munka sir. He's here. Just. I am very eager to talk to him actually. Yeah, Abhishek, go ahead. Okay. Yeah. Should I repeat the finding, or you have any queries regarding the surgery, or should I start closing the surgery? No, go ahead, Abhishek. Go ahead. Okay. You are doing fine, just excellent. Go ahead. So my planning now is I will just obliterate this fistula. Okay. Yeah. Obliterate this fistula and do a temporalis fascia graft so as to get a dry ear, and I will obliterate this part of the cavity with a musculoperiosteal flap. Okay. Great. Will you like to fill the cavity also? Yeah, I will try to fill the cavity with the musculoperiosteal flap from being harvested from posterior aspect. Okay. So I have completed my bone work. I have completed my middle ear work. But since there is a fistula, there is no role of doing any ossicloplasty in this case. So I will harvest a big temporalis fascia and obliterate this fistula with a musculoperiosteal flap, and also obliterate this one with a pedicled musculoperiosteal flap. Okay. In the fistula, before putting the muscular flap graft, you must put the temporalis fascia as well. Actually, this is a dead ear. There is no doubt. So then whatever you put temporalis fascia or this inner ear is not going to regenerate actually. And sorry, I joined late. Pre-operative, there is no vertigo? No, there was no vertigo. Okay, there was no vertigo in this case. Only the thing was the patient was not hearing in this ear. Okay, and perfect. Pre-operative audiogram was such that it was misleading. It was giving a mixed ear type of hearing loss. But with this big type of fistula, you cannot have a conductive hearing loss. It should always always be a sensory neural hearing loss. Here the message is, for obliteration of the cavity, it is always better to have the local flap. That is the musculocular. I don't use bone patties and all that thing. Never. I also don't advocate. Very good. Go ahead. Alice for then. सर कैविटी क्या कुछ ये रिट्रैक्टर लो ना इसको ना यहाँ पे पकड़ के उठाना होगा इसको नुकसान है देना होगा मीटिंग कर रहे थे आप वहाँ बैठे थे, हम यहाँ पे देखते हैं ये तो मेरा ही है ना। हाँ ठीक है ये ज्यादा सबको खबर बता आपको सुन रहा है एक्चुअली कावेरी से बात कर रहे थे। कावेरी को नहीं डिनर नहीं, कावेरी से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इसको ब्रीफ करेंगे मीटिंग। बॉस हाँ अभिषेक बॉस अभी क्या कर रहे हैं? अभी ग्राफ्ट उठा रहे हैं। ठीक है बॉस, ग्राफ्ट निकाल रहे हैं। बीच में कर दीजिए बॉस, थोड़ा सा लैटरल इमेज को बीच में कीजिए बॉस। अभी दिख रहा है? हाँ अब आ रहा है बॉस। सर मैं डायरेक्टली देख के कर रहे थे इसीलिए अब
कैटरिंग तो यही ना करेगा, बाकी तो फिर कंपनी वाला आपको करेगा क्या फार्मास्यूटिकल हाउस का बैनर लगेगा, लेकिन खिलाएगा तो यही ना। इसको साउंड तो करना ना पड़ेगा कि सब तुमको करना है, क्या कि इसको भी तो जुगाड़ करना है, जुगाड़ करना होगा। प्लस उसको बोलना था कि आप बर्तन अपना नया मंगाइएगा, सब खाने का प्लेट नया होना चाहिए एज पर कोविड रूल्स। क्या कि जो भी तुम थाली पाली दोगे सब नया होना चाहिए, बाद में तुम अपना सब प्लेट करते रहना पार्टी शार्टी में। गिलास नया होना चाहिए, प्लेट नया होना चाहिए, स्पून नया, फोर्क नया, सब नया होना चाहिए। ऑल यू सैंपल मंगा लेना, हाँ देखेंगे कि अरे मीटिंग में डिस्प्ले होगा, फिर अगला मीटिंग में बुलवाएंगे कि सैंपल मंगवा लेना। नहीं जरूर में कहीं जाना पड़ता है, सबके पास एक दर्जन रहेगा, किसी का ग्लास कॉन्फ्रेंस में बधाई है। उसका जरूरत नहीं, बहुत प्रोफेशनल आदमी को बहुत अलग अलग तरीका होता है सिस्टर। एक नोटिस आएगा ना, घड़ा मुर्दा उखाड़ेगा। हम लोग और कौन कबाड़ सकते हैं? इनकम टैक्स वालों को कबाड़ सकते आएगा ही। देखना तो मेरा है हमको पता नहीं क्या मेंबर होता, हम गए ही नहीं। तो वो पैसा हम खाते को उड़ा, पैसा उड़ाओगे। हाँ, आप इस एज में कितना उड़ाइए? अभी बेटा मेरा बोलता है पापा टिकट करो, तुम टिकट नहीं करोगे। नहीं तुम आजकल बदल गया है, बात के बाद तू बदल गया है। मैं तो साफ बोलता हूँ, देखो मैं पीछे से नहीं बोलता हूँ। एक राकेश जो है कुछ भी होता था, आज इसको आना है। फर्स्ट यूज्ड टू बी द फर्स्ट। आजकल हम थोड़ा सा चिप पड़ा है। हॉरिजॉन्टल फेशियल नर्व के पीछे है वो। थैंक यू बस हम दिखाते हैं बस एक मिनट दिखाते हैं। कोई वाला ग्राफ एक बार ठीक कर देना, हटा देना। बहुत मुश्किल है। बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग का नाम बाई चांस है तो वोटिंग राइट है क्या? बॉल पॉइंट लाना ना, बॉल पॉइंट दो। बता देना अगला बार से हम। ये देखिए यहाँ पे ये फेशियल नर्व है, ये सेकंड जेनु, ठीक है ना। ये सेकंड जेनु, ये स्टेपीज है, यहाँ पे फेशियल है। नहीं लैटरल तो कैनाल ये हुआ ना सर, ये लैटरल कैनाल हुआ, ये लैटरल कैनाल है। ये सुपीरियर कैनाल ऐसे जाके यहाँ मिलता है ना, ओवल विंडो ये प्रोमोन्ट्री है आपका, और यहाँ नीचे राउंड विंडो, ये वाला ये राउंड विंडो है। नहीं है, देखो ना अच्छा से दिखाते हैं। देखो जब वाला जो है ना, सुनो जब आइए कभी भी आइए। नहीं सैक नहीं है, सैक नहीं। देखो सैक नहीं है इसमें। ये फेशियल है, ये फेशियल नर्व है इसका। ये सेकंड जेनु है, देखिए ये आपका लैटरल कैनाल होगा, ये लैटरल कैनाल होगा। यहाँ प्लिस्टर ट्यूमर नहीं है कहीं पर भी। सिर्फ बोन है, देखो ना, बोन है विथ एंडोथेलियम और कुछ नहीं। कुछ लेके आते हैं, थोड़ा ही लिया जाए लेकिन लिया जाए। ये तुम्हारा एंटीरियर क्रॉस है, तुम्हारा सुपीरियर सेबल कर देगा, है ना, ये वाला पार्ट। देख रहे हो, ये देखो पूरे ऐसे जा रहा है। बोलो ना ज्वाइन कर लेंगे। अभिषेक या कोई ज्वाइन किया हुआ था उसमें। और क्या हाल है? बैठ खाना ले आए। हाँ तुम्हारा मनी सेम मिलेगा नहीं, 3 बजे नाउ गोइंग टू बी मसल लेंगे, थोड़ा सा रिट्रैक्टर लगाओ तो।
बॉस, हाँ अभिषेक बॉस, हाँ हाँ, एक बार फिर से ओरिएंट कीजिए बॉस। फिर से करें? हाँ पूरा बताइए। ग्राफ ले लिया ना? ग्राफ ले लिए हैं, बॉल पॉइंट देना तो ठीक है। ये देखिए, ये सुपीरियर पार्ट है। हाँ अच्छा ठीक सर, ओके एक्सेप्टेड। ये टेगमेन है, ठीक है। ये साइनस प्लेट है, ठीक है। ये फेशियल नर्व है डेहिसेंट, सेकेंड वेनु तक, इसके बाद बोनी कैनाल में, ठीक है। ठीक है सर। ये आपका ट्यूबल ओपनिंग है, ठीक है। बॉल पॉइंट पूरा अंदर जा रहा है, ठीक है। ये आपका राउंड विंडो है। ओके बॉस। ये स्टेपीज है आपका। ओके बॉस। ठीक है। ये आपका पोस्टीरियर क्रस्ट का रेमिनेंट है यहाँ पे। ओके ओके, ये हाइपोटिम्पैनम है। ओके बॉस। ये साइनोड्यूरल एंगल है। हम लोग ग्राफ निकाल लिए हैं, ठीक है बॉस। बॉस और नाउ विल स्टार्ट क्लोजिंग दिस। मतलब आप ऑब्लिटरेट कीजिएगा उसको बॉस। हाँ करते हैं। ब्यूटीफुल डिसेक्शन बॉस, बहुत क्लीन डिसेक्शन। पेशेंट के लिए अच्छा होगा ना। यहाँ से मसल एंड पेरियोस्टियम हम लोग हार्वेस्ट करेंगे फॉर ऑब्लिटरेशन ऑफ दैट डिफेक्ट एक्चुअली। हाँ एक्सीलेंट बॉस। द कोलेस्टियोटोमा वाज ह्यूज, बड़ा सा सैक था बॉस इसका। सरप्राइज केस है सब। रखे थे इसको। Anyway, we were expecting it. अपने फादर का रेफरेंस देके जो भी किया दैट इज ऑल, बट अगेन इसको रखो, लाइन में डालो ना। बोल रहे हैं लड़का कम हो जाएगा एज ए प्रोफेसर। ये चुस्त बहुत ही सब नहीं है मेरे क्या मतलब हम नहीं हमको न बुलाया तो हम आए। ये वाला जो दिए थे तुमको सलाइन में वाला देना, तो एक सेक्शन में देना। नहीं आ रहा इसी साइज का छोटा सेक्शन दो ना। नहीं ब्लेड नहीं फेंक रहा। आप बहुत अच्छा एनेस्थीसिया दिए बस। यार वोट दो और नाम नहीं ना, सही बात है। दिए थे तुमको बॉल पॉइंट देना ना। वो जो मसल दिए थे तुमको देना ना। हाँ मसल डालो। चलो प्रकाश पता नहीं कहाँ किधर बोली से बात नहीं हुआ। हाँ बॉस एकदम कंफर्टेबल। बॉस ये मसल डाल रहे हैं ना बॉस आप? फिस्टुला को क्लोज कर रहे हैं ना बॉस? ये क्लोजिंग द फिस्टुला, ऑब्लिटरेटिंग इट। उसकी वाइफ का डेथ डेड ईयर प्रकाश कोविड से उसकी वाइफ का डेथ हुआ था ना। बहुत देर से बैठे रहते थे, देखे थे। सेकंड वेव हमको मालूम ना बिजनेस बहुत लेट किया। कोई लोन नहीं। काटना पड़ेगा, लाइक करेगा कि नहीं करेगा तो ये देना तो व्हाट्सएप पे नहीं डालेगा। नहीं लग रहा सीजर्स लाना, माइक्रो सीजर्स लाना। Will you put anything above that muscle also, boss? Yeah, I will put temporary fascia actually.
क्या? टेम्पोरलिस फाशा उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है बॉस। प्रकाश का कैरेक्टर तो शक्ति कैरेक्टर का हाँ सर, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ठीक है। उसका डाउट ये बोलना किसी को कि उठा ले जाए। No, in superior semicircular canal, I think. Yeah. ये देखिए नहीं, हॉरिजॉन्टल फेशियल नर्व है ये सर। सर को दो ना, सर को दो। No, vestibule will be here. मेरे लेके आओ। दूसरे साथ Going far deep actually. एक सेकंड सर, एक सेकंड। फ्लाइट भी है वो तो पहले जो देखिए, अगर सेम वेन्यू से ऑल इंडिया में भी हो और सभी को बोले हैं कि दो देखिए ना, हाँ ये तो खत्म है। इनफैक्ट ये जो एंटीरियर जो क्रस है ना उसका, वो जाके वेस्टिब्यूल में नीचे से कम्युनिकेट कर रहा है। वही नो, आई हैव नॉट ओपनड इट, इट गॉन, द सैक वाज गोइंग इनसाइड। पूरे दुनिया में ना कि उसका और मारुति का सक्सेस का वहां का मेडिका में करके आप पूरा क्या मारुति का संभालते हैं सर पुनीत पोद्दार। मेडिका को समित लाल इसलिए प्रेफर कर रहा है प्रेम पोद्दार के बेटा नहीं, क्योंकि विजय में इसका कोई इन्वॉल्व कर रहा है इसलिए क्रिटिकल केयर इंटेंसिव तो कल आया थे और वेरी क्लोज। लेकिन राकेश बॉस अच्छा डिसेक्शन था ये, डिसेक्शन बढ़िया हुआ ये। हाँ, कोई ना पहले ही इसको ना कोई पोस्ट ऑरल इसको हुआ होगा एब्सेस जैसा, कोई चीरा मार के छोड़ दिया। वो कोई जनरल सर्जन या कोई कर दिया होगा अप्रेंटिस। उसको भी देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है। अभी भी तो मेरा हाँ ज्ञानू जाओगे क्या दिक्कत मेरे जिया जी के लंगोटिया ज्ञानू जलान से बीजेपी के सबसे बड़े आर्टिस्ट के फाइनेंस ज्ञानू जलान बेटा भानु जलान बाद में हाँ हम तीन जगह प्रेफर लास्ट टाइम जो गया वाले थे ना जो कड़ा वाला बात तुम्हारा जो कॉलेज राकेश बॉस बोले क्या मालूम राकेश बॉस चिकन लीजिएगा, चिकन लीजिए ना, प्लेट ले लीजिए ना, हम ले लिए हम प्लेट ले ली। अभिषेक बॉस, जाहिद बॉस वांट्स टू स्पीक टू यू। हाँ बात करें। Yeah, very good Abhishek, you have done it quite nicely and very fast. I am impressed with the dissection. Thank you so much sir, thank you. बहुत मजा लगता है। अभी डॉक्टर कम्युनिटी बाई एंड लार्ज मेडिका से घिरा हुआ है। कारण जानते हैं, पटना के प्रभात का जो डेथ हुआ कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिका उसका पैसा नहीं दिया। पहले तो रिफ्यूज कर दिया, जब पटना के सारे डॉक्टर बाइकाट किए ज्यादा करके अब लोग तब दिया है, वो पूरा अमाउंट नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसलिए बिहार का डॉक्टर को बहुत खफा है मेडिकल। बहुत ये अपनी डॉक्टर है। बस एक काम करना है कि बड़ा सा एग्जाम फाड़ के देना तो बड़ा सा एग्जाम देना।
अभी टीम क्या है? बहुत बढ़िया। आप उसका चिंता नहीं कीजिए। जब पुरानी कोई अगर दाएं बाएं भी चली गई होगी तो हम बैठा देंगे ना। हेलो। हाँ हेलो। गाड़ी सिस्टम नहीं बहुत आराम से हो जाएगा। पेशेंट रिवर्स हो गया है। ये देना तो ब्लेड दो ना, ब्लेड 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 कुछ दो, पेशेंट हिल रहा है। So I'm doing concomitoplasty. Dr. Harsh? Go ahead, boss. Go ahead. Myatoplasty, you're doing myatoplasty. हमारे यहाँ सर्जरी में हम लोग लल्लू बोलते हैं। ओपी अग्रवाल पटना से एमएस किए थे, हमेशा किया रहो। फॉर्सेस देना तो बहुत दिन हुआ, क्या देखते रहिएगा। हाँ। Abhishek boss, what is your plan for the external? You took a big incision, removed the scar. So what is the plan for closure? This will close. This will close. There will be no problem. You just see. I'm just going to close it. बॉस को भी बोलते हैं कि छोड़िए, अभी आगे आपको मुसीबत काटता नहीं है। बहुत साल पैसा के पास कहाँ की एंजॉय करिए, रात में जा रहे हैं, जाने का क्या हो गया टेंशन में। आइए ला तो कान पकड़ो। जो पेशेंट आप हैं वो आपके पास ही आए। आर्टरी से पकड़ लेना इसको ना। ऐसा है ना सर, देखिए कहीं जाकर 45 चाय का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुनो यार, हम भी अब नौकरी में नहीं है, हम भी नौकरी में नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सर पैसा मिला ना, बहुत अच्छे वाला। तुमको कब मिला है? तुमको मिला उतना तुम साल में महीना में। यस, ऊपर से और ऊपर से। कुछ नहीं है, खाली एक हर चीज नहीं जाता है। आप उधर वाला रिटर्न दिखाते हैं, इधर जो कमाते हैं कुछ नहीं दिखाते। रिटर्न में जाएगा तो सब कहाँ से कुछ नहीं ले पाए, पूरा शो कर दीजिए। हम तो देते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। वो तो कहीं दिक्कत नहीं ना, करे थे अकाउंट खोल रहा, उसी तो सबका पेमेंट करो, क्या दिक्कत है? वो हम हमारा खर्चा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है जानते हो कि जब साल में जैसे कंपनी का तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा 1.5 करोड़ तो वाइफ हॉस्पिटल में बांट देते हैं। 25% मिनिमम तुमको लगभग एवरेज निकालो तो 25-26% लग जाता है। 30% लाभ हुआ है, जगह 10 लाख वाला नहीं बचा, जो 10 का 7.5 तो तुम्हारा 27% बना। बहुत अच्छा किया सर। गोरखपुर अकेला नहीं हो गया,
गुरु जी से भी बढ़िया कर दिए, गुरु जी से बढ़िया कर दिए, गुरु गुरु चेला चीनी हो गया है। मेरा लाए वो सर्कुलर जो लिए थे वो जी, उसी के लिए फोन कर रहे थे 10 बार आपको। So you're closing it, Abhishek boss, right now? Yeah. I'm just going in a layer. Yeah, closing it in layers. So Abhishek boss, any idea about the next case? Next case is the tympanoplasty of this same patient on the other ear. Okay, that will be done by Dr. Rakesh. So you're closing it now? Yeah, I'm just closing it. हम इसीलिए नहीं देते। हाँ, दुए में मेरे पास वही है वो 90 डिग्री वाला। Boss, excellent dissection, very fast dissection boss. असल में हैंड पीस हमारा चॉइस थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा और टाइम लग गया, नहीं तो और जल्दी हो जाता है। नहीं अच्छा boss, अच्छा हुआ. So what is the next case in OT? Any idea, boss? Tympanoplasty of the same patient being done by Dr. Rakesh. अच्छा. मत काटो. Tympanoplasty. Dr. Rakesh Ranjan. बचा नहीं कुछ. रांची वाले राकेश. हाँ. Boss, Rakesh, are you doing it, no? Yeah. Okay. The other side. Yeah. मत काटो, इसको आर्टरी से पकड़ो. हेलो. बहुत एफिशिएंट है ये सब चीज. हम लोग आप लोग को नाम. Hello. Hello. Yes. I am Dr. Ashwini here. Hello. Are you with me? Yes, sir. Dr. Harsh here and okay. Satindra sir, everybody is here, sir. I think it was a difficult case, but I think now it's a very simple case, going to a very simple case, because patient has got sensory neural hearing loss. And earlier, some days back, audiology was huge conductive loss, but presently it is total hearing loss. There is no hearing at all. So let's see what is there. Okay. मालूम है सरफेस ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वाई कैसे पकड़ के रखना टाइट कर. जब ये है धीरे पोछे छोटा सा खींच के ट्रैक्शन देके रखना है. ताकि स्क्रीन वहाँ से काटे ना हम लोग तो. यहाँ टूथपिक एक्स्ट्रा मंगा के रखे थे 2-4 गो. Abhishek boss. हाँ. Post-operative audiological evaluation is very important in this case. Yeah. बड़ा सीधा मारने नहीं करते, छोटा से छोटा 1 2 3. वो मारने का आर्ट आपने नहीं. 1 2 3 that's all. And one डेवलप भी नहीं किए. Okay. इसमें है आज नहीं है तो 2-3 mm cutting and 1 and 2 mm damage. That's all. 9. This is diameter. Okay, let's see what happens. Okay. 1 mm है diamond. I think there will be नीचे वाला diamond है. ये diamond है, ये diamond है, नहीं cutting. यहाँ पे एक बाइट लेकर नॉट बांधेंगे ना. जो भी है. इनको काटना होगा. 1 2 3 रखो, उतने में काम हो जाएगा. ठीक 2 mm कर देंगे. खोलना मत, 2 mm खोलना मत. 1 3 खोलना. 3 मत खोलो. 3 में खाली खोल दो. 3 में इसको मत खोलो. 3 में कटिंग दो. पहले एक ही लोड करो. हेलो ओटी. हाँ जी बोलो. हेलो ओटी. हाँ हेलो. Ashwini sir, can we join you? Yes. Hello. Hello, Ashwini sir. Yes. Hello. Are you with me? Yes, I can hear you. Okay. Patient is being dragged. Right now, patient dragging is going on. Anesthesia has been patient already been induced.
दूसरा ओटी में शिफ्ट करिए, दूसरा ओटी में शिफ्ट कर दीजिए कैमरा। सेकंड ओटी का पिक्चर मंगवाइए। जिसमें आप काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। वॉश कहाँ करना है? वेयर टू वॉश? नहीं, वॉश का हैंड वॉश, हैंड वॉश। ओह, दाबने वाला है। Hello, Dr. Aswani. Yes, sir. I am here for you. Okay, thank you very much, boss, for supporting me from such a long distance. यूज करके देखो, दूसरा एंडोस्कोप करते हो, लेकिन जब माइक्रोस्कोप करते हो, तुम एक बार देखो। Have you completed your pack, Satendra boss? No, it's a contraindicated. For what? Are you on Metrogyl? Are you on metronidazole? खोल दो। 3 अक्टूबर। निकाल दो। Take your first dose, not pack. Take your first dose. पकड़ो। So that we can give you second dose immediately. Good afternoon, Ashwini sir. We are live on Zoom also, sir. So every conversation is going in Zoom. कैसे पकड़ो? आर्टरी से निकालो, पकड़ो आर्टरी से। एक और आर्टरी लो, इसे पकड़ो। पकड़ो, निकालो, निकालो। Abhishek boss. Yeah. So the next case will be the same patient. The other ear will be for type 1 tympanoplasty will be done in the other ear. Not exactly type 1, I will say. That ear is also having a good hearing loss, but that is pure conductive actually. So, it is not going to be a pure type 1 tympanoplasty in this case. Boss. I can predict that. Okay. I think Rakesh boss is all ready. He's keeping his gears tight. Yes, Foot on he's the on. clutch and next foot on the accelerator. He's all fidgety and walking behind you. I can see him. He loves to operate ears like me. 7:30. बॉस, सनी बॉस। हाँ, yes sir. ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, उसको जरा हम बोल रहे हैं आपसे, जरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। Sure, dear. एक्चुअली है क्या कि अगर टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर छोटा सा इंसिजन लेके ग्राफ्ट उठा रहे हैं, तो इतना बिग इंसिजन जो पीछे पोस्ट ओरल देते हैं माइक्रोस्कोपिक में, वो पेशेंट के अगेंस्ट जाता है कि नहीं? व्हाई टू गिव दिस मच ऑफ बिग इंसिजन? Actually, once the incision is not visible, है ना, it is all about, you're talking about cosmesis, है ना. So it is entirely a different thing how patient will react. Suppose I am giving a small endoral incision and patient is not accepting that very small incision, then it is better to give bigger incision in the postoral area that is not visible. No, my question is that if endoscopic ear surgery is giving the same result, even better result, so why to give post-oral incision during macroscopic surgery? Actually, Sanjeev, if you go through the literatures and day-to-day practice and experience, what happens that is result of the tympanoplasty doesn't depend on your approach. Either you are doing endoscopic, endometal, permetal, post-oral, end-oral, there are different approaches. But one saying is that if any problem has got multiple solutions, any problem even in your lab, our life, even a surgical procedure, we should stick to the simplest procedure. No doubt, endoscopic approach, just like endometal, permetal incision, these will give minimal injury, so that will certainly give better results than anything. No doubt about it. So endoscopic ear surgery can give better results if
We manage the 12 में निकल गए थे हम properly. If you are operating, if you are doing endoscopic surgery, per metal surgery, actually endoscopic surgery or per metal surgery don't make any big difference in results. So how actually external aortic canal flap is our lifeline. How you manage it, it will depend on that. alive, very much alive. अभिषेक प्लीज आप अपना माइक को म्यूट कर लेंगे Okay. because both from both OT this now okay हाँ boss yes So result of the surgery doesn't depend on our approach. Now I have started retrohelical endoral approach. There is no visual scar, almost there is no visual scar. We will hardly see half centimeter of the scar. But result is not different from... We should always work for betterment of patient. If the patient is getting a smaller incision for the same result, why not choose that one? Yes, endoscopic, I am not saying that endoscopic result is not good. Endoscopic approach is very good technique, but we should be very... And sir, what about transcanal? Transcanal approach... Even in transcanal, there is no scar. Transcanal approach, there is no scar, but in a lot of cases, you cannot see the anterior canal. The fact then you become blind. माइक को नजदीक कर लीजिए बॉस आपका माइक आवाज कम आ रहा है Put some spirit here. And please have a view of second OT please. So result Dr. Soni sir is working. So just audio visual please. Just get off this think that I am an endoscopic surgeon, his post-oral surgeon are bad, endoscopic ear surgeon are good, per meter surgeons are good, and endoral surgeons are good. This is nothing like that. Once you are giving very good results, in ear surgery, what is the most important? It is the outcome. Yes, sir. It is the only outcome that matters to the patient, nothing more than that. Sir, agreed, okay. but you can convince the patient that I am doing through ear canal, there will be no scar. A scar is not a big issue for the patient. A scar is a secondary matter. No, boss. My take is that the whole world should follow endoscopic ear surgery without incision because it always goes in interest of patient. How will you manage when the patient suppose that how will you manage when the patient has got post-mastoid infection, severe mastoid infection? That is differences. But type 1 timoplasty, why to give this much incision and larger handling of tissue? If you are happy with your surgery, okay, if you are happy with your results, your patients are happy with you, you go for it. The person who is doing post-oral surgery and their patients are also happy, surgeon is also happy. So what is the problem? A scar is not visible, even in permetal or post-oral. It is a matter of a scar. One thing with the post-oral surgery is that sometimes patient develops keloid. That is the biggest issue. Another big issue for the post-oral approach, sometimes you give incision in the just post-oral oral groove and you extend, once you extend the incision. Are you getting my picture? Hello? Yeah, I'm getting you. Suppose you are giving incision just in the post-oral groove, in the belief that it will not be visible in any way, then you will injure the branch of the post-oral branch, that is sensory branch. That will give hypoesthesia to that area. So always post-oral surgeons will always go little half centimeter or 1 centimeter behind you, especially in the lower part. This must be taken. Okay. But giving incision post-oral, there are lots of demerits also. Actually, in only two demerits here. There are only two demerits. There is not a lot of demerit. One is a scar, another is keloid. Only deformity, only thing is, only matter of concern is a scar, that is keloid formation. Once there is no keloid, then nothing, the patient is not worried about it. Another thing is hypoesthesia. Sometimes patient... Who is knowing which patient is going to have keloid in post-operative?
Something very low incidence here, and that can be managed. That is not an issue. Suppose you are taking graft from this area, okay? Yeah. What do the endoscopy surgeon? They take graft from this area, okay? Yeah. And Professor Suri has one statement. There is only one way to do ear surgery. No, absolutely. Professor Suri has checked. You already said the name of Professor Suri. Yes, Suri Prabhu. So his statement is always there should be only one way to do ear surgery. Whatever the way. It is not valid for any surgery. This statement is not valid for any surgery. There is one technique. Even you go for appendicectomy, cholecystectomy, any surgery, there is no single technique. And once there is more than one technique, it means that all depends upon the case and involvement. Yeah. So you must be in a position to modify your techniques. Ashwani sir, this is Rakesh Nan. Yes, sir. And I agree that your approach may be different, but the result matters. And whatever approach you do, you are comfortable with, you do it. Don't change your approach. Don't change your approach. No. Because it may hurt your result. No. If you are not knowing all the techniques of any surgery, you are an imperfect surgeon. But a complete surgeon. But my opinion is, if you are doing post-oral and you are comfortable, do it. The result will be the same. No. I am doing transcanal, Sanjeev is doing endoscopic, but I don't think the outcome of any technique will be different. Outcome is okay, but I am taking care of patient more than you are, because you are doing a big incision. You are giving big incision. That is my issue. You are taking care of incision, not the patient. You are not taking care of more patients. You are taking care of incision. Put patient on such a big incision for a simple surgery. Okay. Just let me tell you one thing. Result of tympanoplasty. What are the factors that will determine your results? And boss, another benefits of endoscopic is, ample opportunity for revision is still left. It is also with post-oral. So when you give a scar, this is not a matter. This is not a matter of concern at all. Revision surgery is always possible with any incision, endoral, post-oral. You can revise any time. You can revise multiple times. Patient has been operated 3 or 4 times by different people. They don't have any problem. So let us come to the point, Yeah, point. Yeah. What are the? And give your. What could be your plan and what is the case, sir? Let me show you. Actually, this is a very small canal, very tortuous canal. Yeah. Can you see this? I am unable to see the canal. We can't see the inside the. But the major tympano we can't see. This is a very small canal. Okay. There is anterior superior bulge. There is anterior inferior bulge. I think there may be little anterior bulge also. I can't see. So, what's your approach? What will your approach in this case, Sanjeev? This is smallest meters. Will you like to go for endoscopic surgery in this case? Sir, Sanjeev is very flexible. He can switch on to microscope if needed. Okay, that should be the thing. We should be very much flexible for the approach, because we are working for the patient. We are not working for ourselves. We are incision, scar, these are secondary things. The thing first and foremost important is how safely you perform your surgery. This is a matter of safety. How safely you perform your surgery to the patient. That is the only thing, and this is foremost important. You cannot actually think. Okay. So what is the audiogram? What are the loss? Hearing loss? It is sensory neural hearing loss. So I don't have to do a lot of work, I think. Hello. There is sensory. Mic थोड़ा सा अंदर करो यार. Mic लगा यार. थोड़ा सटा देना. नीचे कर. Hello. Am I audible? Yeah. I'm getting you. What is the audiogram? Sensory neural hearing loss. Just so the audiogram. SNHL. Just I'm showing this. This one is show me.
Can you see the audiogram? Okay, sir. This is the finding of 28th October 20. Okay? And show me the latest audiogram, latest one. No, we are not able to see, please. Audio visual. This is the audiogram. Can you see the picture, microscopic picture? Yeah, it's a dead ear. This is dead ear. Okay, so I don't have to do a lot of job. Hello. I have to close the perforation. Could you show us the next, the other OT also? The other OT? And what is the plan? My plan. Yeah. My plan is to go, in this case, is post-oral approach. Okay? Yeah. Because, as I told you, go for the simplest. You should know each and every aspect. Don't be an exclusive endoscopic ear surgeon. Don't be a post-oral surgeon or end-oral surgeon. You should have all your arms in your armamentarium, all your equipments in your armamentarium, and should use it according to your needs. Asune sir, this is Rakesh Nan. Yes. I have a question. If Can the we show ear the is dead, other OT also? if the ear is dead, as in this case, can we do the no, sir, but can we do sir, can we remove tympanomeatal flap from where we give incision and close the Close the external auditory canal. Yes, that is cul-de-sac surgery, so that patient don't have to do and clean the ear later on. Cul-de-sac closure, this is ideal case for that, sir, because there is no hearing, only you have to give dry ear. Can you see this is small meatus? This is a very small hole, so there is bulge overhang in the anterior part, anterior superior, posterior superior part, and inferior part too. So I always need good exposure. I don't want to compromise with my good exposure. And in post-oral, anyone who is giving post-oral, I have a small advice. People may agree or don't. I don't know how you people will agree. Start from your incision right at this place. Okay, don't go beyond that, because beyond that you will get the temporal fascia that will also have fat, and behind that there is no fat. So it will always be easy to take here from this area. Okay, and there is no need to extend the incision beyond that line. This is your inferior canal wall. Okay, so you can draw a line, and there is no need to go beyond that. So there is no need to go then put your incision like that, going right up to the mastoactive. There is no need, because once you are going below this, you will get a chance of injuring the nerve. Okay. So let me come to the first part. Actually, I have planned, earlier I planned what I will show you a new technique of my new technique, but that is not feasible for this case. Could you show us the other OT also, the next OT? What I do, the second OT. I give incision, generally I give incision, I start from this area, I give incision right from here, I start incision, go behind this one, go here and go here, and then I take this incision. So you can see only this small incision that is not visible, and you will get all the benefits of endoral surgery. I have named it as retro-helical endoral approach, but I don't think it is very suitable for this case. And people who are giving a small incision, and we have read that, we have studied that external canal has two parts, bony parts and cartilaginous part. But that is our anatomical study. But when we go for the surgical anatomy, there is no cartilage in the posterior canal wall as well as superior canal wall. Have you ever observed it? Sanjeev, Dr. Satyendra Bose? Have you ever observed this? What is going in the next OT? The next OT? Hello? The other OT? Hello? Yes, boss. Have you observed that posterior canal wall has got no cartilage? This is the level of cartilage in the posterior part, and in the anterior part cartilage goes right up to the bony canal wall. This is right up to this. You shift to macroscope, please. Audio visual, shift to macroscopic view. Shift to macroscopic view. Yeah. Yes. Now, boss. Tell me.
Actually, what we have learned since our MBBS, that external aortic canal is made up of two parts, bony and cartilaginous. Okay? But it is not true. This is an anatomical study. But once you are doing surgical anatomy, you will not find any cartilaginous wall in the posterior, right from here to here. There is no cartilage in this area. Obviously. So in the posterior part, you can say that this statement that the external aortic canal is made up of two parts, bony and cartilaginous, is not true. In the posterior part, there is no bony, there is no cartilaginous canal. This is a small rim. This is a small rim of conchal cartilage that is going from here to here. That's all. And sometimes this is your tragal cartilage. It varies, extent posteriorly varies depending on the patient. Sometimes it goes right up to here. Sometimes it may be right up to here. So you have to be very, very cautious during giving end-oral incision. Okay? So in this case, I have to do a lot of bone work, especially for the ear canal. Sir, Ashwini sir. Yes, sir. Ashwini sir. हाँ जी. I have not got the answer for cul-de-sac closure. What exposure? Is your opinion? Cul-de-sac closure in this case. I don't like to go for cul-de-sac. Cul-de-sac closure is only for cholestoma-like surgery. It won't be done for all cases. Cul-de-sac for second notice. Screen को split कर दीजिए. दोनों canal, that is malignancy of the temporal bone. That type of thing. You can go for this, but that becomes little radical. But this is a fit case for cul-de-sac closure. Not fit case. The screen. Can we see both the OTs? Once you close the ear of a patient, he will always ask for a hole in his ear. What has happened to that? Why you have closed my ear? How will you explain that? Okay, sir. Thank you. You have to explain before the surgery that I may close your ear. It should be explained prior to the surgery. Give me the injection first. And if you divide that bony external aortic canal, what we have been taught that it divided into four parts, superior, inferior, and posterior. But anatomically, but surgically, it is divided only into two parts. Okay? Anteriorly is your tympanocomas suture and posteriorly is your tympanomastoid suture. In between tympanomastoid suture and tympanocomas suture, that is superior part. Tympanomeatal flap, what we call the vascular pedicule. You give single injection in the superior part, that will go right up to the annulus, that is attic area, and in the inferior part you give only one injection. So 2 injection is enough. अरे यार ये तो बड़ी कड़ा हुआ है. कैसे इतना हार्ड कैसे है जी? बहुत ये हार्ड है. तो लूज इसका. Can we see the other OT also? Can you split the screen? We can see both the surgeries. Yeah, Dr. Abhishek, can you split the screen? We are not able to see your case. Actually, Dr. Rakesh is infiltrating. When he will start with audio visual, please take care of the both OT equally. एक मिनट जस्ट. अश्विनी बॉस, सत्येंद्र बॉस कुछ बोलेंगे. हेलो अश्विनी. Actually, I'm not versed with this microscope. अश्विनी, गुड इवनिंग. हाँ, गुड इवनिंग सर. गुड आफ्टरनून, नॉट गुड इवनिंग. अच्छा, गुड इवनिंग हो गया. चलो, बोल रहे हैं कि इसमें कुछ हियरिंग इम्प्रूवमेंट तुम दे सकते हो. कोई चांस नहीं. सेंसरी नो हियरिंग लॉस. जबरदस्ती आप कान काट करके थूथा थुरी कीजिए. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. मैंने नहीं देना है. सेफ हियर दैट पेशेंट शुड नॉट डिस्चार्ज, हैव गॉट डिस्चार्जिंग एंड दैट्स ऑल. गिव मी द इंजेक्शन. हां, हो गया सर. So I will give only 2 injections. Okay, one is the inferior canal wall and another is the superior canal wall. That will complete my purpose. There is no need to give 4-point injection. Just Abhishek boss, we are not able to see OT of Dr. Rakesh. He is infiltrating. I'll just tell the camera person to change it. Camera लगा दो. We are trying, but we are just able to see one case. Insulin syringe, though. Give me the insulin syringe. अरे don't लगा ना यार. I was talking about the results of tympanoplasty. What is the factors that determine our results? Our most important part is external aortic canal. How we address this thing, how cautiously and how safely we keep this flap intact. We should once, especially in your technique or what you call Satish Jain's technique or Dr. Vincent's technique, these are anatomically, surgically the same thing with different names.
And results will be almost same for all the techniques. But with your technique, it is easy to replace the skin flap in its original place. There is no doubt about it. And I appreciate your technique for two-door technique. It makes the replacement of the flap very easy. Hello? Rakesh boss. So one injection here, right in the inferior canal wall, and one injection right in the superior canal wall. Okay? हेलो हाँ अभिषेक बॉस हाँ इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं डॉक्टर राकेश अभी कैमरा उनका लगा नहीं है मैं अब दिख रहा हम लोग ओके ओके लग गया तो हाँ लग गया दिख रहा है बॉस there should be a huge posterior superior bulge in this case. Give me the knife. I am unable to see the tympanic vein what it is. It is not visible at any extent. We are live on Zoom also, so everything is getting relayed all over India. So we need to do a proper, actually, so that people understand. Give me the knife. We need to explain it step by step. What people used to do, they give this incision from 6 o'clock position, just vertical. I just don't do that. I give the incision, start from the 6 o'clock position and in the posterior part, just like this. Okay? Just in the level of the inferior canal wall. And another one is like this, just in the line of the anterior canal wall, starting from the area of the anterior canal, in the plane of the anterior canal wall, and going right up to the bone, without seeing anything. Okay? In this patient, it is actually very difficult to give the circular incision in the lateral wall because I cannot complete that. But whatever incision I can give, I will give. Give me the circular incision. Always take the posterior flap, try to have a big flap. Samit, hello? Dr. Samit. Hello. Samit. Sir, Dr. Harsh here. Dr. Rakesh here. Actually, this microscope. I would like to show you my middle ear finding. Very Okay. difficult. Focusing point is very hard to move. Very, 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 very hard. It should not be like that. It should move very easily. It is not moving easily. Dr. Harsh? Dr. Rakesh, yes, we can see that perforation. Yeah, you can see the perforation, no? Yes, Dr. Rakesh. Okay, this is the interior. This is the posterior. Okay. We can see the perforation margin. It's going anteriorly. We cannot look the So anterior perforation we cannot see through the endoral route. Okay. Yes. The middle ear mucosa is edematous. It is very hard. And there is a wart in the external aortic canal. Okay. This is a wart. Very hard. Very hard. We cannot see the anterior rim of the perforation. So we'll go with the post-oral route. Okay. So that we can see the anterior rim of the perforation. Okay, boss. And second thing is that we have got the audiometry report is this. It's a moderate conductive hearing losses, moderate conductive hearing. Okay. Along with that, we have got the X-ray findings suggestive of a pneumatic mastoid. Okay. So it is the This same is the finding of this patient. It is the same patient whose fistula was operated on the other side Yeah, by Dr. Rakesh. it's the same patient. Abhishek boss. I was expecting some retraction pocket in this, but I didn't find any retraction in this. Let's wait for the local to work, and then we will start with the incision, and we will first take the graft, then we will proceed. Okay? Give me the suction. Okay, boss. Give me the circular incision. एक छोटा सा कांच पे दो तो कांच के कॉटन है ना इसको डाल दो. I will not give any blind incision. Okay. I will try to complete the circular incision, lying almost very lateral, maximum lateral in external aortic canal. क्या आराम से करना है, गड़बड़ा के नहीं करना है हम लोग को. ये रूटीन काम है रोज. हेलो. हाँ हेलो. Yes. Hello. We will go with the post-oral incision. Okay. Rakesh boss. Before that, we will take the
ipsilateral temporalis fascia. Graft. Yeah. Okay. Okay, boss. Rakesh, boss. I'm shifting to Ashwini Verma, sir. Sure, Then sure, we'll sure. come back to Continue you. with that. I have just given 2 incision. One is starting from 6 o'clock position, but it is not going in the 6 o'clock position. Okay, it is coming in for right here. Is coming in the 9 o'clock position. Okay, can you see this? It is coming. It is incision is coming like this. It is not going like this. Okay, and another one is in the 12 o'clock position. That is the state in the 12 o'clock position. ये मैग्नीफिकेशन तुम लोग 0 पे नहीं रखा हुआ था, है ना? पावर जिसका जिसका रहता है ना, वो सीधा I will go for post-oral approach in this case, no doubt. Because it is most suitable. This most actually post-oral approach is the most safest way to do ear surgery. There is no doubt about it. इसको पूरा ऊपर कर दो तो कुर्सी. Give me incision. पूरा एकदम ऊपर कर दो. तो एकदम ऊपर और ऊपर यही मैक्सिमम है ना. और थोड़ा सा नीचे. राकेश बॉस अपने माइक का वॉल्यूम कम कर लीजिए. Sure. I'm just. So I am starting my incision right from here. Okay, can you see it? It is starting just from here, and I will stay little away from the groove in the inferior part. Okay, this is the groove, but I am not going in the groove in the inferior part. Hey, blade दो दूसरा यार खराब हो गया. So this is the level of inferior canal wall. I will not go beyond that. Local, then wait for some 4 to 5 minutes. Okay. So that you level and this is your hemostasis. Lower end of incision. Cautery दो यार बहुत खराब है. Are you with me? Hello? Yes, sir. Yeah, we are with you, so sir. I am elevating this with the cautery. Just dissect in very smaller part. Don't go in deep. Can you see the post-oral muscle? This is your post-oral muscle. And this is just fascia. Just don't go one step like this, going direct to the. Don't do this, okay? Hello, Ashwini. Yes, sir. What is the name of post-auricular muscle? What is the name of? What is the name? For what? Muscle you are cutting. This is post-auricular muscle. These are post-auricular muscles. That is vestigial muscle. These are vestigial muscle. That is of not any functional importance, but it has got its surgical importance. Depending on the procedure, what are you doing? Suppose you are trying to. Is it vestigial? You have plan for obliterating the mustard. No, you should save it. This is vestigial. This is vestigial muscle. But some people are not able to move our pinna with that muscle, so it's extensively. But yes, they can. And they can retract move their the ear pinna forward. But you can call them that you are my father, historical father, evolutionary father. How many muscles are there in the pinna? You tell me. You are the teacher. You have to teach your students. How many? 1, 2, 3. And what I do? This is your posterior auricular muscle. Can you see? Can you see this? Bipolar. Anterior, superior, posterior. You are cutting the posterior. कहाँ bipolar का foot plate? Excellent bipolar. Bipolar का foot plate दे यार. हाँ, नहीं काम कर रहा है. नहीं foot plate नहीं मिला बस. ये तो आप बराबर कर सकते हैं. दोबारा आ जाएंगे. Just give him off here. Sir. Yes, sir. Hello. Hello. हाँ बोलो. Ashwini sir. Yes, sir. Would you like to use dry graft or wet graft? Actually, if you see the anatomy of the dry graft and wet graft, it has got no meaning. Both are fibrous structure. There is no living cells. And you suppose you are taking the fresh graft, it is not going to stay there, and because there are only fibrocytes in that, and that is going to die. So people are using even the preserved temporal fascia graft, different types of graft,
and that is a very scientific method. There is nothing wrong about it. You can use it. Scientifically you can use it. There is no doubt about that. So you use dry graft? I use it depending on the situation. If I have got enough, generally I have got a dryer, hair dryer. In my And what is the advantage of dry graft? Dry graft over wet graft, manipulation. Manipulation. Yes, that is the knife. नहीं सर, कड़ा चीज जल्दी आसानी से जाता है नहीं सर. I don't know. You have got more experience. Hello. We are live on Zoom. Ashwini. Yes, boss. इस कॉन्फ्रेंस एक चीज हमको हो गया कि राकेश को और तुमको दोनों को बोलने आ गया है. Can you see that? सर्जरी तो बहुत पहले से आती थी, बोलने लगता है कि अब आ गए. सब आपका आशीर्वाद बोले, आशीर्वाद देने लगता है. हमारा आशीर्वाद सदा बने रहे, बोलते रहो, है ना? Sir, just I am giving incision just parallel to this one, okay? And it is almost going. If you can see, it is almost in the plane of the inferior canal wall. Okay. Ashwini sir, now we are switching to Dr. Rakesh Ranjan. Okay, Rakesh sir, Rakesh sir. Yeah, I have just started the operation. Okay, I have given a post-oral incision. Boss. Can you see there? This is the upper superior pole. This is the inferior pole. This is anterior. This is posterior. Okay. I have given a post-oral incision. अश्विनी, इसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का? हाँ, एकदम 4-5 बोतल चाहिए सर. This is a very small tip for new young ENT surgeons who has got incision problem with the incision, how to give the incision, how to reach the temporalis line. Okay. Once you have come to the temporalis fascia area, this is your temporalis. Just don't give incision in that area. That is the plane. Just do it like that. Come here like that. It will do it like that. Okay. Come down, and it will spontaneously stop at the level of temporalis fascia. You cannot go behind that. Okay. So this is my This will be my temporalis fascia line. Okay. People are giving incision like this. People sometimes giving incision in one go. So they will go into the temporalis muscle directly. So to avoid injury to the temporalis muscle, this is your technique that should be followed. What I teach my residents who joins me, this is the most important part of your post-oral incision, how to give a proper post-oral incision. So, hello? Yes sir, we are with you sir. Can you see? This is the lower limit of dissection. Yeah. Okay, I cannot go beyond because there is a limitation of the external aortic canal here. Okay. Knife. Now you can give incision like that. Okay. Give incision like that. Okay. It will exactly in the line of external aortic canal. Can you see this? Give this incision, and just connect it. Once I have connected, I simply elevate it, and it will be very easy to approximate it. Through post-oral incision only we are taking the graft also. Okay. Can you see? This is your spine of Finlay. Can you appreciate this spine of Finlay? Yes sir. Sir, you need to centralize the image. Sir, ऊपर जा रहा है फोटो आपका. This is the difficulty with microscope. Surgeon sees a lot of things, and observer doesn't see a lot of things. All of the things that is being should be seen. With endoscopic surgery, what the endoscopic surgeons see, it is visible to all their participants. OTS staff. ठीक दिख रहा है ना तुमको? Sometimes we will get a vessel, that is branch of the superficial temporal artery, going deep in parallel to this line, and that may get stuck. I am taking the temporalis fascia. So be prepared to cauterize it. Now just go beyond that. Can you see that line incision I have given? That was given blindly, but that was in the proper plane. That was in the proper line.
Knife seizure. And this is my horizontal incision that I have given in the canal wall. I have just cut it and see the real situation what is there. Just give me the Mr. detector. Let us see what will be done and what is needed to be done in this case. इसमें सलाई नहीं नेडल कहाँ है मेरा बोला Can you see the size of the externality meters? Hello? Hello. Yes, sir, we can see the size, sir. Can you see? Yes, does yes, very nice. Does it look like adult externality canal opening? Yes, sir. It looks Even very it is small. smaller than the neonates. Yeah. It's very small, sir. Can you imagine? So this is the big challenge, how to manage it. This is not a small challenge. I have to keep the things in proper place. At the same time, I have to. Hello, Harsh, can you see that? Yes. Rakesh. Yes, sir. Give me the. Actually, sir, we'll be switching to Rakesh, sir. We'll be talking to Dr. Rakesh. Okay. राकेश मैग्निफिकेशन बढ़ाओगे क्या? Sure. Is it okay? Fine. Can you see कीजिए, the कम कीजिए राकेश बॉस. overhang? सर का तो ठीक है, सर का ठीक है. So it is. I'm just taking the post of this temporary structure. नहीं सब ठीक है. Okay. आपका ठीक है राकेश बॉस. थोड़ी खाली पिक्चर को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लीजिए. सेंट्रलाइज कर लीजिए इमेज को. थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर. बस परफेक्ट बॉस. पतला वाला एकदम है क्या? There is also a technique how to avoid tearing of the flap. Especially you have got prominent tympanosquamous suture and tympanomastoid suture. It is not an easy job. Sharp knife देना जरा सा. Knife देना जरा सा. I will be just in line with the external anterior part of the external canal. So this patient is not suitable for endoscopy in any way. But once you have decided that I can go for endoscopy, so you go for endaural incision, I can take the help of endoscope. दूसरा क्या बोलते? छोटा कोई भी दे दो ना. Give me drill. A graft has been taken just without any muscle fiber. I don't use a lot of drill bits. Generally, I use 3-2 cutting bar. Can you see this is very prominent spine of Henle? I will start drilling from this area. पानी ना. ठीक. Ashwini sir. Yes dear. Are you doing cortical? No, I am not doing cortical. This is a spine of Henle. I have to make the canal wide. I have to make. You are doing canaloplasty. Yes, this is part of canaloplasty, and it is not easy in this case. पानी देना जी. Once you are drilling in very critical situation, don't increase the speed of your work. Okay. Try to have minimal speed work. You can work even on 10,000 RPM, 20,000. There is no need to go for 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. There is no need. So whenever you are getting a chance that it may tear the flap, be very, very cautious, very gentle, and very patient. There is nothing that you are doing very fast surgeon. It is not the speed that matters. It is the result that matters. And how you manipulate your tissues. We must respect our structures, whatever we are coming in our way.
So speed of drill is very low. कितना speed है जी? पानी I am working on very low speed, and the beauty of Geomed system is, it is unparalleled system. There is no doubt about. Geomed has got the best motor. No micro motor stands in front of this, but it's very costly affair for the patient and the surgeon both. Every drill bit cost a lot, but there is no extra movement of the burst in this case. If you are working in a way, there is no dribbling. Can you see? There is no dribbling. पानी ऑफ मत कर यार. So I have taken out the spine of Finlay along with some part of the. But although I am drilling the posterior canal, but I have not touched the canal skin right now till now, and I would like to avoid this. At the end of surgery, I must have a good metal opening and good canal, so that it can be inspected. When you are lifting the flap, it should always be on the bone. Always, it should always be on the bone. We should never touch the skin. I am showing one thing. Chota flap देना. Hello, Dr. Aswani. It is more important in this case. Hello. More work is dedicated towards external canal than the middle ear. Yes, sir. Dr. Aswani. Yes, sir. Ji. Yes. I am hearing. Yes, boss. Are you doing canalplasty or mastectomy? I am drilling canal wall, boss. I am not doing cortical mastectomy. So it should be from the annulus. What should be from the? It should be from the annulus. Why? I don't have enough space to look at the annulus. It is not visible at all. So how I can go to the annulus in this case? You are opening the mastodentrum. If you are going deeper, then you will. Yes. Actually, you should keep your things. That it comes only with experience. A time frame that make you surgeon. It is not that I have seen a lot of cases. I have worked with Satish, and I have worked with Alok Thakkar, and I have worked with Dr. Satendra Sharma, Sanjeev Kumar, Samit Lal. It doesn't matter. It matters only what have you extracted from their learning, and when you apply it. What you have seen is important. What you have extracted from. Good surgeons are just in a bag of honey, but how much you have extracted from honey from that, it depends on you. Dr. Aswani? Yes, sir. A lot of bleeding is there. Do you need blood transfusion in this case? Be a little bit louder, sir. Actually, using comes from the superior wall, and I will take it lightly. I am. Don't talk lightly right now. You can be serious. You have a right to become serious. Blood grouping and cross matching. Yes. I have already arranged for 5 units of blood for this case. Is the Dr. Rakesh? Yeah. राकेश बॉस. राकेश बॉस बताइए कहाँ पे अभी क्या हो रहा है? मियाटोटॉमी हो गया आपका बॉस? No, just wait. नहीं यहाँ से नहीं. I have taken the temporalis fascia. Okay. हाँ बॉस. Then I given this is the horizontal incision which is given over the muscles till the. Okay, and this is the posteral incision along the bone. I am just retracting the posterior flap. Okay. Posterior. हाँ. Can you see? And there it is the posteral posterior canal wall. Okay. So I am going to give an incision in the posterior canal wall so that we can get into the canal. हाँ. बॉस मिडल ईयर का क्या फाइंडिंग था बॉस? मिकोजा? It was a middle ear mucosa was 80 meters.
So this is a challenging case, no doubt about it. I am very happy with this case. Can you see? This is your tympanomastoid suture, and this is your tympanosquamous suture. Okay, this is your tympanosquamous suture coming right up to the posterior end of the sternocleidomastoid canal. Can you imagine? This is your. Just I will show it. You know. Can you see this? Hello? Are you with me? Hello? Oh. Blade. Hello. Give the blade. Hello, Ashwini boss. Blade. Can you see? This is the tympanomastoid suture line. Tympanomastoid. Yes. This is your tympanosquamous suture, है ना? And this is what you call the anterior spine. Can you see? Right, it is coming right up to the posterior end of the external canal. You know? Yes. So it becomes very difficult. You have to very patient to elevate the flap. Can you focus, adjust that lens a little? यार तेरा बहुत कड़ा हो गया भाई मेरे को समझ क्या किया हाँ yes thank you is it focus yes better पहले आप बताओ focus हुआ वहाँ पे नहीं थोड़ा और करिए ठीक है नहीं एक बार सक्शन करिए ना ब्लड वहाँ से हाँ बताओ आप करिए is it focused हाँ बेटर yes ठीक है फाइनल ना हाँ okay. आपके लिए ठीक है ना हम कर लेंगे अपना ठीक है एक तो आप अपना वाला आपके लिए बेस्ट करिए ना नहीं हम अपना बेस्ट कर लेंगे तुम पहले वहाँ पे देख लो पहले वहाँ पे चेक कर लो वहाँ पे इज इट ओके हाँ इट इज बेटर यस बेटर और ओके थोड़ा और लगेगा लगता है थोड़ा सा ना वो लेंस को घुमाइए ना तो और अंदर ठीक है I can go for little more magnification. Magnification 1.6 पे रखिए बस। हाँ ठीक है तुम्हारा अभी कितना पे है 0.6 पे 1 पे है अब इतना पे ठीक है देखो सुनाई नहीं ना हाँ ठीक है Now I will focus लगा रहा हूँ बतिया डाल के उसके बाद हो जाएगा Is it okay for you? Hello? हाँ सर ठीक है यहाँ आप ठीक है ठीक तो नहीं होगा क्योंकि ये कैमरा तुम थोड़ा और क्लियर हो सकता है इसका इनबिल्ट कैमरा इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड फ्लैप नाइफ इट इज रियली वेरी चैलेंजिंग नो डाउट अबाउट इट है ना बढ़ा no one can do even in this case that perimeter surgery or even endoral surgery. It is not possible. In this case, posterolateral approach is the right approach. Just imagine where it is coming. Can you see? हमको डर था कि कहीं कुछ निकले ना। नाइफ देना डियर जरा सा। ना पागल है। कॉटी देना बाइपोलर। अरे कहाँ गया बाइपोलर यार इसका अरे यार पैर बाइपोलर यहाँ पे रखो तो एकदम किनारे मेरे पैर पे यहाँ पे रखो जस्ट पुट इट हियर यहाँ पे रखो बस How much is the BP dear? BP कितना भाई मेरे? Slap Oh my God! Bring it below 160. Systolic less than 100. Ideally it should be around 90. Systolic and diastolic should be around 50. Okay? That's why actually BP is very high. जहाँ जहाँ टच करने को बोलूँगा वहाँ टच करना करो
टच कर, ब्लेड बदल देना करना, ब्लेड ज़्यादा देर मत रखना, ठीक ना? ब्लेड ज़्यादा देर काम नहीं करता है। they are all bone dear. Suppose this patient has got otosclerosis in this situation. What will you do? This patient नानी याद दादी याद दिला देगा पेशेंट ये, अगर इस तरह का पेशेंट otosclerosis का मिला तो। राकेश बॉस बताइए। हेलो। हाँ राकेश बॉस। Can you see now? Just see the, I have given the postural incision and I can visualize this middle ear. Okay, this is the perforation margin from anterior to posterior. We can properly see. Okay. थोड़ा सा फोकस कीजिए ना सर, फोकस कीजिए। Is it? यहाँ पे नहीं आ रहा है। Audience. Now fine. To the audience, hello. Yes, we can hear you. हाँ, we can hear you, sir. Can you see the anterior spine? Can you see yes, this sir. is spine? This was spine of Henley, and this is your anterior spine. Can you see? Right is coming right from the anterior canal wall up, just up to the posterior canal wall. Can you see? This is causing this much of a stenosis. Smell of a small. Can you see this bone? This is a huge chunk of bone. Can you see this? Can you appreciate this or not? Hello? Can you appreciate this bone? Sir. छोटा ड्रिल मिलेगा क्या? डायमंड भर देना डियर, एक जरा सा जो भी है। With the needle, ये saline wash करो। It is just like a case of canal atresia, almost you can say like that. I have to drill दो ना, cutting diamond भर दो ना जरा, दो पानी इसको लगा दो ना। हाँ ठीक है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो डायमंड भर देना। हाँ दो ना, needle तो give the needle। दो ये दो सिकल दो। I am working with the latest instrument drill, that is MR8 है, बहुत जगह है। I am freshening the margin. Rakesh boss, any retraction? No. There is a clear cut big central perforation is there. I am giving the this. I am refreshing the perforation margin. Okay. Till I am unable to see any perforation margin, I can't see any perforation margin. I am using here the diamond bud to avoid an injury to the canal skin. If you can appreciate the anterior canal wall area, can you see? This is the plane of anterior canal wall, and I have to drill right this thing, all of the thing. ऐसे रख। नहीं कर करे सीधे तो माइकल सीधे ठीक है।
पीरियड देना है रखे, फ्लैप देना यहाँ पे रखे थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट अपने पास, फ्लैप देना, फ्लैप फ्लैप। सर्कुलर नाइफ तो Rakesh boss. Yeah. You freshened the margins. Yeah, I have freshened the margin from the more undersurface of the external canal perforator margin. I'm just refreshing the undersurface of the perforation also. Okay. Okay. Undersurface. Sir. Hello, Ashwini. Yes, sir. Audience wants to know why you are doing drilling. Why you are drilling? If I don't drill, how can I see the tympanic membrane? Still tympanic membrane is not visible. For any work on the tympanic membrane structure, I have to see the structure first, na? You know, still bleeding is profuse. Yes. The fluid is maintained. I don't have You to have worry to about use bleeding. diamond burr. I am using diamond burr, boss ji. Okay, you are great, simply. It looks nice when you are doing canal plastic. एक मिनट Give me a small. ठीक नहीं है इसका, जानते हैं यही तो Just break कर see रहा है। amount of overhang. Still you can see the amount of overhang. Can you see? हो जाएगा थोड़ी देर में। In spite of so much drilling, still I'm little. Now I can see little bit of perforation. Purposefully you have been given this case. Yes, okay. Don't worry. I have no. Now you can see the perforation. Yes, yes. Is it visible? I can see the impression of his session tube. Can you see this perforation right now? How clear it is? Entirely it is seen. And it is not in the anterior part, basically it is in the middle part of the tympanic membrane. But still I have to do a lot of drilling, boss, a lot of drilling. If you don't mind, hello? Yes, I have no mind, If boss. you don't mind, I can ask one question. Yes, sure. Today it will finish or tomorrow? I think the day after tomorrow. Today or tomorrow? No. Aluminium का वो देना है. Aluminium का से. Aluminium foil you can harvest from catgut. स्टिच होता है ना, नीडल स्टिच वाला निकालो ना, वो उससे निकाल लेंगे। अच्छा, आज हो जाएगा कि कल होगा? 12 बजे के बाद? बस आधा घंटा के अंदर हो जाएगा बॉस। आधे घंटे में? हाँ। अगर कल भी होगा तो हम लोग बैठेंगे यहाँ। यार स्टिच लो ना, कोई भी स्टिच दो ना खोल करके हमको। 3040 दो स्टिच, जिससे स्टिच करोगे वो दो। इसलिए टाइटेनियम I am not a fast surgeon boss like you. I take a lot of time in doing surgery. वो तो मुझे पता है, Still you can see that there is no injury to the flap. तुमको फास्ट करना मेरा काम। Can you see? Can you appreciate? There is no injury to the flap. Still, in spite of doing lot of drilling, my flap is still intact and still bleeding. तुम्हारा केस मेरा केस दोनों flap is a very good sign. If your flap keeps bleeding, you should be happy. You should not be afraid of that. Dr. Rakesh? Yes, sir. Second OT. Yes, sir. Second OT. Yes, sir. Good afternoon, sir. What is your finding and what you are going to perform? Sir, in this case, I am finding a large central perforation with the edematous mucosa of the middle ear, sir. Okay. So I have gone with the post-oral incision. I am just Give me a flap. taking the posterior tympanomeatal flap. I am elevating. Then after elevation, I will see the condition of the I think ossicles. this is the second year. This is second year, sir. Yes. Sulav. Rakesh, what was the loss?
Pre-op audiometry hearing loss. It's a moderate conductive hearing loss. Okay, boss. तो हाँ This should not happen. In canaloplasty, and if you have got a small meatus, you can go right up to the tegment tympani. There is no harm in doing that, because that is the technique that is used for opening the canal in the cases of atresia of the chronic canal. That is our landmark. It is our first landmark. And you should get right up to the tegment tympani. A speed is saying that you are using Medtronic. I have no haste in doing surgery. I have no plan of doing surgery very fast. Every time, every moment I invest, it should bring something. यार एल्युमिनियम फाइल हमको चाहिए भाई, दूसरा तुमको स्टिच दो कुछ. अरे सिल्क का स्टिच है कोई क्या? इनका बॉस का टीमोप्लास्टी है. Just imagine the amount of overhang. Can you imagine? Still I am unable to see it. Just कॉन्ट्री टच करो तो. सिल्क नहीं है क्या? हेलो, सिल्क दो ना निकाल के कोई भी. बस. हाँ सर जी. Still actually I am searching for the aluminum foil. एल्युमिनियम फाइल उसमें रहेगा, सिल्क में रहता है ना? अरे रहता है यार, सिल्क में भी नहीं है तो किस में रहता है? सिल्क में नहीं रहता है. क्या यूज करता है फिर? सेलेस्टिक सीट है, गॉट सेलेस्टिक सीट दो. बड़ा सर्जन के पास देखिए छोटा सामान नहीं रहता है. सतेंद्र बॉस देखिए, Actually, boss, I'm Sanjeev here. क्या नहीं मिला? The aim of surgeons should be every surgery looks like a very easy. Otherwise, and here I can see the complicated situation. क्या? What are you saying? देखो हम लोग क्या अभी मैंने सीखे कि सिंपल सर्जरी को कितना डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, वो हम सीखे हैं तुम्हारे से. ये हमारा भी केस वैसा ही था मोटा मोटी, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत थी. तो सिंपल सर्जरी केवल वही किया है जो संजय साई किया है. आपका वाला तो सबसे डिफिकल्ट था बॉस. सतेंद्र बॉस, इस सेलेस्टिक सीट है यार, क्या देते हो जी? क्या देते? अश्वनी, यू आर गोइंग ग्रेट, नो प्रॉब्लम. लेकिन हमको थोड़ा सा ये बता दो कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो तो हमको बोलो वेल बिफोर हैंड, सो कैन आई कैन अरेंज. व्हाट द पैटर्न? पीटी नीडल लेके है 9-10 बजे नहीं ना, डाल दो. सिक्कल दे दो ना. In this type of you have to. I don't have any protective measure. मेरे लिए घुस रहा हूँ. इसके बाद मैं ऐसा चीज मांगूंगा लोग हंसने लगेगा फिर. यार ग्लव्स ही दे यार काट के. क्या तुम लोग निकाल के दे रहे हो? किस चीज का है यार ये? कान का साला सामान है ये. कुछ काट दे रहे हो भाई, जान मार देगा आएगा तो. तुमने कहना तुम लोग मत बोलो. राकेश बॉस, राकेश बॉस क्या यहाँ तक पहुँचे? I am trying to enter into the middle ear. Okay. I have cut. I think it is septal button. What has been provided to me right now for the protection of the flap. छोटा वाला flap देना डियर. इसको तुम अपने पास रखो कुछ, ठीक ना? फ्लैग नाइफ, सब नाइफ इधर ही दे दो इसको.
थोड़ा सा और सीजर देना डियर। पकड़ यहाँ पे रख देना, बार बार जरूरत पड़ेगी। फोर्सेप देना, छोटा पतला वाला फाइन फोर्सेप, पकड़ने वाला हाथ से टिप फोर्सेप, पतला फोर्सेप नहीं, साइड नाइफ तो यार हाथी फोर्सेप है। हाँ फ्लैट नाइफ एक मिनट। सीजर दिखाना। Hello. हाँ, Asune sir. Yes sir. Are you using Teflon to protect the flap? Because aluminum is not available. I wanted silver, but people are giving me gold. What is this material you are using? I think Teflon. This is Teflon button for use for septoplasty. Oh. Sir. Because Sir, I have not got here the aluminum foil. Sir, but if you can use aluminum foil of that catgut. Catgut is not available here, na? Oh. कैटकट है क्या रे? अरे तुम लोग को यार तो कैटकट में एल्युमिनियम नहीं रहता जी। It is a more a work of external canal rather than tympanic membrane. Because of advanced OT, so we can't use catgut in this OT. ना catgut मिलेगा ना ether मिलेगा. You can use Vicryl foil. Because there is always chance of almost 30% reduction in your canaloplasty, so I will make little more wider than what. फर्स्ट ऑफ द 1 mm bar देना जैसा डायमंड 1 mm डायमंड बार 1 mm डायमंड बार नीडेड फाइन टिप देना जरा। लेकिन जब से वो ब्लेड वाला आ गया, ब्लेड वाला का तब जरूरत नहीं पड़ा। ब्लेड वाला तो अच्छा, वन थिंग इज दैट आप लोग जो ग्राफ्ट प्रेस यूज करते हैं, स्लैब देना, इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं करना, नहीं इसके साथ डायमंड बोल, हाँ दोनों पार्ट का डायमंड तो ना है यार। ये तो जान ही ले लोगे यार। दो एल्युमिनियम फैल देते जरा सा इन्वॉल्व होता 1 mm कटिंग ही दो, थोड़ा सा पतला कटिंग ही दो। बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम हाथ में देख लो, क्यूरेट करेंगे। काट दिए। Ultimately, I have got the नहीं नोट नहीं रहे। फ्लैग दोनों, फ्लैग दोनों।
वन mm है, नहीं तो 0.6 mm है यार, इससे छोटा तो ठीक है, कोई बात नहीं। स्पीड जरा सा कम करना डियर इसका मोटर का, स्पीड ज़्यादा नहीं रखना। Benefit of the diamond bar over cutting bar is that cutting diamond bar doesn't produce local tornado, है ना। बार का स्पीड कम कर यार, वहाँ से बार का स्पीड कम करो, 20 के नीचे नीचे रखो वहाँ। I have to use it like diamond. What on there? Oh, it's wonderful. Now it's very good. It's appearing nice. Very good. देख रहे हैं येलो मटेरियल, कर रहे हैं। What's it then? Block. साफ कर दो इसी को। Now let us see what has happened. Now can you appreciate? Satinder Bose ji, hello. Still there lot of drilling has to be done. Hello. Can you see now? Can you see whole? Can you hear me? Yes, sir. Ashwini. Yes, sir. It's a very nice central profession. It is not behaving like that. It's nice, but it is not. अच्छा, आज हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा सर, आप जा करके एक हो जाएगा, ले लीजिए, आपका एक पग खत्म होते होते हो जाएगा। Great, you are simply great. दिक्कत हो रही है, हम I can understand. नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, there is no problem at all. This is not the first नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आज हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा सर, डोंट वरी। पेशेंट ठीक है ना? पेशेंट नहीं कुछ बोल रहा, बोला पेशेंट बोला कीजिए सर। टमाटर तो नहीं कर रहा, दिख रहा है। Hello, Srinivas. Yes, dear. Actually, how do you prefer canaloplasty in every case or in this case particularly? No. This is not in every case. No. It depends on the situation. What any drawback of canaloplasty? No drawback. No. So have you faced any TM joint dehiscence when you start drilling anteriorly? No. This is just a havoc, nothing more than that. Even you open, if you open that anterior canal, na, just you perforate, na, nothing happens. Just you can see how much is the overhang. Can you imagine? Yeah, it's too difficult. Yeah, exactly. Still it is lot of overhang.
You cannot see the anterior canal part, okay? Okay. Diamond देना, diamond लगा. I can think you are doing very good tympanoplasty. पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या रहे हो बताओ. नहीं आ रहा समझ में बॉस. फोन भी हटा दियो, कुछ हटा दियो. क्या हटा बीटी भी होना है. कहाँ कुछ हटाया अभी तुमने कुछ हटाया ही नहीं. बीटी भी होना है. कोची मैंने क्या कर रहे हो तुम. अब आपके घर में सामान पहुंचेगा तब पता चलेगा क्या किए हैं. डेड ईयर भी है. सब आर्टिकल से. Which size of burr, boss? This is 2 mm burr. I am using diamond burr here. Speed? Just to avoid injury. No, it is 3.5. So just check it. If I am not wrong, this is 3.5 mm burr, and this must be from Meditronics. This is 2 mm burr. Scissor. He has got only one diamond burr, that is 2 mm burr. 2 mm 1.5 है. Hello. कितना है साइज का burr? Hello. 2 mm. अच्छा तुम आए हुए हो. अरे यार तू क्या तुम अपने डिपार्टमेंट का बेइज्जती करा रहे हो बताओ तो. तुम burr नहीं लेके आए हो. हाँ? Hello, boss. हाँ. Speed. Actually, for beginners, when you are very close to vital structures and the tympanomeatal flap, so what could be the speed of for this work? Around 10, not more than 10. I always keep. Not more than 10,000. Yes, okay. Yes, not more than 10. Okay. ये जो है ना. That's nice. And है ना वो rotated. You can decide the speed of burr by console. मुझे येलो पार्ट 500 पे नहीं चलेगा सर. कंसोल पे दिखेगा कि कितना 1000 का ये मैराथन का ड्रिल नहीं है सर जो 500 पे चलता है. अरे भैया आपका मेडिट्रॉनिक मिला हुआ है पता है. हाँ 500 पे चलेगा. ड्रिल आप यूज कर रहे हैं 500 और उस पे दिखता है कि कितना स्पीड पे चल रहे हैं. 500 पे चलेगा स्कीटर मोड में. कितना कम हो सकता है इसका स्पीड जी. अब तो हमको थोड़ा सा एड्रेनालिन वाला पैक. यस डियर. छोटा एकदम छोटा डाल दो अंदर जरा देखिए क्या पोजीशन है. राकेश. यस सर. हेलो. राकेश. यस सर. कहाँ पहुँचे. यू आर इन द मिडिल ईयर. आई कैन सी what are your findings? This in malleus is present, but in the posterior superior quadrant, after drilling that, curating that, I'm finding that lenticular process of increase is eroded. I think just I'm using adrenaline ball so that I can visualize that hypertrophied area. Okay. Is there any erosion in the attic area? No erosion. Hello, no Rakesh. Yes, sir. This is Rakesh Nan. Yes, sir. Yes, sir. So, who is that Rakesh in the second OT? Oh, sir. Asune sir. Rakesh. Oh, sir. Sorry, sir. Audio visual, please. Rakesh. Yes, sir. I can hear you. Ranjan. I can hear you. Rakesh Ranjan from another OT. I can hear you. Okay, Rakesh, I can see your surgery, but ossicles are not visible properly. I'm just showing you. I'm using this. I have put a adrenaline ball over that cotton. Okay. You can see that in this malleus. This surgery test of my nerve. You can see the malleus. But focus is not there. So, please focus there. Sure. If you can increase the magnification, we can see the IS joint. Just a moment, I'm showing you everything. Zoom कर दिया ना बस थोड़ा magnification बढ़ा दीजिए.
Okay, एक नंबर बॉस. Now it is better. Now thing is that Now ossicles are visible. Now this is the kindly, malleus, okay? yes, but please check the mobility. I'm just checking that only. There is a hypertrophic mucosa over the long process of incus. I am just trimming the thickness of this. So will you curate the attic region? I have curated that. This is the posterior superior quadrant. I have curated that, okay? But still the mucosa is there. Yeah, mucosa is there. Along with that, there is a erosion of the lenticular process of the incus. Oh, so you will put some cartilage or. Now, thing is that I will remove this incus. And you will put the prosthesis or ossicle, remodel ossicle. No, prosthesis only. Okay. Sir, do you have secretions, Rakesh boss? No, this is hypertrophic mucosa. क्या कह रहे हैं? It's a hypertrophic mucosa. ग्लू नहीं है ना, secretions नहीं है ना? हाँ देखिए hypertrophic mucosa या congested bleed भी कर रहा है छूने पे वहाँ पे. आई कि रुकिएगा, करिएगा क्या? करना पड़ेगा तो करिएगा. तो नहीं बोल रहा हूँ मतलब. तो फाइन सीजर तो छोटा अगर है तो नहीं तो कोई बात छोटा फाइन करने का मन होगा तो कर सकते. ठीक है, इसी से करके देखते हैं. आप रहिए ना. फ्लैप देना. आ गया. Now can you see the perforation? Hello? Sir, we can see the perforation. Huh? Yes, we can see the perforation. Can you see? And now see the size of the canal at present. Yeah, the size of the canal is small and the size of perforation is also small, sir. Now the canal is okay? Now the canal is okay, with the size of canal now? Yes, sir. And there is nothing to do in tympanoplasty in this case. Now it's okay. It's okay for me. Give me a knife. Because this patient don't have any hearing, so I am not concerned about ossicular status or anything. Patient don't have any ear discharge right now. I don't give incision like this. Okay? I don't give incision just right up to the annulus so that the flap becomes totally avascular. I will just go right up to this place. बचा के हाथ फ्लैप में. क्यूरेट सर पकड़ के रखो. सर्कुलर नाइफ बना लिया. Give me the circular knife. What is the blood pressure? Okay, that is acceptable. Samir sir, your patient has a lenticular process erosion of the incus, okay? Hello. Okay. Yeah, I can see that. Hello. And there is a hypertrophic mucosa over that area also. You can very much visualize that area, okay? Hello, Ashwani. Yes, sir. I am trying to remove this. अरे क्या कर रहे हो? बहुत दिक्कत हो रहा है. आ जाइए सर, काम पूरा कर दीजिए. वो दिन फाइन देना.
separate करने के लिए तो and now I am pressing the margin. I will just put a small ठीक है ना ठीक है तो cartilage separate करें इनको डिस्ट्रीब्यूटिव जॉइंट Ashwini sir. Yes sir. Yes dear. You're freshening the margin. Is there a TS plug there? I will leave this TS flap. Why will I remove? Patient don't have any hearing. Why will I do unnecessary job? Actually, for tympanoplasty, once you are dealing with tympanosclerosis, especially myringosclerosis, you keep one thing in mind. Once the tympanosclerotic patch is not touching your perforation margin, okay, there is no need to remove it. Okay. राकेश बॉस क्या बताए ऑसिकुलर फाइंडिंग्स क्या राकेश बॉस ऑसिकुलर फाइंडिंग्स क्या बताया I will just show you. Articular lenticular process of incus is eroded. Block. In this part, in the posterior part, there is tympanosclerotic patch that is going right up to the margin perforation. So this will be removed. Okay. This will be removed, but the anterior part I am not going to remove. If you try, अरे चला जाने दो हमको दिखाई पड़ता है. If you try to understand the pathophysiology of adhesive otitis media, you can deal with the problem. Why it happens? That is where the solution of our tympanoplasty lies. What happens in adhesive otitis media? What happens? Once both the mucosal layer are in contact for a long time, that layer is lost. Okay, both the mucosal layer of tympanic membrane as the mesotympanum is lost. One seizure. Straight seizure. Rakesh, what are you planning now? वहाँ पे है वो हाथ नहीं मैं just We'll remove the ossicle. We will do the ossicle plasty first. I am just removing the incus. Yes. समझ रहे हैं ठीक हो जाएगा. And that principle of adhesive otitis media should be applied for the treatment of tympanoplasty, treatment of tympanic membrane perforation. If your graft is in complete contact with the mucosal layer for more than 5 days, that mucosal layer will absorb itself, and that will lead to adhesion of the your graft with the mucosal layer, that is your tympanic membrane layer. That will not lead to failure. Most of the time, in underlay technique, what we see, there is always failure in the anterior part of the perforation. Why it happens? Because in that area our flap, our graft falls. Okay, and that fall leads to failure of our technique. So we must pack properly, and we should try to debride the mucosal layer maximum. Sunil sir. ये वाला हाँ. So I have seen many times audiogram report is 80 decibel, 90 decibel mixed hearing loss. Audiogram of? Audiogram. I have seen many times the patient has audiogram of moderate severe or severe mixed hearing loss with conductive component. Yes. And after surgery, patient improves drastically. It means audiogram report is not reliable. That's why you cannot say drastic improvement. You can say little improvement. No, that sir. little improvement gives a lot of good feeling to the patient. Patient will say that I have got a very good hearing, but if you analyze audiologically, it is not good improvement.
No, patient sir. can say that I have a very good hearing, I have a very good hearing. No, sir. But in fact, patient don't have a very good hearing. Ashwini sir, my advice is that the audiogram may not be correct every time. थोड़ा सा तो कर दे Agreed. एडिमा को तो कम कर दे That's why the result comes that. दो So my take is that दिख थोड़ी रहा है वहाँ पे every time you do the surgery, even if the audiogram report says dead ear, You should do for other things also. This is not for improvement, but you cannot say to the patient, you cannot guarantee that your hearing improve. No, we will never say. Sir, I doubt every time. If it happens, it's good for the patient, it's good for you, good for our fraternity as a whole. But we should not claim, we should not. थोड़ा तो hypertrophy है मेरे को I mean to say guarantee for any hearing improvement. There are also other complication of ear discharge that can be prevented, and that is the main thing of अब कम होगा ना main point of देखा tympanoplasty. एब्डल दे तो It is not always hearing. एड्रेनलिन वाला ना रख दे रहे एक दो पीस काट के तो try though. Although in this patient also this is your anterior, what you were so much concerned about this tympanosclerotic patch, it can very easily be taken out right now, but there is no need to address. But one thing is sure, that once you have taken out the tympanosclerotic patch, mucosa is lost. Mucosa forceps, so that will give a good margin. फॉर्प ले लियो ना needle देना शॉर्ट needle ठीक है forceps दे चलो ग्राफ्ट तो ये ले लो और मेरे को ग्राफ्ट कॉटन बॉल नहीं अंदर देख लेता हूँ मैं तुम्हारे हिसाब से अब ठीक हो गया बस देखे ना अपने निडल दो तो एक बार नाप के देखे अरे यार रावण गीज है नीचे वाला पार्ट ना वही ब्रोकन फ्लैप तो हो गया काम करेंगे तो ठीक है मोटापा तो है ये you can see the color of the flap, still it is pink and it's totally viable. ग्राफ्ट कैंची तो हो गया काट दिया ना बस काट दिए डालो
I am removing the mucosal layer of the perforation, just curating it. One thing, do you know that mucosal layer of tympanic membrane is single layer? Even the mesotympanic layer is single mucosal layer. So it's supplied, blood supplied always gets from the tympanic membrane. It is not lateral supply. That is coming from mucosa to mucosa. So these things, if you know these things, it make a difference. Rakesh boss. Yes. Rakesh boss. Yeah, I'm listening. ग्राफ डाल रहा है बॉस. Now I'm just putting the graph. और ऑसिकुलर का वो कर दिया ऑसिकुलोप्लास्टी बॉस. No, I'm using the PORP I'm using, okay. Anyone like to see in cudostopedial joint in this case? I don't think they need to even examine. It is not clear. What you are speaking is not clear, boss. I am saying that I am putting the graph at this moment, okay. I have taken the size of the PORP. Okay, boss. Which I'll put over the stipes head. I'm just irrigating it to take out any dust bone particle. Ashwini. Yes, sir. This patient needs PT. Can you see the width of canal now? Can you feel it? Sorry, sir. Satyendra sir is joking all the times without knowing that the telecast goes all over India on YouTube. So sorry for that. Excellent work is going on. Ashwini sir. Yes, dear. Excellent work is going on. Thank you very much for your appreciation. Kindly finish the work, and dinner have been finished. So we'll arrange. So now I will take the graph, that is cartilage graph, because there is no need of improving hearing in any case. Hello. Possible. Ashwini. Yes, sir. I think I have seen great work. You have done a great job. You people, a lot of people are fighting with how to take the pericondyl, that is cartilaginous graft. I am just giving a small tip. I don't know you will like or not, but I am just sharing how I do it. This is your upper, this is your lateral end. Just give a small incision here. A small, don't go beyond this. A small, give a, come right up to this area. And now don't use knife or other equipments. Scissor, then find scissor. Chota wala scissor. Use this scissor. This is called nap scissor. Actually, when you see it is called nap scissor. This is a very good scissor, especially for dissection of the. Pull करो. बस छोटा यार, छोटा तो यार बहुत बड़ा हो भाई. छोटा फोर्सेप नहीं क्या? बहुत बड़ा है फोर्सेप. छोटा फोर्सेप है ही नहीं तुम लोग के पास. माइक्रो फोर्सेप नहीं है. अरे दादा. That's for them. Use a smaller force. Actually, they don't have. Just don't do. Just you insuate like this. Okay. Don't do anything. Just insuate like it. Open it. Go on opening. Go on opening. Go on opening. You are in the right plane. Okay. Can you see?
How easily I have opened it? Satinder boss, can you appreciate this? Satinder sir. रखी नहीं नीचे नहीं यहाँ पर रख दीजिए and actually what we say about tragus cartilage width of the tragus cartilage depends on the site of the if fissure, what is known as fissure called Pygius dents, fissure of Santorini, where it lies. Hello. 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 Yes sir. I have just given incision. आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? सक्शन दो. आप बताइए आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? अश्वनी तो कुछ खुराफात कर रहा है. अब आपका आशीर्वाद आ गया ना सर, सजीवन बुटी. ये नहीं यार, ये सीजर नहीं ठीक है डियर. And same technique applied here है ना. Just insert it, open it. ठीक है. एक पतला देना. देखिए मक्खी घूम रहा है. दो जी जल फ्रॉम दो छोटा छोटा. And take out the graft. Okay. Agreed, Satinder boss. Satinder sir. संपत बॉल कहाँ है? छोड़ो. समित बॉस. लो. हेलो हेलो चलो हेलो. हाँ हेलो. हेलो डॉक्टर अश्वनी. यस सर. आर यू हियरिंग मी? आई एम आई ऑडिबल? यार इसको बीटी करना पड़ेगा साले को. इसको बीटी करना पड़ेगा अश्वनी. क्या प्लीज. What is the time? जलेबी पूड़ी खा करके और हमको दे दी यही भला है. हाँ तो यार सक्शन बहुत कमजोर है यार. बस कार्टिलेज कहाँ रखी थी? फ्लैप दे देना जरा सा. फ्लैप दो हमको. फ्लैप दो. हेलो. यस सर. डॉक्टर अश्वनी. यस बॉस. नाउ माय सर्जरी. यस सर. बताओ I'm finished, sir. क्या कर रहे हो? सर आई एम फिनिश्ड. अश्वनी भी कुछ नहीं बता रहा, तुम ही नहीं बता रहे हो, तो क्या करें हम लोग? हाँ मैं तो कुछ, मेरे पास तो कुछ रह ही नहीं गया बताने के लिए बस. दिस इज हैंडल ऑफ मेल. यस. कैन यू सी? दिस इज मोबाइल. व्हाट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एनी हियरिंग. हाँ कर दें. सो इट इज नॉट ए मैटर ऑफ एनी कंसर्न. फोर्सेप्स देना डियर. फाइन फोर्सेप्स. दिस स्मॉल हेयर देयर. हेलो सतेंद्र बॉस. चलो तो लॉक ग्राफ दिया था जिधर. काट ले तो. लॉक काट ले. लेट मी सी. कहाँ गिरा रे? कटलेज कहाँ गिरा? क्लोज कर देगा ना. बचा. ओके. लो डाल दो. चलो थैंक यू. बराबर दो. स्लैब दो. Let me see how does it fit. Like this. I will use
लिख देते हैं। हाँ ठीक है, बस लिख देते हैं। हाँ, दो अंदर वाले इंसिजन खाली ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो जी, बाइक कर दो। अंदर वाला जो है ना, my cartilage going into the middle ear. दो Can you see? अश्विनी, Yes sir. दो अब जल्दी जरा। अरे यार क्या कर रहे हो बताओ कुछ। कुछ ना समझ में आएगा आपको नोट लिख देते हैं। अब जल्दी ड्राइव इट कुछ। I am just finishing it now. I have put the cartilage. Okay. This cartilage is completely covering the graft. Sorry, is completely covering the perforation. Okay. Going right up to the anterior annulus. Okay. ड्राई अब दे सकते हो, भिगा के दिया करो, भिगा के। This will be resting on the handle of malleus, so there is no chance of falling of the graft, and there is no chance of any improvement in this case. So I am not very much bothered about that. अभिषेक वो काट दिए समझे ना, एक के बार में साइज हुई था। दो ना, ड्राई दो ना, ठीक। Your graft should not fall into the middle ear for at least for 5 days, because any graft है ना, any graft which you put है ना, don't get vascularized before 5 days. So minimum that's why middle ear should be packed. Once you are doing underlaid technique, you are doing underlaid technique, you must pack the stitch and tube area very, very strongly and very firmly. So in no situation it should get absorbed and your graft doesn't fall. So once your graft doesn't fall before 5 days, your graft is going to take. Other factor responsible for rejection of the graft. Actually, I think we should talk about why the graft is taken and why the graft is rejected. है ना? So there are 4 factors for take of the graft. First one is the vascularity of the base. है ना? But in cases of tympanoplasty, your bony canal is never your base. It is not your vascular bed. Your bed is, in fact, your bed is flap. Tympanomeatal flap is your bed. So you must. हाँ, ये वाला स्टिच करके फिर मार देना। राकेश बॉस। हाँ बोलना। राकेश बॉस। यस यस। अभी क्या नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट आई डोंट नो। Meeting is going on here. You can continue with the surgery. Can you see we now have started the meeting for the AOCON 2022. दो ग्राफ्ट जल्दी तो पैक। हाँ राकेश बॉस बहुत सुंदर सर्जरी कर रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल नो ब्लीडिंग। नो ड्राई गिव मी ड्राई अब ट्रांस कैनाल के पायोनियर ऑफ झारखंड बिहार राकेश बॉस। तो आगे का प्लान क्या है राकेश बॉस? हेलो अच्छा हाँ। And once you put the graft, your flap should be in complete contact with the bony canal or flap. Otherwise, another second important aspect for failure of the graft is your blood clot between the graft and the bed.
So there should not be any क्या blood सुनी सर? clot. Okay, there should not be any blood clot between the तो graft अश्विनी and the सर आगे flap. का प्लान क्या है अभी? आगे का प्लान अभी का प्लान regarding surgery or any other thing. हाँ सर. I am closing it, dear, है ना? I put the graft. Cartilage. I am packing it very firmly that there should not be potential space between the graft and the bed. One thing everyone should know that the bony canal wall, bony surface is not the proper thing that gives vascularity of the graft. It is the flap skin that gives vascularity of the graft. So Rakesh Nen is doing what he is elevating the flap anteriorly. That gives a very good blood supply. That's why he has got a very good result also. Ashwini. Yes, sir. Ashwini. Yes, boss. You have demonstrated very nicely, but I can say how to make a simple case into a difficult case, so that learner will not learn. This one was like that simple case. I made it very difficult, ना? कितना मने सुंदर केस को ऐसे कर दियो, बर्बाद कर दिया सब ना? लोग बोल रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे. इसीलिए तो आप लोग किए नहीं इसको. बस छोड़ दो, leave it. I can see your face. Give me the stitch. My job is finished now. देखो हमको तो बोला गया है कि तुम्हारे अगेंस्ट में ही बोलना है, हम तो अगेंस्ट में बोलते हैं. अरे बोल ही नहीं पाइएगा बॉस, कितना देर बोलिएगा. ये बहुत अच्छा केस किए हो. एक्सीलेंट. थैंक यू. I have left the temporary fascia graft for Samit if revision is required. Samit? Sir. Hello. Yes, sir. Where is Samit? I have not disturbed the temporary fascia, है ना? Yes, sir. Because in any case, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Samit don't have any problem with graft. I have left a space for Samit Lal. Sir, you are using simple sutures? Yes. Simple suture? Yes, dear. Simple suture is the simplest suture. अश्विनी सर बहुत सुंदर सर्जरी था ये. Thank you, dear. Thank you very much. Actually, these surgeries are not difficult. These surgery takes the examination of your patients, how patient you are. Rakesh boss. During surgery. Rakesh boss. Rakesh boss. Can you hear me, Rakesh boss? Rakesh boss. काटो क्या हो रहा है? मैच आ रहा है क्या? राकेश बॉस, कैन यू हियर अस? अरे दूसरा ओटी में आवाज नहीं जा रहा है क्या? सेकंड ओटी में आवाज नहीं जा रहा है, उसका वीडियो भी नहीं आ रहा है. राकेश बॉस. अच्छा बात नहीं कर रहे, सर्जरी कर रहे, बात नहीं कर रहे. हेलो, राकेश सर चले गए सर. हेलो, राकेश सर चले गए वहीं. विच राकेश चले गए? ओटी खत्म हो गया? अच्छा चले गए. हाँ.
अच्छा माइक नहीं इनके पास, ठीक है कोई बात नहीं। पेशेंट का नाम पता हुआ लिख के व्हाट्सएप पे फटाक से जवाब चला जाएगा ऑटोमेटिक। There is no need to keep a lot of burrs, different types of burrs like 6 mm, 5 mm, 4 mm, all sorts of burr. Just keep the number of burrs in alternate number. Like once you are taking 1 mm, then keep 3 mm and maximum 5 mm. There is no need to even 6 mm, 7 mm. Maximum 4 mm is enough. So 1 to 4 is good. एक और सीख दो। Single stitch will suffice. फ्लैप देना ढेर खाली, फ्लैप देना, रिबन गॉज का पैक देना। नाइफ देना, नाइफ 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 नाइफ। If you just दो तो इंसिजन ना फोर्स देना, टूथ फोर्स नहीं है, दो तो टूथ फोर्स देना। बहुत बड़ा बड़ा फोर्स रखे जाते हैं। सीजर देना तो फाइन सीजर देना, नैप सीजर जिसे डिसेक्ट करे। यार इतना बड़ा का सीजर है कि फोर्सेप तो छोटा वाला यार। Not as a wide meters. Can you appreciate, sir? Surendra was in the auditorium. Hello. दो पैक दे दो हमको जरा, दे दो पैक दे दो, गॉज पीस का पैक देना दो। क्या चीज में है ये? नहीं प्लेन दो, प्लेन प्लेन विदाउट एनीथिंग। हाँ कुछ ट्राई ऐसे बेट करके दो ना, नीचे उड़ा देना तो। लो थैंक यू ऑल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम बहुत टाइम बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ज़्यादा टाइम लगा दिया बाकी लोगों से। हैं? चलो अरे यार तो गड़बड़ कर दिया। रुक 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 रुक। हो गया 26% चलेगा, सभी नहीं करना चलेगा, इतना काफी होता है 26% बहुत ना। अभी चाहे तुरंत पता चलता है तो उसका नंबर भी आप लोग वो वाला यूज कर रहे हैं ना, वो कोलंबिया वो वाला है ना, बॉटल जब यूज कर रहे हैं तो प्रो में आप हाँ कोलंबिया प्रो बहुत कम चलता है। स्कैनरे हो गया ENT वाला। हाँ वही वाला, उसमें कोई प्रोब नहीं है ना, अभी संजीव बात बता रहे हैं। प्रोब उसमें एक पॉइंट आता है तार में। हाँ हाँ वो तो बस हाँ 4-5 रुपए का आता है। हाँ दे देगा। संजय साई देखे नीचे नीचे में रखिएगा तो उससे क्या होगा, इसमें ऊपर जाना होगा ऊपर जाएगा। राकेश आप तो समझ 3 दिन बैठते हैं ना। छपरा मेरा मैंने असली प्रैक्टिस वही जबरदस्त तरह बैठते हैं 80-90 वो पेशेंट आता है, मरीज है नंबर मिलना मरीज ही लोग से ज्यादा ओपीडी दे रहा है। अच्छा ना सर, पटना भी आते हैं तो आपको 10 को मरीज आता है बोरिंग रोड पहुंच से। हाँ देखते हैं हमारे अगल बगल में एगो है गौरववासी, तो ये साला बहुत बड़ा मैंने क्या कहोगे फ्रॉड है। टिकुआ फेंकने वाला नहीं वो साला अच्छा 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 समझ गए, उनका वो है वेलोर हाँ हाँ वो साला सब आज तक न किसी वर्कशॉप में जाता न किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है, और उसका बाप जो है बनिया था एक गुप्ता। तो है ना रिम से पढ़ा है, रिम से पढ़ा है, फादर रिम से पढ़ा पढ़े होंगे तो वो रिटायर कर गए हैं। तो ये अपना खोला होला संजोग से उसको जगह जहाँ क्लिनिक खोला था वहीं पर 1.25 कट्ठा जमीन उसको हाँ उसी को खोल दिया है। तो सब बोलते हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया। हाँ क्रिश्चियन हो गया है, गुरुजी में है पोस्ट में ना, उसका सब बोलता है कि उसको हॉस्पिटल में क्रॉस का साइन। हाँ हाँ क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन हो गया है, बढ़िया से क्रिश्चियन हो गया है, लेकिन सब का अलग है। बॉस आपका केस बढ़िया हुआ, आपका केस भी बढ़िया हुआ। बॉस सर से सुना आप बोलिए ठीक नहीं है। बहुत अच्छा किया दोनों आदमी मिल करके जो दगा दियो अच्छे खराब केस था। वो सब आदमी खा लिया सुला पर बहुत बढ़िया हुआ बस, सब बॉस का भी केस अच्छा हुआ। बहुत ऐसे नहीं कुछ है हाँ बॉस सकल पूरा तो हुआ ना, तो मेरा ओटी में
सबसे बड़ा योगदान इनका था, और वो ऐसा साइज काटे ना एक बार में खोल दिया उसके बाद चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। देखिए आपस में एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा ना तो ऊपर से ईश्वर भी हेल्प करता है। सही बात है, यही बेसिक फैक्ट ऐसा रहना चाहिए। हाँ। अगला का आपके बगल में खड़ा है, हाँ, सब नेगेटिव एनर्जी आपका खत्म हो देखिए जैसे कि हम लोग का केस जो था मेरा संजीव का, तो संजीव लेफ्ट ईयर शुरू किया, तो उसमें थोड़ा बहुत ग्रेनुलेशन एटिक में या कोलेस्टिटोमा निकल गया। हाँ। और राइट केस था कि हमको करना है, तो मेरा हाँ क्लीन निकल गया। तो वही बात है कि हम क्या बोले कि एक दूसरे को हेल्प कीजिए, ऊपर वाला आपका हेल्प है ना। संजीव को हम रोके हुए थे कि कहीं उसमें भी अगर उस तरह का निकलेगा तो तुम हमको गाइड कर, समझे ना, लेकिन नहीं निकला। वही बात है। थोड़ा तो के डायबिटीज नहीं, ई डायबिटीज है, हम डायबिटीज है ना। नहीं सर, कंट्रोल जबरदस्त कर लिया, पूरा जॉगिंग भी कर, मतलब ये डायबिटीज से नहीं किया है, ये अपना कंट्रोल कर लिया जबरदस्त। डायबिटीज लाइफ स्टाइल कर लेगा तो क्या कर लेगा डायबिटीज। सुबह से उठे हैं, नाश्ता नहीं किए, यहीं पे एक आदमी को पकौड़ा खाए। और क्या है कि इसके बाद जब आए हैं नहीं खाए। सर तुम बड़ा आदमी अभी नहीं सुना, तुम बड़ा नहीं हो। आज ना कल होना ही है, सबको बड़ा होना है। आज के डेट में सबसे बड़ा आदमी यही है जिसको डायबिटीज नहीं है। इनको तो गैटी फ्लॉक्सासिन डायबिटीज हाँ वो ही रहेगा। गैटी जो है ना उसी से फ्रैक्चर हुआ था। हम ले गए, हम जाके समित के हैं। अरे बाप रे, नहीं रहता तो हम नहीं आगे वाला, फिर हमको डबल डोर करना पड़ता। हम जानते हो ये जो महंगा वाला आता है वही खरीदे थे कॉन्फ्रेंस में, समझे ना। तो जहाँ जरूरत पड़ता है डबल डोर करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है उसमें से उठा देते हैं। यहाँ बुलाइए ना, आप आइए ना। आप जानते हो 70 डिग्री वाला से नहीं उठता है, फ्लैप फट जाता है महीने भर का हाँ, उसमें है कि अपना फील किए कि बोन आ गया, बोन और म्यूकोसा जब कट गया तो बोन पर उड़ जाएगा ना। शुरू में हमको दिक्कत होता था, लेकिन करते हाँ जेंटली उसको करना है। एक जगह जब कट गया ना तो पूरा नीचे तक कट जाता है। क्या लेके आओ नींबू और वो सोडा। आपका केस बहुत तगड़ा भी लगा, इधर दीजिए। नहीं हम साइज को बोले कितना वाला पिछला है, ये देखो हो नहीं सकता है। देखो ऑडियोग्राम हम इसलिए क्या बोलते हैं, ऑडियोग्राम हो ही नहीं। हां तो अभी ना नहीं फिक्स्ड ब्लॉक अब पता चला नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये कंडक्टिव पूरा दारू है। देखो हम इसके लिए मान के चलते हैं कि साला कुछ छोड़ दे, हम ये मान के चलते हैं कि उसका हियरिंग सब दारू है, ये हमको देता है। टाइप 3 करना है, टाइप 4 करना है, करेंगे। आप नहीं चाहिए, हो गया। मान के चलते हैं कि साले गलत ना 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 और बहुत बार ऐसा मिलता है। तो क्या बोला हमारा क्या शिकायत है, अब नहीं चाहिए। हमको तो ये बोल रहे कि दूसरा काम ध्यान रखना है क्या वो है राकेश बॉस, वो बोल दिए कि दूसरा काम ध्यान रखना है, ये वो काम खत्म है। अरे कौन सी लोग है दारू एक ही करना बचा, हमने बहुत 5 पैक लिया आपने चिकन ना चिकन में क्या ये वो चिकन पीस लेकिन थोड़ा बहुत